OnePlus Dominate 3.0 with OnePlus11R 5G. For the people who are joining us for Dominate once again, you know this is the place where OnePlus connects with all the upcoming gaming community. Today we've got something very interesting for you. We've got 24 pro gamers who will be paired up with 4 gaming creators and 4 creators without any game. Thank you. Thank you very much. Welcome, welcome. This is where you call the shots. We are going to be playing all the games on the OnePlus 11R 5G. Are you guys excited to start the game? All right, I'm going to be bringing on stage our first 4 gamers. Can I have you on stage immediately so that the rest of the world gets to see what they are up against? Please give them a huge round of applause. Hello, hello, hi, hi. Hello, hello. How are you feeling? You feeling good? You're very excited. आपको पता है ना कि this camaraderie is really good, but in just some time you will be going against each other. Pretty excited, I would say, for that. We go against each other often. Often. Okay, good. Not to make it more technical or anything, but who amongst you do you think will get the most amount of kills? One of the 3. Suhani And has I already will be said. the one who dies. The most. Gives them the kills. Yeah, I feel like gamers काफी polite है. मतलब, I thought you guys will be probably saying it will be mine. No, हम वो game में बताते हैं ऐसे खड़े होकर. I like her attitude already. Okay, good. Have you met your team members so far? Yeah. Okay, good. Have you gotten a chance to उनके साथ खेलने के लिए थोड़ा time मिला है क्या आपको? नहीं. उतना नहीं मिला है? चलो ठीक है. आज friendship on stage ही होने वाली है फिर. Thank you so much for joining us. Please take your seat and Thank you. reconnect with your team members while I talk to our creators with no game. All right. Thank you. Thank you. And now, please give a huge round of applause for my very good friends, the creators. What's up? What's up, what's up, what's up? Hello, 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 hello. Very good, very good. Essas, thank you for being here. I still look like I'm the shortest member of all the creators. Mind to say. Thank you so much for coming. I'm very excited. How much have you played New State in the last year? This guy was practicing वहाँ पे ना 2-3 घंटा खेला है. And that is how much I have played New State in the last year. Okay, what about you guys? What's your relationship with the game? It's been 1 hour. It's been 1 hour. But I love it. I'm killing it, I feel. Of course you're killing it. But I mean, बेइज्जती होने वाली है. But अभी तो मैं बोल रही हूँ, I'm gonna kill it, but like, I'm gonna die. Oh no, see, it's how you set the game context. Your job is to entertain. Their job is to kill. You guys go. Can you identify your team members here? Yes, I can. Yeah. What are their names? All right. I next know. second. I know. Killer, destroyer, Okay. and he's Shashank. All right, good. Before you guys go, actually, any particular strategy that you have, or you're like, I'm just gonna let them lead? Samay, you tell. Bro, I just want to be the lowest liability in my team. तो मेरे जब तक मेरा kill death ratio 1 रहेगा, I am good. Yeah. तो मैं तो छुपा रहूँगा पूरा time. No, my team and I, we had a great strategy meeting. They're sitting over there. Say hello to them. They're sitting Hello, over hello. there. We had a great strategy meeting, and it's great because if you look at my team, I look like a guy who's come for his kid's open day, like at school. And we had this great strategy meeting where they talked and they said, "देखो दादाजी, ये दीवार है, आप इसके पीछे छुप जाओ, ठीक है? हम संभाल लेंगे." So at this point, my job is to shout encouragement and throw. First of all, did you know grenades has a short form called nades? Oh yeah, I did. It is my job to throw nades. Oh. Yeah, nades Lovely. and shades from the side. Yeah. भाई मेरा तो देखो ऐसा है कि भाई ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कितना भी ट्रेन करके इनको तो नहीं हरा दूंगा ना यार. तो it's like if they play chess right now for 2 hours they can't beat me. Oh. तो Okay. मैं सिंपल हूँ कि भाई same. Same. हाँ, I'll try to go for my opponent basically, Rahul. Yeah. Oh, okay, perfect. And what is your strategy? ये पीछे खड़े होके मारने वाले हैं. What is yours? तो हम लोग जब मीटिंग किया मेरे टीम प्लेयर्स ने बोला हाँ. आपके ऊपर पूरा है, आपको अटैक करना पड़ेगा पूरा। अच्छा. Oh wow. तो मैंने बोला टेंशन मतलब आप तीनों दीवार के पीछे छुप जाओ, Okay, lovely. मैं पेल दूंगा सबको। ठीक है. चलो सही है. This is a great strategy. आपका क्या है? My team member said, आप छुपे रहना बस. अब सही आपका है. काम है, you keep hiding, we'll handle. सही. Very good. That I don't know. I see मुझे एक ऐसा theme दिख रहा है कि I feel everyone's strategy is to stay behind the wall and let the 24 pro gamers take the game ahead. Except for 20
5 pro gamers, Rahul Subramanian included. Okay, enough conversation is done. Start getting warmed up. Get in touch with your team members. Find out where you guys are hiding. All the best. Thank you. All right. And now, of course, you have met our gamers and you've met our creators. It's time for us to take a look at the teams now. As you can see, we got Team Samay, we got Team Ehsas, Team Rahul, Team Rohan. All right. We got Team Payal, Team Regaltos, Team Kashmi, Team Suhani. Everyone here has been split into teams. They will be playing team deathmatch, 3 rounds each, and whoever gets 30 kills wins the game. Is that clear? Yeah, it's quite exciting to find out. Now, let's find out who's going to be playing our first game. I would like to bring on stage none other than our first team, Team Regaltos. Woo! What's up, what's up, what's up? Aye. How are you doing? We got pro players, we got captain. Okay, I have a question. आपने इनके साथ अभी तक खेला है? नहीं अभी तक नहीं खेला। पहली बार खेल रहे हैं? हाँ। आपको क्या लग रहा है किसकी क्या स्ट्रेंथ हो सकती है? इनको देख के लग रहा है चढ़ जाएंगे सब पे। Okay, perfect. All right, sir. Are you ready? Are you also ready? All the best. Please take your position. We will find out which team wins. And now, who would be going against Team Regaltos? None other than Team Payal. All right, Team Payal. All right, oh, amazing! I like the character. I like the spirit. आपने इनके साथ कभी पहले खेला है? No. All right, आप बता सकते हैं कि इनमें से strength. What is the strategy for your gameplay today? Actually, हमारे opponent पहले ही आ चुके हैं तो हम लोग reveal नहीं करने वाले वो. But I'm pretty confident with my team. I guess हम जीत सकते हैं. रेगा को मैंने पहले भी बहुत बार हराया है. Oh, okay. ये कब हुआ? आपको शायद आप हारते हो तो याद नहीं रहता है. Ooh, burn! Okay, I would like to see this actually put into action. This trash talk is best, but all the best pro players. You will be taking the entire game ahead. All the best, please. Why don't you stay back? Teams, why don't you take your position? And now that some shots have already been fired. Now that some shots have already been fired, let's set the score clear. Team captain, Regaltos, can you please come? Okay. Okay, देखो already इन्होंने आपको हरा चुके हैं बोल रही हैं. नहीं हुआ नहीं है बट ठीक है मान लेते। ठीक है, सबको पता है. देखते हैं अभी दिख जाएगा। इस मैच के बाद दिख जाएगा। अच्छा, हारे या जीते मैं पहले ही जीत चुकी हूँ. Okay, चलेगा यार। maybe we can figure this out from the rest of the pro players. All right, people here for okay, make some noise. Who do you think will win? लाइव चैट पढ़ सकते हैं क्या? लाइव चैट नहीं पढ़ सकते. हाँ तो उधर मेरा नाम हो रहा होगा। हाँ, यही है लाइव चैट अभी Live आपका. audience is enough. Thank you guys. All right, everybody, team captains, please take your seat. Congratulations and all the best. आपके new team the के best. साथ. All the best to you as well. जरूरत पड़ेगी। Gaming पे ध्यान रखना. All right, everybody, it's time for us to start the game. Giving it up to my very two good friends, जिसके frame के बीच में शायद मैं आपको दिखूंगा. Please give it up for Krat and Flexus. Oh, sorry, Fixes. Why did I call you Flexes again and again? I'll take it again. You know, shots तो फायर हो चुके हैं दोनों साइड से. पायल ने बोला है कि जब भी वो रेगलटॉस को हराती है, रेगलटॉस भूल जाते हैं. रेगलटॉस को अपना कहना है, but yes, the matchup is gonna be crazy. My name is Krat, मेरे साथ है Fixes. What up, buddy? How you doing? Well, आज सुबह ही मुंबई आ चुके हैं and I'm pumped up. So हमारी टीम सेट है. आपने देख लिया था कि कौन-कौन सी टीम वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है और किस हिसाब से ये सिलेक्शन हुआ है. सभी को पता है दे गॉड-लाइक कितनी ज़्यादा कुकार टीम है. No doubt. यहाँ पे Fixes ने जो stats, logics यहाँ पे अपनाया. But yes, the matchup is going to be live और यहाँ पर शुरू हो चुका है. पहले it's a best of 3 और Fixes ने बता दिया it's a single elimination bracket. अगर आप हारते हैं then आप सीधा exit का दरवाजा पकड़ेंगे और बाहर. So you have to keep winning. हमारे it's a 4v4 battle, passive approach देखने को मिलेगी और इस स्टेडियम के अंदर टोपोग्राफी का काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू हो सकता है बिकॉज अच्छे खासे एंगल पे होल्ड कर सकते हो, आपके पास हाई ग्राउंड एडवांटेज है, a lot to play around. Definitely, and already starting से we have seen shots have been fired on camera. अब in game देखते हैं पायल versus Regaltos. दोनों ही same content creator से हैं and I'm pretty sure
in a while we'll be just getting on. I think सारे के सारे जो players हैं यहाँ पे I think थोड़े से सहमे से हैं, सब साथ में चल रहे हैं. I don't understand the logic or the concept, but yes, I think we are in due. This is going to be the balanced matchup because हमारे जो fourth element है ना, जो हमारा cinnamon है दोनों टीम के अंदर, that is Regletons and Payal. दोनों ने रज के मोबाइल गेमिंग करी है. दोनों को पता है कि ऐसी गेम्स के अंदर परफॉर्म कैसे करना है. जायरो हो, सेंसी हो, फास्ट गेम हो, स्लो हो, क्विक स्कोप हो, दे आर मास्टर ऑफ एवरीथिंग. सो मैचअप गोना बी वेरी वेरी गुड. ऑलमोस्ट 1.5 मिनट खत्म हो चुका है और स्कोरबोर्ड अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ा है. अप्रोच काफ़ी ज़्यादा पैसिव है. और फिक्सेस आप अभी लीग ऑप्स के पास गए थे, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा जो हम ऑडियंस को बताना चाहते हैं. वेल आई मीन इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मैं लेके आया हूँ कि यहाँ पे जो मामला हो चुका है वो गर्म हो चुका है ऑलरेडी. रेगुलटॉस और पायल में हो चुकी है भसड़. लड़ाई हो चुकी है बिल्कुल ऑलरेडी हो चुकी है वहाँ पे. डोमिनेट कर रहे हैं वो. डोमिनेट कौन करेगा ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा. फिलहाल रेगुलटॉस की टीम लीड में एंड पायल को शी हैज टू वॉच आउट बिकॉज उसने स्टेटमेंट तो दे दी, अप्रूव करना पड़ेगा. दिस इज ऑन कैमरा. यार अभी तो शुरुआत है. 7-3 है, 9-3. थोड़ा होल्ड बैक करके फायदा हो सकता है. और देखिए क्रॉसबो भी यहाँ पे चलाने की कोशिश चल रही है यहाँ पे. और ये देखिए नॉट एन आइडल थिंग टू वॉच. अक्षय काफी अक्षय लिखा ना हिंदी में. अगर अक्षय है, AY लिख दिया खन्ना वाला. बट यस अप्रोच है आगे. निक ने यहाँ पर नाइक, डीवी नाइक इज होल्डिंग दैट एंगल. और आपने देखा था वी कास्टेड अ बिग टूर्नामेंट ऑन न्यू स्टेट और सबको एक टॉमिकन के साथ एक अलग ही लगाव है. एंड यहाँ पर भी वही मैचअप हमें देखने को मिल रहा है. और ऋषि एक अच्छी पोजीशन होल्ड करके बैठे और एक कंप्लीट क्लच आउट करते हुए जा रहे हो. I think this is really smart from Team Payal because पता है सामने एक प्रोफेशनल प्लेयर है and since आपने ऐसे statements दिया है you gotta put your money where your mouth is and the best part is let Regultos come ahead, come forward, because Regultos आग बबूला हो चुका है and इस समय he has to be just going through. तो पायल की टीम क्या कर रही है? They're playing defensive कि आप आइए, third party perspective का फायदा उठा रहे हैं and देखते ही देखते they've managed to equalize that. एक मैप के कॉर्नर पे ही वो सब पूरा जमावड़ा हो चुका है एंड वहीं पे सारा पुशन हो रहा है. बट दिस गाय ऋषि इज टोटली सिक. ही इज प्लेइंग सो गुड बिकॉज टीम के अगर फ्लैग्स 15 है, ऋषि ने अकेले ऑलमोस्ट 95% ऑफ इंपैक्ट दिखा रखा है. What do you expect? The top 24 players randomly shuffled. कोई ना कोई तो एक स्टार बनेगा, कोई ना कोई तो डोमिनेट करेगा. बट पायल रेगल टॉस मार दिया. ओ तेरी अब there you go. हो गया. जो रेगल टॉस ने मतलब पायल ने बोला था कि रेगल टॉस को निपटा दिया जाएगा, वही करके दिखा यहाँ पे. बट ऋषि इज अ नॉन स्टॉप मशीन एंड ही इज स्टॉपिंग एट नथिंग. वो बैक टू बैक यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और एक प्लेयर को उन्होंने फिर भी ना यहाँ पर एज ए एंकर छोड़ रखा है. दैट इज द गाय जेन XI9. और क्योंकि रेगल्टॉस एनवी जो पुश करे ना एक्सट्रीम राइट रीजन से, उनको होल्ड बैक करेंगे. सो लॉन्ग रेंज के अंदर आई डोंट थिंक इट्स सो वर्थ इट. बट पायल इज यूजिंग M24 एंड लॉन्ग रेंज के अंदर बोल्ट एक्शन फायदा जरूर करवा सकती है. फायदा डेफिनेटली करा तो सकता है बट आई डू नॉट नो इफ दैट्स द स्मार्टेस्ट मूव बिकॉज ऋषि फ्रॉम पायल्स टीम he is playing really amazing. हमेशा अलग रह रहे हैं, letting the team tank up and वो flanks पे लेके उसका फायदा उठा रहे हैं. But talking about this entire matchup, वापस से जो नए दर्शक अभी जुड़े हैं बता दें कि ये है बेस्ट ऑफ 3, राइट? जो पहले 2 गेम जीतने वाला है वो आगे जाएंगे और जो टीम हारेगी दोस्तों वो बाहर जाएंगे. So ये रहा बहुत ही ज़्यादा कट थ्रोट क्योंकि जो इवेंट है दिस इज वेरी फन इवेंट. लाइक हम एंजॉय करने आए एंड सडनली आपके फेवरेट क्रिएटर्स, फेवरेट गेमर्स को बाय बाय कहना little too harsh for me. ये एक बड़ी फन इवेंट होगा. OnePlus ने यहाँ पे डोमिनेट लिख के ना यहाँ पे गलती सी कर दी है. बिकॉज जैसे ही आप एक मसाला डालते हो ना प्रोफेशनल प्लेयर्स का, उनके लिए फन होता ही नहीं है. जैसे ही हेडफोन सर पे पहन लिए गए, हाथ में फोन आ गया, वो एक गेम पेस आ जाता है और वही हो गई. कंपटीशन इज वेरी क्लोज, टू एंड फ्रो चल रहा है. कभी रेगल्टॉस लीड लेते हैं, वहाँ पे पायल भी यहाँ पर काउंटर अटैक करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर. और बिल्कुल कोने पे इजी पीजी ने एनवी को क्लच इन किया, बिल्कुल गेम से बाहर करते हुए दिखेंगे. और ऋषि मुझे इंडिविजुअली ऋषि का परफॉर्मेंस देखना है कि ऋषि किस स्टैक पे बैठे हैं यहाँ पर. और एक पीपीपी का अच्छा फायदा. रेगल्टॉस शुड रियलाइज कि क्लोज रेंज में इतना नहीं जा सकते बिकॉज पीपीपी का रूल है भाई, जिसके पास कवर है वही देवता है गेम के अंदर. Yeah, absolutely. I think this is one of those things that's quite predominant. Team Regultos बहुत proactive खेल रहे हैं and Team Payal they're always playing on defense. उनको आने दे रहे हैं. They're being दिमाग का अच्छा इस्तेमाल जिसको कहते हैं. Because I don't see any grenades coming out. लगा था कि कुछ nades use होंगे but जैसे Regultos ने starting में ही कह दिया था कुचल के चले जाएंगे. वो प्रयास कर रहे हैं. He's trying. He still has a lead though.
No, no, आखिरी Regal, kill. no, एक point here. There's just one, and yes, it is Regal Toss, Team Regal Toss, getting that final kill and taking the advantage in this best of 3 series. Pyle must be very, disappointed because her team started so strong. Rishi and everyone was on bang. They were performing really great, but suddenly last moment ke andar, what Regal Toss and Regal Toss co-players did, it was good, very good. Application of pressure. That is what they exactly did, and they saw it through. But it's still just a 1-0 lead, and it was very close. Came down to the wire, Krat. And considering this rivalry that has sort of built up between these two creators and our lovely gamers out there, both of them, they fit into both the categories. Just FYI. It is going to be really intense, the second matchup. I'm just worried कि पायल ने आते ही सबसे पहली statement दी थी कि भाई, हमेशा रेगल टॉस को हराया गया है और आज आते ही पहले मैचअप के अंदर this dominate 3.0 with OnePlus11R 5G और आते ही रेगल टॉस ने करारा जवाब दिया है because अब वो हार्डवेयर को भी नहीं बोल सकते because OnePlus ने अपना फ्लैगशिप फोन उनके हाथों में थमाया है मतलब 360 हर्ट्ज का यहाँ पे टच रिस्पॉन्स है 120 हर्ट्ज यहाँ पे रिफ्रेश रेट है एड्रीनो 730 यहाँ पे ग्राफिक यूनिट है और प्रोसेसर तो आप ही बता दीजिए कौन सा प्रोसेसर लग रहा है 8 Gen 1, we know how good they are, right? So finally the first game was pretty much over and Regal Toss ensured that Pyle ate down her words and now it is time for the second matchup to begin and Krat. देख के क्या लगता है इस बार पायल का कमबैक होगा क्योंकि मैचअप बहुत क्लोज था गेम 1 देखने के बाद ये तो मैं जरूर कह सकता हूँ बिकॉज़ मुझे गेम 3 देखना है अगर रेगल टॉस एक और गेम जीत गए देन इट इज डेड एंड फॉर टीम पायल बट आई वांट टू सी दैट पायल कमबैक और पायल टीम में है वो प्लेयर जो कमबैक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं I think we've seen two very distinctive types of play. Regal Toss, he's been very aggressive right on the face of his opponents, whereas Pyle, she's been really defensive and has been reacting to situations. So we do know what is going to be on the table. The big question is how are they going to react because they've had a few moments to gander and just think about the mistakes that they made. Because at the end of the day, Krat, it was a really close matchup. I totally agree with you that the match was really close. And Regal Toss, he was playing aggressive and where Pyle was on the defensive side. But let's see what happens in this mode, this second round. और अप्रोच सेम है दोनों पहले लॉन्ग रेंज अप्रोच लेके धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं बट दिस टाइम रेगल टॉस वैसे अभी तक उन्होंने आधा मैप क्रॉस कर लिया होता बट अब एक नई अप्रोच लेकर आए हैं और मे बी टीम पायल इज रेडी टू काउंटर टीम रेगल टॉस they figured out what are the call outs going to be made, right? Regal Toss, he is clearly on a war path because of what really happened initially and now he is out to prove himself. But Rishi, he's been that one player who certainly has been impressing us time and time again, every time delivering that blow. Now we were sort of anticipating the usage of grenades and now these teams have realized how important it is. ये मानना पड़ेगा because the moment you close out the distance between you and your enemy आपका भाई हो सकता है कि आपकी यूटिलिटीज एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आपको लेकर आ सकेंगे बट अगर आप टीपीपी वॉर के अंदर जा रहे हो सामने वाले के पास एडवांटेज है देन इट बिकम्स रियली टफ उस टाइम पे आप कैसे प्री फायर करेंगे और इस गेम के अंदर जो मैकेनिक्स हैं वो भी इसको बहुत ज़्यादा इंटेंस बना देते हैं बट ऋषि इज टेकिंग द चार्ज फ्रॉम टीम पायल बट आई थिंक जेनेक्सी 9 को थोड़ा तो आउटसाइड द जोन जाना पड़ेगा टू कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन और मे बी गेट अ sneaky 1-2 kills. I think Pyle has spotted out one of those players, Envy. He might just be welcomed with a few grenades. But to be honest, Krat, I really need to break this down because look at Rishi's flank. I'm starting to wonder if Regal Toss has any clue of where he is. He does realize that. But Regal Toss really quick on his triggers and this is a professional player right in front of him. Regal Toss knows and he know how to utilize, how to abuse such situations where you have that third party cover and उन्होंने वही किया. ऋषि जैसे ही outside space में आए थे like instantly उनको punish किया. Advantage 5-1 का था पायल के पास अब वो advantage कम हो चुका है. It's in half 3-6 पायल अभी भी जीत रही है but सिचुएशन मुझे इसी बात का डर था गेम 1 वाज वेरी वॉलेटाइल आगे घुस के खेल रहे थे बहुत कुछ देखने को मिला था बट अब दोनों टीम अब डिफेंसिव बटन पे उनका हाथ आ चुका है I think the strategy has to be pretty simple. One of your teammates has to be the one thwarting off the grenades. The other one should be the one pushing in. And if you can make it work as a team, then this is exactly what I was talking about. Push in tandem with each other and get your job done.
यू नो अब वही कर रहे हैं जैसे मैंने बोला था गेम की स्टार्टिंग के अंदर जो मैप का टोपोग्राफी है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज्ड है। आपके पास अगर हाई ग्राउंड है वहाँ पे एडवांटेज आप ले सकते हो, वहीं पर रेगलटॉस अभी होल्ड करके बैठे हैं और बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो लो ग्राउंड पे जाकर दे आर टेकिंग दैट दोस फाइट्स, क्रूशियल फाइट्स एंड एवरीवन दे आर इंटैक्ट। बट इफ यू टॉक अबाउट टीम रेगलटॉस एंड टू प्लेयर्स अक्षय, दे आर स्टैकिंग, दे गिविंग एज अ मॉडल प्ले करे दोनों साथ में, बट एनवी एंड वन मोर प्लेयर दैट दिल स्प्लिट अप। बट नाइक जो ओबी डीबी नाइक है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है। पायल ने यहाँ पे नेट को किया, ये नेट क्या कुछ आउटकम ला सकता है? अ बिग आस्क, बट लेट्स सी व्हाट गोना हैपन। I'm really kind of baffled by the fact is what on earth is Nigexa doing right in the middle. It's literally like the worst area to be in until and unless he wants the airdrop, and that's a huge trade-off, right? You're getting a good gun and has a shuffle in his hand, and I'm starting to wonder what he's gonna do with that. But one thing for sure, Team Regaltos is well spread out, and Team Pyle is quite constricted, and that is going to be proving really detrimental. As long as they can hold off their horses there like that, I think Team Pyle, they're definitely looking strong to make a comeback in this one. यहाँ पर थोड़ा तो ओवर कमिटमेंट दिखाते हुए दिखी है टीम रेगलटॉस को। जो एडवांटेज था अभी तक 6-3, स्कोर लाइन इज 15-8 एंड पायल इज रिटेलिएटिंग। पायल वांट टू मेक अ पॉइंट दैट नो शी डजंट वांट टू लीव दिस टूर्नामेंट टिल नाउ। शी वांट टू प्ले हार्ड, शी वांट टू गो in the further stages and maybe to secure the whole dominant stage. Yeah, I mean, it's pretty evident because Payal, I think I have not seen her play competitively, but she's quite a regular streamer, right? Every single day, just grinding through with new state. She's been doing that a lot lately, so can never really rule her out. And now both of them, look at that, the HP bars are quite low. One grenade just might do the job, and Riggletos yet to find his sweet revenge. How? Is she made of iron? You know, I got some pushes, but it was too close. Riggletos had this advantage. उन्होंने AKM का अच्छा यूज किया and unfortunately पायल ऐसी सिचुएशन में नहीं थी कि वो काउंटर बैक कर पाती। बट आई थिंक भले ये फाइट भली क्लोज हो, बट एक साइड के अंदर टीम पायल इज टेकिंग अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज बिकॉज अब स्कोर लाइन जा चुका है 24-13 एंड यू नो जो पहले 30 स्कोर लाइन पे पहुंचेगा दैट team will be the winner, and I don't think Regaltos के पास अभी कोई भी chance है। Again, for the viewers, just a quick reminder, you know, now Regaltos is leading the series 1-0. Now, considering the fact that Payal just needs 5 more finishes, and she's gonna tie things up, and then we're gonna be looking at the third decider matchup, right? And that is going to be fun. I think we can write this off. Pretty much looks like a Payal game. Yeah, it's done for sure. Payal is taking out the game number 2, and we are going for the decider match. I was not expecting what happened after the game 1, but I was still rooting कि हो जाए तो अच्छा होगा. But yes, Payal ने सुन लिया, उनकी टीम ने अच्छा खेलना चालू करा, but they literally attacked where Regaltos was lacking. Game number 1, Regaltos was playing very aggressive, and they got nice points through it. But इस बार they were totally prepared how to handle this. And see that smile on Payal. You know, Payal ने टीम पायल ने ऐसा कोई rocket science वाला काम नहीं किया। उनको पता था कि Regaltos and his team will be playing aggressive. एक टाइम के बाद वो patience का बार खत्म हो जाएगा and they'll just all in. What वहीं पर वो वेट करे थे, but I mean, it comes down to this. It has all boiled down to this. The banter, the rivalry and everything. And it's still just the first match of the evening, and we're heading to a tiebreaker. You know, मुझे उम्मीद नहीं थी, but yes, we are going for the decider final. और दोनों टीम अभी तक तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा, जैसा फिक्सर से बोला था कि रेगलटॉस की टीम के अंदर कॉम्स इशू है। मुझे सच्ची में लग रहा है कि वो आपस में ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। और वहीं पर अगर बात करोगे टीम पायल की, यू नो आफ्टर गेम 1 आई थिंक ये डिस्कशन ज़रूर हुआ होगा कि यू नो टीम रेगलटॉस एग्रेसिव खेल रही है। जस्ट मार्क डाउन द एंगल, जो मेन एंगल्स हैं, जो माइलस्टोन्स हैं, कहते हैं ना आर्मी भी यही होता है ना कि आपको एक मोटार्स होल्ड करने हैं, उन्होंने वही करा एंड ऑटोमेटिकली गेम उनके फेवर में आती गई। I think a lot of things could have been done strategically to be better, right? If you know Regaltos is in a better position to take down his opposition, what he can do is just use one of their players as a bait, like you know, use as a pawn, and then get the job done. Because Payal is heavily relying on reacting to Regaltos' movements, and we have seen this time and again. And I'm pretty sure Regaltos did have the time to contemplate over what is happening and what needs to be done. Because as a professional athlete, you always have to adapt to the changing you know, plays made by opponents. Oh yes, or I think Regaltos need to be dead sure, and he should contemplate. You getting my point, Fixes? Regaltos need to be dead sure and contemplate. These two words coming from, you know, famous. But yeah, the game is live. और
स्टार्टिंग से पायल ने एक एडवांटेज बनाना तो चालू कर दिया यहाँ पर, और ऋषि द डेड मैन टॉकिंग, द डेड मैन वॉकिंग, ही इज द मेन, मैं बोल सकता हूँ कि main gun from his team, making all the valuable efforts. और देखिए ओपन कितना ज़्यादा है. I think it was the time. Easy peasy, literally counted his own death. उनके सामने काफी देर 2 से 3 सेकंड के लिए अक्षय AFK जैसी सिचुएशन में थे. He could have taken that profit. He could have capitalized the situation, but unfortunately he didn't take the chances. But shots are precise. Now Regaltos playing and holding a damn angle. Sure did see death right in front of his eyes over there. But yeah, I think it's been again a very tight start between both these teams. And Pyle just has that 1 kill lead, which really, to be honest, Krat, amounts to nothing at all. At this very moment, it is all about, again, how crafty can you be with your approach? Because we've seen what these players can do, what these players have done. And Rishi, he's one of those foes to be reckoned with, right? And Regaltos needs to figure out a way to deal with him. If not done so, then I see Pyle walking off with this win in this one. Starting से ही Regaltos की जो भी start है अभी टीम के अंदर, that's not working for sure. Cause game 1 जीतने के बाद game 2 was a complete shut off, game 3 is a shut off, and जिस तरीके से Pyle आगे बढ़ रही है, I think Pyle will be stopping at the 30-point marker. उससे पहले रोकना is not going to be easy. लेकिन वहीं पे ऋषि को pick off तो करा, एक बहुत बड़ा threat थोड़ी देर के लिए अब गेम के अंदर शांत जरूर रहने वाला है. बट अच्छे शॉट्स के कनेक्शन यहाँ पे करते दिखेंगे. बट एग्रेशन देखिए, पायल ने यहाँ पे पुश किया, ओबी ने XD को पिक ऑफ करा, ऋषि ने वहीं पे अक्षय एंड एनवी एंड एवरीवन इज गेटिंग डाउन. और जो स्कोर की लीड थी अब बढ़ चुकी है. द स्कोर लाइन इज 4-10 एंड 10 पॉइंट जहाँ पर टीम पायल के है. Alright, the strategy of Regaltos had been followed over there. So what they really intended was have 3 players push from one direction and the other player just going on a flank, which eventually, right at the very beginning, worked out. But then I think Pyle just got conditioned over there with her team and they dealt with it instantly. And at the cost of what? You get 4 extra finishes out there, right? And considering this is the tiebreaker, I don't think Regaltos can afford that. But he now needs to make those quick adjustments, which I think has been done in terms of weaponry. Now we're seeing DMRs also coming online. I think Regaltos, मैंने अभी Regaltos को देख रहा था, Regaltos के टीममेट ने उनको यहाँ पे नेट कर दिया and ये आज में मुझे क्यों मारा तूने? तो ये यहाँ पर आपसी रंजिश के अंदर कुछ ना कुछ अलग ही हो रहा है यहाँ पर. But I saw SL8 in usage, जिसका मतलब long range fights अब यहाँ पे बढ़ सकते हैं. Regaltos ने वहीं पे पायल को decimate करा and took that point into the favor. Regaltos ने एक और double kill. Regaltos is on a killing spree. क्या कुछ और impact उठा सकते? काफी ज़्यादा open का the grenade फेंका. ये grenade impact लाकर देगा नहीं देगा, but they want to target that throne. ये high ground is not an easy job to conquer, but Rishi, he's playing so calmly. He knows कि जहाँ पर शिकार खुद मेरे पास चलकर आएगा और मुझे कुछ नहीं करना, इंतजार करना है और टाइम आने पर पनिश करना है. I think I'm rather kind of surprised why none of them are using toxic smoke grenades, because could be such a vital tool to flush out your enemies out there. But right now, as things stand, I think one good thing about Pyle's team over here, what I can see is at least they're getting those positive trade-offs. If one of their players are getting taken down, so they're ensuring that they get the job done and always maintaining that 4-pointer lead out there. For which I think at this point, Regaltos' team really needs to pull something out of the magic hat, because at this point, if this keeps going on and if Rishi just goes on clobbering down his opponents one after the other, look at that confidence, finally shut down by Akshay. I think that has happened for the 2nd time maybe right now. Out of 18, 9 frags यहाँ पर ऋषि का खेले हैं, वहीं पर 15 पर यहाँ पे Regaltos पहुंच चुके हैं. A nice little comeback coming out from their side, and they have to make it a continuous thing, because अगर ये चीज़ रुकी then चीज़ें यहीं पे खत्म हो जाएंगी और वहीं पे Pyle moving forward in the tournament where Regaltos will be eliminated, so as his teammates. So easy peasy taking down one more player. Advantage अभी भी 4 frags की है. Capitalize करना पड़ेगा इस lead को, तभी जाकर कुछ फायदा है, वरना basic mistakes can cause you a lot of problems. Alright, so now it's just a stalling game. It's all about who makes that first move. It's all about who makes the first mistake. Still, we've got that 4-pointer lead on Pyle. And bear in mind, Krat, there's also a time limit. We just have 4 minutes and 20 seconds on the clock remaining. So if things stand as they are right now, after 4 minutes, then Pyle is walking off with a victory.
So the onus is on Regaltos somehow. He's got to make those moves and needs to at least, at the very least, equalize the scoreline. So he's got something to fight for in the end. You know, अब ये देखिए ना, ये देखिए एक nice comeback और nice synchronized gameplay coming out from Regaltos side. Grenade का use करा, you know, some splash damage और उन्होंने make sure करा कि वो सारे choke around रह जाएं और उसका फायदा भी उठाया. अब जो distance था 4 frags का अब 2 रह गया है, but Regaltos इनको desperation है frags की, वहीं पे पायल अगर hold करके रहते हैं, they just need to kill समटाइम 3 मिनट 40 सेकंड रहते हैं यहाँ पर, उनको बस वही उड़ाना है यहाँ पर. बट अब ये देखिए जो उन्होंने एडवांटेज लगाई थी खो दी ना, फिर से 4 फ्रैग्स का फर्क आ चुका है यहाँ पर. Yeah, exactly. And this is where you need to calm down, right? Once you've just edged in, look for more mistakes. Because Payal, it's evident she's going to be on defensive with the team. And, you know, more of this for Regaltos is good. But the moment you're getting traded, and now look at the difference. The point which was stuck at 4, the margin has increased to 6. And now even more closer. This is where I'm pretty sure Regaltos gives up, right? You know, अब होंगी चीजें संगीन क्योंकि 2 फ्रैग्स की जरूरत है. अगर पायल टीम ने 2 फ्रैग्स निकाले और एक निकाल भी लिया, और like any moment we can see the champion team coming up on the opponent's face कि भाई हो गया, जितना खेला था खेल लिया, टाइम खत्म. It's our chance, and yes it is. After losing game 1, it's Team Payal taking down game number 2, game number 3, and surprising Parvjan. क्या ही खेले हो भाई तुम, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया. हमारे यहाँ पे एक प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव प्लेयर को पायल ने हरा दिया, एंड शी इज well, really actually put her money where her mouth was, and indeed has made it to the second round. But well, it was a close matchup, the first one. Regaltos did go off with a victory, but things did not work out for him towards the end. But I'm pretty sure Abish out there has a lot to talk about, because there's already sparks fuming out of Regaltos there. Oh, yes, absolutely. There is a lot happening while you guys were casting. I was trying to keep both of them on the side. Because पायल का तो एक मूव है यहाँ. क्या बोल रहे थे? सुनाई नहीं दे मुझको कुछ बोल ही रहे थे. Congratulations to our winners. Please give them a huge round of applause. Well done, you guys. ये लोग बैठे रहेंगे यहाँ पर. They will continue. But we have with us very well played. Thank you. What exactly? Because again, Rishi, by the way, fantastic gameplay throughout. The team members that were delivering, that was very good. Did you guys feel any? Okay, let me rephrase this question. One word that can justify what exactly happened आज. वो लोग रीमैच के लिए पहले मैच के बाद, हाँ. तो आँख से आंसू ना आए इसलिए हारने के बाद तो सब यही बोलते हैं. टीम मेंबर्स को मैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, but he went back for volley fire. Well done. Congratulations, oh, well played. हाँ, thank you. I think this situation requires a little bit of cooling. मतलब अगर आप लोग human beings अगर थोड़ा OnePlus11R 5G जैसे होते तो 3D cooling system important है आपको. Well, after this incredible game between the two of you, it was tight though. I mean, to be honest, पहला match जीते, फिर second one, then the third one that came in. Well done. I feel like the team seems a little sad, but not sad. Okay. Balance is not working. Balance isn't working. Like you said. हारने में तो कुछ ही बोल दो, सब सही लगता है. हाँ, ये हुआ होगा. Communication gap था हमारे बीच में. Communication gap जरूर था. कोई नहीं, बात नहीं हुई. Next time करते try. Next time बात करके. हाँ, करते. All right, perfect. Congratulations. You guys stay back. आपके टीम की जो strategy थी, is that something that is working on for the next game also? एक्चुअली हम लोग का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, लेकिन फर्स्ट मैच में हम लोग थोड़े टाइम तक हमें लाइक ऐसा क्यों नहीं था कि मैच स्टार्ट हो गया है, एंड हम लोग माइक वाइक सब थोड़ा देख रहे थे. बट फिर जैसे ही हमने देखा कि मैच, और ये मुझे स्पॉन पे आके मारते जा रहा था और हम लोग वो गेम हार गए. आप लोग कितना इजी हो रहा था मेरे लिए, मैंने बाद में छोड़ दिया. ओके, मुझे लग रहा है अगर ऐसे शुरू करते रहेंगे तो बाकी सारे मैचेस हो नहीं पाएंगे. वी गोना गो इनटू अ क्विक लिटिल ब्रेक एंड वी विल कम बैक फॉर आवर मैच नंबर 2.
and welcome back to Dominate 3.0 with OnePlus 11R 5G, which now comes with Snapdragon 8 Plus Gen 1 mobile platform, which makes your gaming experience extra smooth. Talking about smooth transitions, we all know what happened in the previous match. I'm very excited to see what happens in this match, because the team we've got for you is comprised of all pro players. Please put your hands together for Team Kashvi. Yeah, keep it going. Right over here. Well done. Your team, have you met your team before? I've met them today, but by the looks of it, we just played a few games. By the looks of it, it's looking good. It's looking good. Are you going to be the in-game captain? Are you going to be taking the shots, or you're just outsourcing? Kisi aur ko de rahe ho? Ideally, they should be. They're the pro players. I'm just the creator. You're the pro creator, player, creator, player. What a player. What a great player. Okay, I have to ask you this question. Maybe you can tell me a little bit more in detail. आपका loadout क्या रहता है? What kind of weapons are you planning on taking against your other So team my member? favorite in new state is Tommy. So I'll be playing with the Tommy. Other than that, the M4. Is good. रख लेते हैं. ठीक है. Are you guys also going to be taking the same loadout कि सब थोड़ा अलग-अलग करेंगे? Sub. I love the answer from everyone was Thoda sub. DMR I might try. Let's see. I'll see how it goes. Probably just wing it. Okay, now that you've given your strategy, I'm going to be bringing on the next team. All the best to your team. All the best. Please take your seats. All the best. All the best. I loved it. My question was what your loadout is, and my players on the left says bus. It's great. And now, on the left-hand side corner, the team that's going to be occupying these 4 seats is none other than Team Suhani. Oh, wonderful. Are great, amazing players. Suhani, how are you? I'm doing very well. You can come over there, actually. Okay, sorry. Sorry, I messed it up. You can come over. Can we do it again? बहुत practice किया बहुत था practice यार किया है. अमीश. थोड़ा ऐसा करके whoa, we're back here. We Suhani, practice this more than the game. have you rehearsed with them? आपने इनके साथ practice किया अभी? नहीं हमने बहुत सारी बस बातें करी है. बिल्कुल. Do you know आपके opponent team पीछे बैठ के दूसरे game के time भी practice कर रही थी? Yeah, we saw them. I was looking at them, and वो मेरे से they were not even like having an eye contact with me. I think they were afraid like कि ये हमारा mind पढ़ लेगी. Akashi was like, don't even look at Suhani. Don't look at Suhani. Like, what is this behavior? No eye contact whatsoever. That's true. All the best to you. All the best to you guys. Suhani, stay on stage if you don't mind. Please take your seats. And now that पहली बार आज stage पे eye contact करा के जाएंगे. Let's bring on the team captain once again. Kashvi, can you please come here? Kashvi, is there a particular reason आप आँखों में आँखें डाल के नहीं देख रहे थे? I'm just scared. Yeah, Suhani दी कभी भी mind पढ़ लेती है. So I told my team also, यहाँ वहाँ देखो guys, यहाँ वहाँ देखो. She's calling me Suhani दी only right now. In game कोई respect नहीं करने वाली है मेरी. I'll go easy. I'll go You'll easy. do it. I'll go easy. Oh, that's is very that sweet. okay? See Good. that. Have you all the best to you, and all the best to you. Thank you. May the best team win. Please take your seats, and let's give it back to our amazing casters once again. Give it up for Fixes and Cracked. Well, don't go by the lovely looks, because there's a killer in their eyes, ladies and gentlemen. 2 beautiful ladies coming out to play, out of which one is a mentalist. She can literally read through your minds. And Krat, have you ever thought of getting yourself checked? I don't want my secrets to come out, but Kashi ने काफी सही reply किया कि it's better to avoid the eye contact, because you never know Suhani क्या extract कर आपके against use कर ले. And Kashi ने ये भी बोला that she'll go easy, because somewhere in her mind उनको पता है कि काशवी के पास एक upper hand है इस matchup के अंदर. But folks, let's not forget one thing. It's just not about Suhani and Kashvi. Because I've never seen Suhani play a competitive game, Alright. especially on mobile. और वहीं पे काशवी, she's a professional. उन्होंने growth stream करती हैं और अच्छा खासा खेलती हैं. Like she's not normal player. She holds a very good rank. So I think new state के अंदर she will surely demonstrate some nice gameplay. But Krat, let's be honest, right? Yeah. We've already seen the first game, and things did not really go while what we anticipated quite did not happen. So, And जो सामने वाले के 2 headshot पड़ते हैं ना, ये सारी बातें back seat हो जाती हैं, पीछे वाली गली से निकल जाती है. So I just wish कि दोनों टीम अपना best खेले. और ये बात भी मैं मानना जरूर चाहूँगा जो Fixes ने बोला कि भाई मानता हूँ कि काशवी वर्सेस सुहानी के पर्सनल में देखा जाए तो काशवी इज बेटर प्लेयर,
बट बाकी के 3 प्लेयर्स भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक इन्फ्लुएंस रखते हैं गेम के अंदर एंड अगर ऋषि की तरह कोई मारना चालू करे एंड वन साइड गेम दिखा दे, यू नेवर नो, शायद सुहानी साइड से भी हमें फिर जीतते हुए दिखेगी वो टीम। Well, folks, it's finally time, right? We get started with the game. Krat has already made his prediction. You know, it's going to be a 2-0. I think I'm going to say it's going to come down to the wire. You know, I'm going to be a believer over here. But you guys in the chat can let us know, who do you think is going to walk off with the win? Is it going to be Kashvi or is it going to be Suhani? That being said, we are already off into the game, and by the looks of it, Kashvi has had a really good start. You know, Mentalist versus a pro creator. Let's see who's going to take the trophy in this matchup. Not the whole dominate series, but it is going to be fun. But काश्वी ने यहाँ पे एडवांटेज तो जरूर ले लिया है और दोनों टीम जिससे पहले जो मैचअप देखा था रेगलटॉस वर्सेस पायल एंड इन दिस मैचअप काश्वी वर्सेस सुहानी, एक प्लेटफॉर्म की वेटेज सबसे ज्यादा रखी गई है। वो जो अपर ग्राउंड के अंदर आपका एक ना एक फोर्ट सा बन रखा है, वहां पर दे जस्ट होल्डिंग डाउन। इट्स सिंपल मैन, यू जस्ट नीड अ ग्रेनेड, पॉप इट ऑफ, I know, be it in a perfect time, and you can secure some free frags. But Kashvi, the team is on the roll without dropping a single player. The moment I said caster curse, पहला player गिरता हुआ दिखेगा, but Kashvi की team advantage ले चुकी है fixes. You know, I'm kind of really surprised because, of course, you know, you would expect the players out of Oath, you know, both of them. I'm considering they are teammates in real life, but hey, they've been chosen random over here. And this is where they're just falling into the traps of Kashvi. And I mean, I would like to believe it to be, but you know, getting back into the game, one thing we've clearly noticed, Krat, is you know, the players from Suhani's team, they're just going downhill, right down the ground, and you know, Kashvi and her team, they're just maintaining that high ground advantage, have that altitude to their favor, and getting the job done. You know, I just remember one thing what Kashvi said in the pre-segment, that she will be going easy, and no, she's not. You know, by looking at the score line, Suhani at the victim side, उन्होंने बस 2 finishes है, वहीं पे काशवी की बात करें, she got herself into the double digit, but finally, Otsavik and kill, making a comeback. 2 frags निकाले अपने फेवर के अंदर और धीरे धीरे करके एडवांटेज बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट जो फिक्सेस ने बोला वो भी बिल्कुल सही है, बिकॉज व्हेनेवर यू गो फ्रॉम लो टू हाई ग्राउंड वाले प्लेयर के पास एडवांटेज होती है, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन वो लेकर खेलते हैं, इट्स नॉट सो एक्सप्लॉइटेबल। I think at this point, well, Suhani's team's players are looking to be in a little bit of a kerfuffle over there. But I think one good thing, at least they've got 6 on their board. So the gap, the margin has kind of diminished a little bit, but still, you know, they've got a huge arduous task ahead because it's not going to be easy against Kashvi, right? 13-8 being the scoreline, and it's going to keep on riling up. This is where, you know, King Leo and Satvik, you know, both these players have to really step it up. And he has been stepping it up because मेरे सामने ही बात है, 5 सेकंड के अंदर किंग लियो ने 4 फिनिशेस निकाले एंड एवरीबडी यूजिंग, सबको पता है कि इस वक्त न्यू स्टेट के अंदर टॉमी गन का एक अलग ही फेवर चल रहा है एंड दे हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग इट टिल द हेल, और वही कर रहे हैं। फिर से एक क्लोजिंग फाइट हो सकती है यहाँ पे, तनुज जस्ट क्वाइट इन डेंजर, काफी कम एचपी आता है, 1 बुलेट के मेहमान है, यस इट इज, धुएं एक हवा का झोंका भी आया और तनुज यहाँ पे गेम से एग्जिट लेते हुए दिखे। 15-12 अब स्कोर लाइन धीरे धीरे बराबरी की तरफ होते हुए जा रही है, वहीं पे सुहानी she's making a nice comeback. She's just hiding, and I think it's kind of a little bit handicapped for her team, but it's all right, you know, as long as she's not giving her, you know, body away there with those finish points, it's absolutely fine, because look at that. Now the difference looks really negligible because suddenly something has happened, and Team Oath, they're starting to feel themselves, and Kashvi on that 1v1, you don't mess but with no, Kashvi like this. yeah, in fact her teammate just came in her aid and helped her out, but regardless, it's a 19-14 scoreline, and looks to be going Kashvi's way. Somebody go and tell Suhani that this is not hide and seek. वो उस टारगेट पे उस वहाँ पे बैठी है, 0 असिस्ट, 0 डिफीट, 0 फिनिश, शीज प्लेइंग वेरी लो की, उनको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं चाहिए यहाँ पर, बिकॉज उनको पता है, जैसे आपने भी बोला कि इस वक्त कुछ अच्छा तो करने के चांसेस कम है, कुछ बुरा ना हो जाए, फ्री फ्रैग ना चले जाए सामने वाले, बट काशवी को जिस तरीके से टैकल करने की कोशिश थी तनुज की, इट वाज नॉट सो परफेक्ट, और काशवी ने अच्छा फायदा उठाया उसका। No, but one good thing about Kashvi is she's very invested in the game right now at this point. You know, she's contributing, she's taking those limbs out there, she's assisting to her teammates, and you know, more of this is what Kashvi needed, and
indeed she's getting that. But one good thing about Suhani's team is the players are really stepping it up finally when needed, right? And Suhani not giving her limbs really is helping them, because again, for every single elimination, your teammate, or in fact your opponent, gets a lead on you, and that is something at this point is going to be really detrimental for any one of them. Oh my God! Tournament अब पहला जो matchup है काश्मीर सुहानी का, it's on the edge, 27 to 23. यहाँ पर 3 फ्रैग्स चाहिए काश्मीर को जीतने के लिए, वहीं पर 7 फ्रैग्स अभी भी दरकार में हैं. They really need it. और the final frags. काश्मीर का यहाँ पे जीतना, I don't think यहाँ पर challenge बचा है यहाँ पर. But सुहानी, she must be cursing herself कि भाई थोड़ा तो feedback बनता था मेरी तरफ से भी. It's all right, nothing to really scoff at, and we know she's an excellent person in her field, has quite a lot of accolades to her name. But when it comes down to gaming, I think Krat, you stand corrected, and Kashvi just stormed through this game, to be honest, and that is well, a gamer's buff, as you might call it. Of course, her teammates tried to help Suhani out there, but felt like it wasn't just enough. And now, they're still smiling, they're pretty chill, they're enjoying themselves. And this is what this show is all about. Game 1 खत्म होने के बाद अब टाइम है Game 2 का. काश्मीर ने Game number 1 तो जीत लिया. What do you think about Game 2? क्या सुहानी की टीम ने अब सॉर्ट आउट कर लिया कि कैसे इस गेम के अंदर अप्रोच रखना है फिक्सेस? I think one thing which we did mention about during the cast as well was the fact that Suhani was not giving her eliminations away, right? At least if not contributing on the aggressive aspect or going for the eliminations, it's better to save yourself and not give away those important and crucial points. Now, we also did witness, teammates of Suhani stepping up towards that midpoint. So if they do the same right from the very beginning, I think we might just head to game number 3. When game number 1 started, starting के अंदर टीम सुहानी was lost somewhere. Yes. उसका फायदा उठाया काश्मीर ने. उसके बाद एक certain advantage वो उनको maintain करके रखा. But अगर वो starting से this time without involving सुहानी, अगर वो normal खेले, I think they can still give a very nice fight. And what you said कि game 3 के chances हो सकते हैं, but already fight काफी अच्छी चालू हो चुकी है. तनुज ने Beast को pick off करा, a nice headshot, और everyone is using the same gun. That is Tommy. Oh yeah, I mean, like people call it, the meta, right? And the most effective tactics. Close range के अंदर, like Tommy का कोई भी जवाब नहीं है यहाँ पर. I mean, especially when, in a game like a mode like TDM, where you have to make that push, you have to give away those pre-fires. It's quite helping. Can't deny that. And of course, the mobility that weapon provides is also amazing. But as things stand right now, finally, for the first time, we have witnessed Team Suhani taking the lead out there. So this is exactly what was really needed. Now, what Team Kashvi can do is they might have figured out that Suhani is not, going out or exposing herself. They might just send somebody to go for a search. Maybe search and one? destroy हो सकता है. And yes, I think यहाँ पर एक फोर्ट बना रखा है, सुहानी को छुपा रखा है. It is quite funny because सुहानी किसी भी हालत में बची हुई है. कहते ना, save the princess. और वही चल रहा है यहाँ पर. बाकी के तीन जो boys हैं, they are out in the field, taking all the enemies down and securing those crucial points. And अब जो advantage अभी तक उनके favor में थी, धीरे-धीरे कर हाथ से जा सकती है. एक frag का बरकर यहाँ पे spot करा. Finally, she pressed the trigger, but Sarvit, bro, look behind. She got it. Off guard. यहाँ पे गिरफ्तारी होने वाली है. पहली बार हो गई गिरफ्तारी. And now the tough part, Krat, is getting back to that position because it's taken over by Sarvit. But it was quite an amusing encounter. But regardless, huge props to Suhani to try and get the best out of that situation possible. I would have loved to see at least one of those bullets connect. But as things stand right now, is still, despite the fact that she has been bettered out there, her team is still leading. अब एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि जो सार्वित है वो भी कुछ ठीक ही खेल रहे हैं because he took literally 5 to 7 seconds to complete an off guard सुहानी. So भाई सार्वित भाई का भी मामला यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइट लगा. It's understandable to be honest, Krat, because they're professional players. But when you know that you're playing against the creators, with the creators that you've been watching over their streams, and you've been enjoying following them, and suddenly you're sitting in the seat right next to them, there are going to be those nervy jitters, and which is quite evident in Sarvit's gameplay.
But sooner or later, you have to, deal those jitters. Then only the performance will be coming out. But Suhani again took that golden position. अभी कुछ सेकंड यहीं पे रुकेंगी वो, फिर उसके बाद वो क्रॉस कर वो बी सेंटर में होल्ड करने वाली है और उनको होल्ड करना है और आसपास उनके जो किंग्समैन है जो होल्डिंग अराउंड उनको पता है. बट सार्वित ही इज नॉट लेटिंग एनीवन टू come close. What वहाँ पर जो एक अलग फोर्ट बना रखा है काश्मी तनुज एंड हंटर ने, they are the main people, who's making those numbers count. Finally अब एक नई लीड देखी जा रही है 15-13 और सार्वित ने यहाँ पर फ्रैग निकालकर डेसिमेट करने की कोशिश की, बट काश्मी भी यहाँ पर so captain taking down the captain. All right, now this is getting really interesting. I love the idea coming out of Sarvit's head over there, because what he did was pretty simple. He was baiting out the players from Team Suhani, and while they were all charging at his direction, he had a shotgun, just blow the heads off over there. That was quite the intention, but I think right now after Suhani having a decent amount of lead to herself, now it's been sort of given away. Now Kashvi has taken control. And this is where, Suhani and Co, they will have to get back to the drawing boards and rethink their strategy to get back into this game, because after those 14 eliminations, I haven't seen anything coming up. उसके बाद एक हल्का सा stable game हो चुका है यहाँ पर, and they are not, they're feeling kind of stagnant. और ये monotonous game को रोकने के लिए they have to try something new. इनको first of all they have to find a way to break that fort defense. Maybe use that toxic grenade or maybe a grenade, anything, Molotov. Just make sure कि वहाँ पर लोग hold कर ही ना पाएं. But look at that spray. तनुज ने जो use दिखाया है यहाँ पर Tommy Gun का, it was spectacular. King Leo भी अपने लिए कुछ flags निकालते हुए दिख रहे हैं. But जैसा मैंने prediction दी थी, Kashmi will be taking down this series 2-0 और उसी की तरफ वो already बढ़ चुकी है. 6 flags रहते हैं और वहीं पर सुहानी को चाहिए 10 finishes to make things level. I think Suhani's team has done a pretty decent job in making a comeback over here. I think they were just sitting at 14 and suddenly we see them, boom, they're right at 20. And now with the way Tanuj is pushing, I'm pretty sure he's going to get punished, and indeed he does. And these are the openings that, Suhani's team really needs to look out for. Now look at Kashmi's team. They're all stationed behind that one wall. Now one good grenade could pretty much be the end for them, and they really need to watch out for that. But this time, Satvik from Oath, not really being quite lucky over there, because Tanuj, he was ferocious, just rushed in and got the elim. ये थोड़ा सा odd लग रहा है यहाँ पे, because ऐसा लग ही नहीं रहा कि काश्मीर की जो टीम है वो पहली बार खेल रहे हैं. Because प्री सेगमेंट में काश्मीर बोला था कि पहली बार मुलाकात हुई है, पहली बार साथ खेलने वाले हैं. But इन्होंने literally in a matter of all right. No, not a good news for her. But playing very synchronized game, एक दूसरे को cover दे रहे हैं. और ऐसा कोई भी प्लेयर पुश करता है तो तीनों एक साथ पीक करते हैं और सामने वाले को बिल्कुल कहते हैं ना चॉइस ऑफ टारगेट देते हैं और उसके बाद उसको खत्म कर देते हैं. बट वन फाइनल फ्रैग एंड आई थिंक द स्टोरी इज गोइंग डाउन एंड Kashmi is going to take down the series. I'm not going to say it's a close game, but it was a fun game for sure. Yeah, I loved every bit of it, and especially towards that very end where she was just hiding like, guys, I mean no harm. I do not even have my weapons all stood up, so please spare me. But, well, Kashmi's team did not show any mercy, and with that being said, has won the series 2-0, which was quite anticipated. A pro, creator, gamer, professional. She calls a lot of, adjectives right with her. But yes, getting back, Krat, this was a fun one, to be honest. And I'm pretty sure we'll have to ask Abhish actually, how easy did Kashmi go on Suhani? Well, that is exactly the question that even I was thinking of. Let's start it off. Let's first of all talk to the winning team. Congratulations to you. Congratulations. Congratulations, all of you. Very well done. आज तो सब लोगों ने टॉमी निकाल ही दिया था. I feel like you said your game. Yeah. I mean, boys played well. True. अच्छा, मुझे एक question है काशी. आपने बताया था कि you will try to go easy. ऐसा कुछ मुझे rewind करके देखना. I went easy only. The boys played well. Boys played very well, I think. Congratulations, you guys. No expressions on their face. They're literally like semis में देखते हैं next कौन आएगा. Okay. Now slowly moving on to my left-hand side to my friend Suhani. What's up? Hi, what's up? Hi, how are you? I'm doing very well. Very good, very good. Good to see you here. It was really good. Can I just say a huge shout out to not just your team, but a huge shout out to the casters while they were. It just felt like
Bro, they were like, बहुत अच्छा किया सुहानी ने, it's very good. वो आगे बढ़ ही नहीं रही है क्योंकि अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो गोली मार नहीं पाएंगी. And I was like, isn't that the point? I would have played exactly like you. I would have been like, देखो मुझे बचाओ. It's a team death match by the end of it. No, it was not about mujhe bachao. I think the idea was that I was the weakest, so they would kill me and they would get more points. That's what I said, right? that's a street so strategy. the only way I could contribute to this game was I don't die. Yeah, That's the way I play. yeah. Uh, And I did not, and I died too. And you did not. Questions to you guys. How did you guys enjoy playing on the new OnePlus 11R 5G? Awesome. Do you guys feel good? It's the shape of power. It's just like 6.7, right? It goes 6.7 inches with ADFR 2.0. So this really does adapt to the powerful gaming. Did you guys have a good time playing with it? Yes, obviously. Obviously. That's a great one-word answer. That's what you get from pro players. इसलिए वो लोग pro players हैं, ये creator हैं. Congratulations to Team Kashmir. You guys move on to the next round. Good job, you guys. Almost there. But we shall see you guys after the break for the next pair up. Welcome back to OnePlus Dominate 3.0 with OnePlus 11R 5G. This is the place where you call the shots. We just saw two matches happen. Now it's time for our match number 3, where two creators and their teams go head-to-head. Let's find out who our team number 1 is. It's none other than Team SS! Hello. Hello there. Hello. Hello to you as well. I feel like all gamers are shy. That's the prerequisite of being a gamer. एहसास of course आप इनके साथ पहले खेल चुके हैं? जी, अभी. अभी खेले? Yes. Okay, good. Okay, in that case, the question to you is where will you be placing yourself after playing compared to when you were playing before? Placing myself after playing? After playing with them, where are you now going to place? Earlier तो आपने बोला था कि आप wall के पीछे रहेंगे, अब तो थोड़ा confidence भी हो गया. अभी थोड़ा confidence है because these people are very supportive. They didn't make me feel like I don't know the game. They were like, every time I made a kill, they were like, oh, you're killing it. So I feel like I can go and be in front of the enemies and kill them. Yeah. They will give me a chance. They will give you a chance. They won't, yeah. Oh, perfect. And you guys, आप लोगों ने शपथ ली है. Will you protect एहसास? लीड इतनी बना देंगे कि उनको वो मर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जाके 2-4 बार तो मार के आएंगे. Oh,
Wow, trash talk has happened, but team captain को बोल दे कि आप मर गए तो not a problem. I would keep an eye out on this one, okay? I have to be thoda Yeah, worried. but all the best, you guys. Please take your seats, and I will bring on the second team who you'll be going up against. Whoa. Whoa! Watch out. Yeah, I'm seeing you, Joshi. Cool, yeah, bring it. All Bring right. it on. Perfect. Let's bring it on in that case. Please take your seats, everybody. Please take your seats. All right, as it has been introduced already, the competitor, the one going against Team Ehsas, none other than Team Rohan. Woohoo! Yeah. They are their own hype men. That's what I like. We are our own hype men. Hello. Best team ever. How are you doing? Going on. Going Yeah. on, going on. Rohan. Going on. Hi. Hello. Rohan, Hello. Rohan. You तो Yes. now तो you become best friends with them. जब से देखो आप वहीं 100%. बैठे हुए थे. 100%. We sat there. They taught me a bunch of strategies. I tried to do something. Then they took the phone from me and changed the settings. And then they gave it back to me. And I did not know before signing up for this that mosquito racket is not a weapon in this game. So kill count will be a little low, but they are confident. They are very confident. They're very confident. So I'm confident. You're very confident. आप Yes. इनकी confidence के बीच में you'll be very confident. You were so confident. You were kind of understanding the entire game sitting on their lap. You guys sort of squished together as one team. Is that your team strategy? कि एक साथ team huddle करके सब लोग एक ही OnePlus 11R 5G पे खेलते रहेंगे. पूरा ऐसे ही कूद जाएंगे. कूदना नहीं है, उठा के रख लेना. Okay, this is a special in for OnePlus 11R 5G team. If you find a few devices missing, you know it's Team Rohan. All right, you guys can go take your spots. Rohan, I would want you to stay right here on your mark. Please take your seat. Just a moment ago, Rohan, somebody just went doing like this. Doing Yeah, like this. yeah, So I yeah. just want to bring the person who was doing like this. Please do. Please do. It's the person who is just doing like this. Please give it up for team captain of Team Ehsas. Please. It's none other than Ehsas. Please. Ehsas. I don't think I've said Ehsas so many times together. Ehsas, एक और बार ऐसे करके दिखाएंगे क्या, please? Can we do it together? I just want to learn how it's done. Just put your foot Put your foot, आगे. foot आगे. Do this. Just and tight or Yeah. loose? No, loose. Loose. Yeah, very And confident. what about yeah. the knee? Does the knee Yeah, also? No, just the hand. Yeah. So it's like this basically. This is It's like this. गाड़ी आके Got it, रुकेगी. got it, बोलेगी got it. आपको Yeah. कहाँ जाने का है? Ah. This is where it is. Quick question, because both of you are very equal in the game, I would imagine, with Yeah. 1 hour experience. That's a very polite way of saying both of y'all suck. Both of y'all are equal in the game. You're watching. You know they said it. He's not lying. He's not lying. Not So, lying. as a 1 hour experience, अब भी बोल सकते हैं कि आपके हिसाब से, now that you know your team, कौन जीतेगी according to you? देखो मतलब I don't usually pick fights with youngsters, but you know I think old school will school them today. Ooh, very interesting. All right. Yes, sir. No, I agree with him actually. Let's put it that. I feel he has more experience in life. So in yours. So yeah, he's seen more Diwalis than I have. So I feel like let's give him, and then वो होगा ना underdog situation होगा. Like I want to play it cool. and Ehsas, if I respect win, your then- elders and lose to them. Hey, Ehsas has already been a gamer on screen, okay? At least she has that much Oh, more experience than Rohan does. Ah, Beat correct. that. I can't. Can't I beat that. legitimately can't. Okay, now I'm very excited to actually see on-scene experience come actually in real life. And I'm also excited to see your on-life experience come on, Yes, on yes. the game as well. Please feel free to go take your seats. And now I'm going to be giving it up Thank you. back to our casters. Once again, do tell us what you think. You know, mosquito fan तो नहीं है game के, but fan है. So उससे भी आप kills निकाल सकते हैं. But yes, again a crazy matchup. Fixes क्या लगता है क्या होने वाला है? A lot of boos and years being done already and it's all getting riled up. So बात करते हैं यहाँ पे creators के बारे में तो हम जान चुके हैं. You know, बेहतरीन actor एक side पे, बेहतरीन comedian एक side पे. But when you talk about the players, this is where things get really exciting. एक तरफ godlike की पूरी फौज है. ये मुझे लगा जब मैंने देखा ना एक-एक करके जब तीनों प्लेयर ऊपर चढ़े मैंने कहा ये तो जाने पहचाने लग रहे हैं. अभी जस्ट देखा था एक टूर्नामेंट पे you know कहर बरसा रहे थे. But suddenly when you look at the opposition, they're not far away there. वो भी professional athletes हैं. कुछ भी हो सकता है. It all comes down, I think, to the creators. ये दो प्यारे creators किस तरीके से अपने elims नहीं देंगे. You know the good part about team Ehsas is कि team Ehsas के पास जो तीन players हैं वो एक same team में हैं. वो सुबह शाम रात दिन एक साथ खेलते हुए आए हैं. The comms they have, the you know synergy, communication बहुत कुछ अलग level पे है. और यहाँ TDM पे कुछ ज़्यादा rocket science करना नहीं है. आपको बस एक दूसरे का model play करना है. और I think
ये तीनों जो टीम एहसास के प्लेयर, दे आर इनफ केपेबल, वो कर सकते हैं. बट इवन टीम रोहन की तरफ से भी जो प्लेयर्स आ रखे हैं, यू नो नेक्स्ट जेन प्लेयर जब ओआर बन चुकी है, सो प्लेयर्स के अंदर पोटेंशियल है, दे आर टैलेंटेड, बट अब वो टाइम ही बताएगा क्या होने वाला आगे. Yeah, I think you know, this is going to be a really close one, because I will still not write off Rohan at this point, because we know that well, his teammates are the professional athletes, and anything can possibly happen in this matchup. बट अब जैसे ही ये गेम चालू हो जाएगा, मेरे दिल की धड़कनें भी तेज होंगी, बिकॉज इस गेम के बाद मुझे पता चल जाएगा कि टूर्नामेंट के फेवरेट्स कौन है. बिकॉज अगर वो गॉडल फिर से परफॉर्म कर जाती है जिसकी मैं उम्मीदें कर रहा हूँ, आई थिंक देन इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी टू डिक्लेयर टीम एहसास एज अ विनर, बिकॉज एक बहुत बड़ा कंपटीशन वो बाहर निकालने वाले हैं इस मैचअप में. डेफिनेटली, क्योंकि यू नो जस्ट नियरेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेटिटर्स यही हो सकते थे, और किस्मत खराब कि पहले गेम में इनकी मुलाकात हो गई. सो वी राइट ऑन with the first game of this BO3. It is going to be a TDM race to 30 before the counter finishes or touches down to 0. But yeah, at this point already you can see, you know, Ballu is on a roll, and Essas doing exactly what Suhani did, but a little bit of aggression being shown, right? She's not shying away, she's not hiding. She went to a nice aggressive position. I was not expecting that कि वो इतनी आगे जाने वाली है, but yes, a good position coming out from her side. और टीम एहसास ने already एक अच्छी खासी position advantage ले रखी है, and they are all set. But TWOV Flash got that finish on Ballu. बल्लू को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि सामने वालों को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. वो सामने वाले भी पढ़े लिखे प्लेयर हैं, उनको पता है कि इतना यूजलेस एग्रेशन को कैसे डेसिमेट करना और पनिश करना है. बट जो एडवांटेज ये देखिए, हमने लिटरली पल के झपकी और सब कुछ बदल गया, और अब यहाँ पर रोहन की टीम एडवांटेज लेके बैठी है, and they're playing with the brains. Yeah, absolutely. Now this is something similar to what we had witnessed with Regiltos and Pyle, where Regiltos was the one really aggressing right into the hearts of the enemy territory. But I really like what Team Rohan is doing. They're calm, composed, collected, and using their brains over here. It's not bronze. And at this point, they have a decent amount of lead, which sort of is constantly increasing. And 47, wow, he's playing really well. Already. Double score line यहाँ पर आ चुका है, 4-8, and these 4 frags were the first frags in the game. But उसके बाद जो एक विजय रथ सा निकला है, continuous frags यहाँ पर टीम रोहन निकालती हुई दिख रही है. But you know, I think it's a big point to worry on, because अब ये देखिए, अब ये गलतियाँ for a second उन्होंने अपना स्कोप हटाया, and he got literally punished to the death. No, कुछ गलत हो रहा है. ये गॉडल टीम, they need to, you know, टीम एहसास, they need to recollect all the information they want, because चीज़ उनके फेवर में जाएगी. But finally Razor ने aggression दिखाया, and he's famous for that meaningless aggression. वो literally उनके spawn में चले गए, and he backstabbed 3 players instantly and got that advantage for his own team. And somehow we got with murder in broad daylight. I cannot believe what I just witnessed at this point, because you know the kind of a lead that Team Rohan was building up has been completely shattered, and now suddenly Team Essas has taken control. And you know, this comes down to sheer raw aggression of Team Essas that is really propelling them to such heights. You know, the good part about this matchup is कि ये दोनों टीम इतने skilled हैं, they're using alternate weapons too. They're using grenades, nades, smoke grenades. मतलब दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि एक position पे बस aim पे rely कर रहे हैं. But everything changed after the God Razor push. वो Razor का push था, उसके बाद सब कुछ बदलता हुआ दिखा. 47 will be caught off guard, and he will be brought down. और Flash वहीं पे they're targeting the easiest frag, और वही कर रहे हैं, बार-बार एहसास को ढूंढ के टेक डाउन कर रहे हैं. वहाँ पे क्रिमिनल कॉर्टेक्स दोनों जाएंगे, बट स्कोर लाइन देखिए, दिस इज द closest game till now. Yeah, for sure. Indeed. And even, you know, both the creators, they're putting in effort. It's not like, you know, they're sitting in the back seat or something. You know, they're putting their bodies on the line. And there is another strategy, Grad, which you know, I was talking about. If you cannot be the president, then just be the pawn. Go ahead, be the team, you know, be the punching bag and take those shots while your teammates get the trades. But that being said, you know, Grad Team are still having the 3-pointer lead. And this is where Team Rohan really needs to, you know, make a comeback. Rohan quite unaware of his surroundings and gets punished. You know, if you
watch closely, Ehsas is very much into the game. वो गेम को गेम की तरह खेले, और वहीं पे रोहन look confused. He's like ये बटन से क्या होने वाला है? ये से पैराशूट आएगा? मतलब पानी की बोतल तो नहीं निकलेगी ना इससे? No, वो एक कहते हैं ना क्यूरियस माइंड के साथ बैठे हैं, वहीं पे एहसास इस फोकस की उनको पता है, बेसिक्स क्लियर है, फंडामेंटल्स क्लियर है, और वहीं पे टोटली अपोजिट रोहन के साथ हो रहा है. You know, the team Essas, they are a mean force of nature, and Rohan and his boys, they've done a decent job at keeping them at bay, because now the lead has been shortened. It's just down to those mere 2 points, and this has been the closest competition so far, I must say, by any means. And oh, there you go. So the players of Godlike, they do not want to give any means of opening. They just want to decimate their opposition. Look at Flash, he's kind of surrounded. Any single moment he will get taken down, and look at who's got the kill. It's Essas. फाइनली एक काफी अच्छा लगता है, पहला फ्रैग हमेशा आपको याद रहता है, और ऐसे बड़े टूर्नामेंट के अंदर तो भाई चीजें डबल हो ही जाती है, बट दे जस्ट नीड 2 more frags to complete this number 1 game and take advantage in best of 3 series. अगर यहाँ पर टीम एहसास जीतती है, ये जीत तो बस एक मैं बोल सकता हूँ प्राइमरी नहीं होने वाली है, बिकॉज द सेकेंडरी जो प्रायर जीत है वो ये है कि एक बहुत बड़ी टीम टीम जिसके अंदर पोटेंशियल है, रोहन वो टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाएंगे. It was really amusing to watch this game, and entertaining and exciting at the same time. I've got to tell you one thing though, while the match was going on, I was taking a quick gander at the creators. Essas had that steely demeanor, she was into the game, she had a game face on, while Rohan, he was still figuring out, whether it's a ban or a mosquito bat, but regardless, it was a close game, and I'm really excited to see what happens next. The ultimate battle of titans के बीच में हम अब आ चुके हैं second game. Game 1 एहसास जीत चुकी है, अब रोहन को करना पड़ेगा कम बैक, बिकॉज दोनों में से कोई भी टीम जाएगी, बाकी सारी टीम्स के सांसों में सांस जरूर है. No, one thing for sure, SR's team really got conditioned pretty quick. When we were really thinking that, yeah, Rohan's team, they are doing this, they are staging that comeback story, and did not quite likely happen. And it is a team to be fathomed. Of course, Team SR's, I'm pretty sure one of the favorites to win this entire event. But right now, as things have begun, it's a little calm before the storm scenario. SR, she's just going all out, but little did she know, well, there was someone sneaking in from behind. Over the shoulder, इतना दूर रेंज में नहीं कनेक्ट होते, we all know that. अगर वो ADS खोल के कनेक्ट करने की कोशिश की होती तो better results आ सकते थे. But kudos for her try. 1 घंटा गेम खेला है और ये ट्राई कर रही है और इतना अच्छा कर रही है. I'm already a fan here. But Criminal making a comeback and leveling all the advantage. Rohan had 3 finishes instantly निकाले और टीम को फिर से ड्राइविंग सीट पर ये प्लेयर लेकर आ चुका है. और रेजर ने एक अच्छी खासी पोजीशन होल्ड कर रही है, बट his position was already anticipated by 47 and so perfectly cooked they change everything. Oh yes, now things have really come down. It is a 4-each scoreline for both these teams, and nobody is leaving any stones unturned at this point, right? Because each of them, they're just going all out. Now this is where Razor again is making one of those really obnoxious pushes, and which more often than not have worked out. Palu, how on earth did he survive that grenade threat? Sometimes if grenade is not properly cooked या थोड़ा distance होता है, ये इतनी HP रह जाती है. But Razor के pushes, काफी बार प्रोडक्टिव भी प्रूव हुए हैं और काफी बार टीम को डेसिमेट करने पे भी मजबूर करवाए गए हैं. सो रेजर को ध्यान रखना पड़ेगा. ही इज अ प्लेयर जिसपे टीम बहुत ज्यादा रिलाई करती है, और अगर इनके ऐसे मीनिंगलेस एग्रेशन आते रहे देन टीम को प्रॉब्लम जरूर होगी. हाँ, नो डाउट. अभी ये भी नहीं कहूंगा कि भाई उनके पुशेस कभी कभी फायदे जैसे अभी हुआ क्रिमिनल रेजर पुश टुगेदर एंड दे गॉट अ फिनिश. 2 फिनिश निकाले, बट वहीं पर मैप के दूसरे कोने में बल्लू भी नीचे गिरे, रेजर भी जा रहे हैं. जो ये एडवांटेज है ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू क्रिएट दैट लीड एंड उसके बाद कैपिटलाइज करना पड़ेगा. वरना अगर ये टू एंड फ्रो जाता रहा ना, देन जिन गैम्बल ही रहेगा पूरे टाइम गेम में. Definitely, that will be the case. But for all the new viewers who have just tuned in to the stream and wondering what are we watching, well, it is a beautiful event organized by OnePlus and the folks out here. We have got 8 creators with us, beautiful people out there, and along with them 24 players, out of which a lot of them are professional athletes. They have all just worked their way out in to this moment, and a moment that we've all been waiting for. Every time as in our lives, being gamers, someday you would want to meet your favorite creators, streamers, Ehsas got and one. just
play with alongside them, and that is what is happening right now. So it is a best of 3 matchup between Team SAS and Team Rohan Joshi, out of which, SAS has already gotten that 1 game up lead, and now slowly but surely they are starting to take control. एहसास ने फाइनली यहाँ पे TWOB के फिर यहाँ पे गेम से बाहर निकाला और रोहन ने वहीं पर बल्लू को ग्रेनेड से एलिमिनेट कर दिया और दोनों अपने अपने पहले जो फिनिशेस को एंजॉय करते हुए जरूर देख रहे हैं. 47 securing one more frag. Forest team 47 getting criminal down to. अब criminal is a danger man. हर टीम में एक ना एक प्लेयर है. अभी के लिए मैं ये बोल सकता हूँ एहसास का वो प्लेयर जिसे सबकी काया बदल रखी है, दैट इज क्रिमिनल फॉर श्योर. फ्लैश ने वहीं पे क्रिमिनल को एक और बार टेक डाउन कर दिया है. अब जो स्कोरबोर्ड है स्टिल वेरी टू एंड फ्रो. अभी भी टू से कि कौन सा प्लेयर जीतने वाला है, कौन सी टीम जीतने वाली है इज अनक्लियर. Alright, look at that. Flash actually went on a flank, he decided like, you guys just draw attention, I'm going to try and do something really cheeky. But sadly, Godlike just read them like an open book out there. But as things stand, even Team Rohan, this time, Rohan has indeed gotten that steely demeanor. He's finally gotten his game face on. I think we are in for a delight, Brad. रोहन का फाइनली यहाँ पे गेम पे जरूर दिखने का आ रहा है. बिकॉज एहसास ऑलरेडी 5 से 6 बार मर चुकी है. उनका ना हर बार उनका जो केडी है वो बहुत बुरा चल रहा है. When we talk about रोहन got decimated by Razor. Razor's का जो रन एंड गन है is almost perfect और टॉमी गन वो चला रहे हैं. उनको पता है कि कैसे चलाना है, फायर कैसे शूट करना है. एंड फ्लैश भी यहाँ पर अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ impactful करते हुए दिख रहे हैं. But I really loved how Rohan made that movement, right? All gangsters just hold that Tommy gun and try and spray and pray and hope your bullets might connect, which in this case did not. But still, the silver lining over here is the fact that, the players have almost leveled up the scoreline. And now things are going very, very, very close. So I was not hoping कि एहसास यहाँ पर 2-1p situation में भी जाने देंगी. But I think Rohan, they have something up their sleeves and they are all set to demonstrate it. और एक अच्छा रेड आता है, रोहन को पिक ऑफ करा. But Rohan needs to play a little passive. वो बार बार आगे जा रहे हैं, वो अपना जो किल दे रहे हैं सामने वाले को, उससे प्रॉब्लम ही बढ़ रही है. और इट्स बेटर थोड़ा होल्ड बैक करें और उनके जो बाकी के टीममेट्स हैं, इफ दे कैन गो आउट एंड परफॉर्म एंड गेट सम फ्रैग्स, वो टीम के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा. It's a game of where your creators aren't your liabilities. And, I really like this approach from Team Godlike. What they're doing over there is the fact that, they're kind of staying on that back foot a little bit, protecting their precedent and getting the job done. And as we speak, Team SA's just one finish away from winning this one. Or this BO3 series can end at any moment. Because यहाँ पे एहसास को एक फ्रैग चाहिए और अब ये देखिए मोमेंटम, everything went so slow. Nobody wants to take any experiment. And yes, it is. वो slow हो गया. और yes, they are celebrating already. Team SAS securing the deal, taking down Team Rohan with a scoreline of 2-0. Well, the match has been finally settled. The score has been set, and Team SAS have managed to win this one out. I'm pretty sure Abish back out there must be excited, and we'll have some really interesting questions for both our creators. And Krad, you both are very, very, very right. I do have such interesting questions for our winners and our non-winners. But I will start with Rohan. We had our photographer who was consistently obsessed on taking Rohan's photographs because Rohan had the best game face, which was this. See, I believe, Abish, win or lose, I must concentrate. Yeah. Win or lose, I do both with concentration. And I think that's the important thing, really, when you think about it. I think I played very well for SAS's team. And I guess what happened here is we had a 5 versus 3, and I don't think it's fair to them. It's just, yeah. Fair. Weirdly enough, that's her name, but आज मुझे दर्द का एहसास. Oh! हो रहा है. Well then, I really enjoyed the way that your team had completely played, and you weren't standing at the back. You were pretty much ahead all the time. I'm like, Abe. I was ahead all of the time up until between matches. Their Agent 47 there turned around and said, "Dadaji, पीछे." The exact word was जहाँ spawn हो रहा है ना. And I was like, and then you would have died less. Okay, but because you gave it, there was 5 versus 3 in this game. I'm going to go to the team captain who won. Well done, SAS. A 5. You lied to us blatantly. No, I'll tell you what it is. It's them. Okay. Yeah, I just killed twice. All of them they did. Of course. What? All of it they did.
Of course, all of them they did. They all play with the same team. They're from Godlike, so they know exactly what to do. So finally, they were like, "De karna kya hai na? Ehsas ko piche rakhna hai." But no. You were truly Sunny Deol. You walked out right in the middle. You got a kill as well. Yeah, I got 2 kills. You got 2 kills. Rohan, how many kills did you get? One, which is killing yourself. No, okay, 2. 2 in that case. But congratulations to your team. You guys go on from the quarterfinals to the semifinals, and you guys can go back to your seat immediately after this. They're playing all of this on the OnePlus11R 5G with the 16 GB LPDDR5X RAM. That makes the entire gaming experience super smooth. We're going to see you right after the break. Hello and welcome back to OnePlus Dominate 3.0 with OnePlus 11R 5G. This is our quarterfinals and it's the last match of the quarterfinals. And we've kind of kept this match for the last because there might be enough trash talks, but there will actually be true gaming. I'm going to start off with our first team. Please give it up for Team Rahul. All right. Hello, sir. Please. Hello. Well done. It's very good. I have a question to all our gamers. ये एक rule है क्या कि when you come on stage smile नहीं करना होता है? Game face. अरे ये smile करने लग गए हैं. Suddenly एक creator हो गया, gamer नहीं है. Mr. Rahul Subramanian, congratulations. You met your team. What कौन इसमें सबसे ज़्यादा strongest है? हमारी team में actually everyone has their own strengths. Okay. So all of us, it's a good team. Okay. A team comprises of different individuals that bring different qualities together. Done. Yeah. Like Destroyer, that's what we like to call him. Nice. He's very good at identifying targets. Okay. Okay. He's the bulldozer. Okay, bulldozer. Yeah, he rams through opponents. And Shashank. Okay. Shashank is the mind. Is the mind. Yeah, behind. He's the one strategizing. तो मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँ समय दोस्त तो हम थे लेकिन मैदान में watch out bro. Oh wow, Rohan, I feel like at this point in time, Rahul, you have explained everyone's responsibility. What exactly are you going to do?
That's the secret. That's our secret weapon. That's My a secret. role is a secret, and you'll know. You'll know soon. Oh. But you should ask my team members also what do they like about my game. Oh yeah, absolutely. Could you tell me one very hyper-specific thing that you like about Subhu's gaming? वो बस और मार दो. Chupke maar do. He's been my personal mentor. He's your personal. As your personal mentor, can you tell me what have you mentored him? Unique क्या है राहुल के बारे में? We are just holding and they go and kill me. सही है. Very good. Perfect. Yeah, perfect team. Everyone's a liar. Nobody knows what's going on. Okay, I'm going to ask your team to go take your positions. All the best. All the Thank best you. to you Thank guys. you. All the best to the opponents also. Let's have a Opponents. good game, guys. Let us have a Yes, good game. All right, one team has already taken up their position on the right-hand side. It's time for us to bring on the final team. Please give a huge round of applause to Team Samay. Oh, yes, everybody is sucking their stomachs in, jacket ko set karte hue, hair ko fix karte hue. The team is here. Samay, पहले मैं शुरू कर लेता हूँ before asking your strategy कि Rahul Subramanian has just said all the best in a sarcastic way. What are you going to respond? I think I'll take it because मेरे को घर जल्दी जाना है आज. So if he wins, I guess I can get to go home early. So I guess I am the actual winner then. Lovely. Samay wants to go home. Okay, I have a feeling from our other team members who've actually come here to win the game. Do you think having Samay in your team is a disadvantage or an advantage? इसको घर जल्दी जाना है. It's an advantage. Okay, what about you? Same. It's an advantage. Acha. Okay, an advantage. Can you tell me why? Give me 3 points why Samay is an advantage in your team. He will hold the position and we will take the advantage. See, each second I'm alive in the game, it's a liability. So उनका टारगेट है कि मेरी वजह से उनको पता है कि भाई जल्दी जल्दी गेम जीतना है. तो वो लोग एक्स्ट्रा रश करेंगे because जितना मैं बाहर जाऊंगा मैं मरूंगा भाई. If only there was a way to put friendly fire on and just get him on his knees so that he doesn't go on. There is, bro. Oh, It's perfect. called crossbow. There you go. One of you is going to be playing with a crossbow. Congratulations to all of you for having Samay as your team captain. Please take your positions. Samay, I want you to stay back. Team members, please take your positions. Sync up to the game. Get familiar with the OnePlus 11R 5G. And now, wing 365 jokes a year. Rahul Subramanian. Rahul. Oh. Very good, very good. This is a very beautiful moment for the people who are watching right now. If you want to write in chat, whatever that was, that's what it was. Aapne to, you have already started dissing him at this point in time. I know that Samay has a little bit more gaming experience when it comes to New Chess. State. New State as well. New state I have actually. I have. Okay, Rahul. Yeah. Clearly, Honest. only one question. What weapon are you going to pick and how are you going to play? What weapon do you want to play with? So I'm going to use the machine gun. I Machine don't know gun. if it's still called the same. Yeah. And in fact, Samay is the one who taught me how to use it. Samay. Really? Yeah. This never happened. I don't know what you're saying, bro. No, Let's play Samay. character, bhai. Yeah. So I'm going to use that. My strategy is the same. So these are the boys will attack while I'll support them from behind. Yeah, I'm moral support. I'm like, come on, you can do it. Oh, great. And they will do it. Okay, perfect. While he is being their motivational speaker for their team and while Samay just wants to get back home, let's find out who wins the final quarterfinals. You guys can take your seat. Final quarterfinal. Final quarterfinal. Well played, That's bro. how I do it. Alliteration. Final square quarterfinal. Please take your seat. And now back to our casters. Tell us, what do you think is going to happen today? You know, समय तो स्टार्टिंग से क्लियर थे उनको घर जल्दी जाना है बट मुझे समझ नहीं आ रहा बाकी तीन प्लेयर्स को क्या फील हो रहा होगा कि भाई यार हमारा कैप्टन तो घर जाना चाहता है बट वहीं पे राहुल भाई ही वाज लुकिंग सो कॉन्फिडेंट मुझे लग रहा है एक और मजेदार मैचअप होने वाला है. Yeah, of course, definitely. Now this is like a world war where you've got generals from the backlines. Literally, you can sit in your bases if you guys can hear me out and give out your call outs. You know, the moral support, guys, come on, you can do it. Yes, right from the basis where you do not have to be a liability. Yeah. And if someone dares come at your door, then you know what to do. Nade yourself, simple. You're not gonna give any points away. That's another hack that we've just given you right now. But regardless, like discussed, you know, this is the final game of our quarterfinals where we will get our last semi-finalist, and it is gonna be one of them. Somewhere not really hopeful, but I'm pretty sure
well, we've got the competitors riled up. So let's see what Rahul has in store, because, you know, again, the athletes, they do have what it takes, and they've, you know, just proven the medal right to be over here. Why not take a shot and give a go for the big prize on the line? You know, Rahul is वक्त बिल्कुल meditation कर रहा है, you know. He did something Zen with mode. his hands and no something I didn't understand, but it's okay. No, still he's repeating. Yeah, very good. Best of luck. You know, I hope he wins, cause you know the winner will be facing Team Ehsas. Okay, so here is the thing. Rahul needs to shut down his Zen mode off and activate his gaming mode on, and that you can do with your OnePlus 11R 5G. Oh, Just a little plug-in over there. But that being set aside, Grat, it is time, right? Now, you know, look at the players. You know, सहम से गए, like Samay ने ऐसा बोल दिया. But I think Samay has been playing New State. I think we've seen those streams coming इन्होंने up. बहुत टाइम बिताया गेमर्स के साथ समय ने, so समय को पता है कि कैसे चलता है इकोसिस्टम, कैसे प्लेयर सोचते हैं, गेम्स कैसे खेली जाती हैं, कुछ ना कुछ तो फायदा हो सकता है. बट यू नो बाय लुकिंग ऑल द अदर नो टीममेट्स आल्सो, चीजें मुझे लग रहा है आसान नहीं होने वाली राहुल की साइड के लिए. All right, ladies and gentlemen. So on one side, we've got Samay, who's least interested, who just wants to get down with it so that he can go and do what he loves the best, that is play more chess. On the other side, Rahul seems to have downloaded the wrong version of New State Mobile, especially when, you know, he made those references out there. So I think our admins have gotten all sorted, and I think he's waiting riled up to get inside the battlegrounds and prove that he's got what it takes to make it to the next round. The game is already live. हमारी दोनों teams, they're all set to take each other down. और ये मैचअप हमारी ऑडियंस भी जल्दी देखने वाली है, जितनी भी अरीना में अवेलेबल है. बट टीम सब already started with an advantage. 3-0. Rexy getting that Percy finish, and Shroudy. Okay, so last time I remember, Criminal and Shroudy were playing for Scarlet. Now after Scarlet is, you know, what do we say? Disbanded. Or maybe Disbanded just or let go demolished. of their players. So Criminal Happens. got his slot in Esports. Gordel, and Shroudy went to Insane. A nice team. No, I think it's a very good decision by both youngsters. I think considering the fact, you know, these two young lads have come in and it's somewhere sort of anticipated that they ought to perform, right? Now, this is where you've got, you know, the opposition, both of them having played at the highest level in the country. So, at this point, anything can happen. But Team Samay, I don't know if Samay is actually happy with this scoreline. He's leading, and we've got Eternity trying his luck to try and best out Daku, who's apparently making a push over there, and Arishim makes a good work out of it. You know, Fixes, we all know that in New State community, the best aim duelist fragger, whatever you can say, is, you know, this single guy who holds this position, that is Reflexer. Reflexer को Percy ने हराया है, and Percy is playing for Team Rahul. So एक advantage तो मैं बोलूँगा कि भाई Percy जैसा player अगर है, then कुछ फर्क आ सकता है. But you know, Shroudy एक तरफ Rexy, ये matchup भी काफी ज़्यादा tight है. Because जो भी जीतेगा वो एहसास के against खेलने वाला है, and वो team एक अलग ही level पे चल रही है. Because वहाँ पर तो Razor, Criminal, you know, उसके बाद बल्लू भाई बैठे हैं वहाँ पे. So चीजें वहाँ पे भी आसान नहीं है. You know, at this point, we've sort of gone into a standstill where Samay is like, guys, I'm just, you know, giving you that moral support you were expecting out of me. Jao, jo bhi karna hai, karo, khelo. And let's just get on with it. But deep down, I think he's just playing around with us, right? After the match ends, and like, guys, ये तो सब planned था, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था. But अभी के लिए, I mean, as things stand, we still have Team Samay trying to get that lead, and they have it retained, where Team Rahul suddenly are right back into it, courtesy to Percy's grenades. You know, Shroudy and Percy making sure that कि यहाँ पे टीम समय का जितना भी फालतू एग्रेशन है ना, उसको point to point यहाँ पे punish कर सके, and everyone making an over commitment move, उनको यहाँ पर गेम में फॉल बैक करने में मजबूर करा है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले रेक्सी को पनिश होते हुए देखा, उसके बाद जितनी भी प्लेयर्स यहाँ पर पुश इन कर रहे थे समय की तरफ से, they got their punishment. डाकू अब क्लोजिंग खेलना चाहते हैं, उन्होंने रेक्सी को स्पॉट करा, बर्सी वहीं पे गॉड्स के एक प्लेयर को नॉकआउट और गेम से बाहर करेंगे. इटर्निटी को भी एलिमिनेट कर दिया गया है. सो एक और हमें 2-2 गेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है. You know, at this point, I think Rahul has figured out a beautiful trick. You know, he's unlocked the art, Krat, To disappear. gyroscoping. Okay.
look at his stance. I mean, if the production can bring that up, right at Rahul, he's not touching the buttons. All he's just doing is moving his phone away. So he's discovered something. He's a learner, and he is doing exactly the same. You know, बात सही है, because अगर आप किसी को मार नहीं सकते तो किसी से मरना भी नहीं चाहिए यहाँ पर. और नेट को करा था, but Shouty was so precise. Rexy को मौका तक नहीं दिया, and it was a blink of a second. Rexy was brought down. But I want to see Rahul move a little bit. समय भी शायद यहाँ पर वही चीज कॉपी कर लिया, दोनों अब स्पॉन में. एंड इट्स बेटर, फोन छोड़ सकते हैं, मैं तो कह रहा हूँ बातें करो, क्या ही दिक्कत है. इट्स नाइस. Winning spirit always is there somewhere deep down. You know, we all know that कि जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, like said, it's a fun tournament, आप क्रिएटर्स के साथ आप मिलके खेलने वाले हो. बट मैंने बोला है हर बार, जितने भी प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं जो कम्पीट करते हैं, उनके सर पे हेडफोन पहना दो, हाथ में फोन दे दो, दे विल प्ले टिल द लास्ट ब्रेथ. और वही होगा यहाँ पर, और एक से एक बढ़ के प्लेयर है यहाँ पर. सो अभी समय ने पूछा है कि हम हार रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था. इनका जवाब टाइम से मिल जाए समय भाई को तो सही है, वरना चीजें और ज्यादा खराब होगी. बट स्कोर बोर्ड अब बिल्कुल लेवल हो चुका है, 17-17. बट श्राउडी यहाँ पे ऐसा लगा था ही वाज हैविंग अ नाइस वॉक, बट यू हैव टू नो रियलाइज दैट यहाँ पर हर जगह गोलियां चल रही हैं, क्लीन वॉक नहीं मिल रही है. Yeah, I think the team Rahul has done a really good job in trying to stage that comeback, because now they've started to take the lead. And I do not know, जो बोलते हैं ना समय खुद के घर के विभीषण निकले. I think that is turning true. समय की बात है, अगर समय सही रहा तो जीत हो जाएगी समय की. बट डाकू जो काफी अच्छी पोजीशन लेके बैठे थे, यार अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो आराम से बैकस्टैप कर सकते थे, बट उन पर कांस्टेंट मॉनिटरिंग थी एंड फायदा उठाया. बट यहाँ पर श्राउडी रेक्सी को पिक ऑफ करेंगे एंड आरएसएम श्राउडी को सीधा ट्रेड बैक कर नल एंड वॉइड कर देंगे. अभी भी एडवांटेज राहुल के फेवर में है, 2 फ्रैग्स की. एक तरफ मतलब श्राउडी, डाकू, पर्सी, और दूसरी तरफ रेक्सी एंड द बिग नेम्स. चीजें अभी भी काफी नजदीक, जो रंजिश है आपसी वो दिख रही है जरूर. You know, Grant, what I want. This match is going really cutthroat. It might just end at 29-29. This is where, I mean, if we could have it under our command, I'd just let, you know, both the creators go head to head. You know, you've been hiding. Now it's time for the generals to come into the battle and maybe partake in that and be the one who decides who stays and who goes. Because now the competition, look at this, it's just going back and forth, right? For a moment we saw Team Rahul getting that lead, then Samay strikes back in, and both the captains, well, they're chilling in the corner, having, well, like, whatever it is, but that glee smile out there. But, you know, at this point, it is all squared, and now the clock is even ticking. Just barely 3 minutes on the clock. You know, मुझे ना have a strong feeling कि राहुल और समय को ऑप्शन होता ना कि स्पेक्टेट कर सकते हैं अपने टीममेट को, वो तो 1 सेकंड नहीं लगाते, बीच में पीछे स्क्रीन पे देख रहे कि अपना अपडेट क्या चल रहा है. बट लड़के अच्छा तो खेल रहे हैं और वो अपडेट लेके खुश है वो. और अभी राहुल के पास एडवांटेज है 2 फ्रैग्स की. अगर ये 30 हो गया पहले, देन पहला राउंड उनके फेवर में जा सकता है. समय इस कर्सिंग इंसल्ट की भाई स्टार्टिंग में मैंने फालतू में आगे जाकर जो किल्स दी है, अगर वो नहीं दी होती तो चीजें पलट जाती. बट समय इस टीम दे मेड अ कमबैक. उन्होंने जो एडवांटेज दे रखी थी सामने वालों को छीन ली है. अब टाइम है एडवांटेज बनाने का और कैपिटलाइज करने का. ये देखिए आहुति, यहाँ पर आहुति दी गई है अपने आप की. You know, Sabe does realize that, you know, even if you get, you know, friendly killed, it still does not give any points away. So that's all futile at this point. He's just blowing. He got 1 kill. Now that's going to be so detrimental, because by the time he gets himself back to the current position or up to a good position, the other team's gonna capitalize. And this is a very good opening for Team Rahul, where they need to go and clobber down, get the final 2 picks and win this game. I wish अगर जो समय ने नेट से मारा है प्लेयर, मैं देख सकता, but yes, it's very close. एक टीम को 2 kills चाहिए, एक टीम को 1 फिनिश चाहिए. देखना है कि पहली वो कौन सी टीम होगी जो करके दिखाएगी ऐसे. उसके साथ टीम समय securing the number 1 round. Oh my god! Oh, very good, very good, very good. Just don't ask us what happened. समय blush कर रहे हैं. Like, निकल गया, you know, निकल गया, and एक और गेम खेलना पड़ेगा शायद, और 2 भी बढ़ सकता है. तो मेरी आज देरी होने वाली है और ट्रैफिक भी बढ़ने वाला है. ऑफ कोर्स, यू नो, शाम का टाइम है. और आपको तो पाव भाजी खानी है आज.
Yes, मुझे भी पाव भाजी खानी है deep down. I also want the things to end quick, but you know things are getting really exciting. कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमें हमारे सारे semi-finalists मिल चुके हैं. अब यहाँ पे फिक्सेस ने तो ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि टीम समय इज गोइंग टू बी द लास्ट सेमीफाइनलिस्ट हमारे यहाँ पर. ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है आपकी तरफ से. क्या आपको लगता है कि टीम समय can carry on this potential in the next game too? You know, I think Samay, what he's doing, it's all a ruse, right? Just, you know, throwing sands right at the eyes of his opponents and like, guys, don't. You know, I am trying to sabotage my team. I did everything in my playbook. I killed myself, I killed my teammate, and yet my team wins. And despite that, if Rahul cannot defeat him, I don't see his chances. अभी भी वो मिस्ट्री है वो ग्रेनेड का. बट यस, गेम इज लाइव. He's back on. शुरुआत ही यहाँ पर बिल्कुल बम से हुई है कि बम से खुद भी उड़ेंगे और सबको उड़ा देंगे जितने भी लॉबी के अंदर प्लेयर्स हैं. सो श्राउडी, डाकू, राहुल एंड पर्सी विल बी गोइंग अगेंस्ट द बॉयज टीम समय. समय को एक एंटरटेनमेंट वाला सोर्स मिल चुका है कि मैं क्या करूं खड़े. राहुल भाई बड़ी देर से एफ के खड़े देखे कोने में, बिल्कुल हल्का सा कहते हैं जम्मू से हल्का सा नीचे है. और वहीं पे समय भाई को देखेंगे, समय कॉन्स्टेंटली एक एक्टिविटी कर रहे हैं. उनको पता है एटलीस्ट मन बहल रहा है मेरा और मुझे कोई नहीं रोक सकता. जब मैं मरता हूँ मुझे एक और बम मिलता है, उसी बम से मैं फिर अपने आप को आहुति दे देता हूँ. इट्स ओके. You know, at this point, दोनों ने एक नई चीज सीख ली है. राहुल जी ने वो जायरो चलाना के ऐसे ऐसे फोन हिलाने से भी आजकल ये मिल रहा है. तो वो क्रॉसहेयर जब मिल रहा है, that's exciting. And you know, we are the oldies. हम हमारे थोड़े 2-3 जनरेशन ऊपर के हैं, तो उनके लिए तो एक अच्छी खासी खोज है. बट फॉर समय ही इज डिस्कवर्ड कि अगर मार नहीं सकते छिप के ग्रेनेड फेंक जरूर सकता हूँ. एंड ही इज डूइंग एग्जैक्टली दैट. समय आई टीच यू. यू नो, ग्रेनेड को निकालो, कुक करो, जब 2 सेकंड बचे हो तो फेंक दो. यू नेवर नो वो ग्रेनेड से सामने वाला उड़ जाएगा. कोशिश करके देखो. ये एंटरटेनमेंट भी अच्छा लगेगा. जब सामने वाले का खून निकलेगा ना मरते हुए, शायद से एक किक आए. बट नहीं, उनका अब ध्यान उसमें ही है. वही है ध्यान. अल्टीमेट गोल है अपनी आहुति चढ़ाना. बट यस, अब जो हमारे प्लेयर्स है टीम समेत, दे मेकिंग अ नाइस मूव. बट डाकू ने इंस्टेंटली एंटिसिपेट करा उस पुश को और रेक्सी को करा पनिश डाउन. समय के पास एडवांटेज है, बट वन थिंग इज कांस्टेंट इन दिस गेम इज कांस्टेंट सेल्फ बॉम्बार्डमेंट बाय समय. You know, you can't escape 3 things in life: death, taxes, and Samay hiding himself. Time. So, I mean, this point. This time, you know, उनके जो मंसूबे थे यहाँ पर वो खत्म हो गए. जो वो करना चाहते थे रंगे हाथ पकड़े गए और उनको वहीं पर धर दबोचा. Somebody had to do that. Like, just stop it. But he's not gonna learn from his mistakes. You know. टीम का कोई रिस्पॉन्स नहीं है. They don't give a single flying fish कि समय भाई क्या कर रहे हैं. कि आप खुश हो, आप खुश हो, हम खुश हैं. हमें कोई लेना देना आगे का. मतलब आप ट्रेनिंग कर रहे हो इतनी अच्छी और बढ़िया है, करते रहिए. हम अपना साइड में देख लेंगे. एंड द बेस्ट पार्ट इज कोई लाइबिलिटी यहाँ पे बन नहीं रहा है. समय अपने आप को उड़ा रहे हैं, तो आगे वाले को पॉइंट्स दे नहीं रहे. वहाँ पे राहुल तो बेस से निकल भी नहीं रहे. तो यू नो, इधर बेस इट्स सॉर्ट डाउन टू अ 3v3 राइट नाउ, व्हिच इज क्वाइट इंटेंस क्राउड. इट्स स्टिल 5-5. लाइक आई विश अभी कोई इंटरेस्टिंग काम ढूंढ लेना अगर राहुल भाई भी. मे बी सेल्फ ग्रेनेड, अगर इतना ही मजा ही आ रहा है. आई डोंट अंडरस्टैंड. बट मैचअप का मोमेंटम देख रहे हो, ऑलरेडी 4 मिनट गेम खत्म में हो चुके हैं. बट टोटल फ्रैग्स 13 फ्रैग्स गिरे मैप के अंदर फिक्सेस. सो भाई टीम दोनों बिल्कुल होश समझ के खेल रहे हैं. दे वांट टू मेक श्योर. बट राहुल जहाँ पे होल्ड करके बैठे थे वहाँ तक कुछ भी कर अपने प्लेयर्स ने अपना रास्ता तय करा. एंड दे सिक्योर्ड अ फ्री फिनिश है. अब 8-8 का स्कोर चल रहा है. समय ने फिर से अपने आप को 15 बार मार चुका है. मतलब वहाँ पे लिखा आ रहा है क्या उनके बहुत ही लाजवाब स्टैट है ये अकाउंट. मतलब इट्स अ गोल्डन अकाउंट फॉर श्योर. आई मीन कहीं से तो स्टैट्स बढ़ रहे हैं, तो वो खुश हैं. डिफीट्स हो थोड़ी देर में ना एक ऐसा होता है, स्क्रीन हिलती है और एक स्टैट लिखा आता है कि उड़ा दिया है. But इस समय I think this is sort of been one of those slow starts where yeah, I think Samay's team they're I think taking inspiration. समय ने अपने आप को इतना उड़ा दिया कि अब प्लेयर्स को भी समझ आ गया प्रोजेक्टाइल से मार सकते हो. राहुल भाई कहाँ छुपे हुए थे? वो परेशान हो गए. मतलब लिटरली राहुल थॉट कि आगे से तो कोई आ नहीं रहा, पीछे से कोई आ नहीं सकता. वो आराम से हीलिंग चल रही है उनकी और पीछे से आगे पॉइंट ब्लैंक पर उनको हिप फायर पे मारा है. सो इट वाज नाइस टू स्पेक्टेट. बट अब फाइनली जो स्पीड उठाई है स्कोर लाइन ने
I should see that. 15-11 का स्कोर लाइन हो चुका है. 15 more finishes to complete this game. Game number 1 यहाँ पर समय ऑलरेडी जीत चुके हैं. अगर इस बेस्ट ऑफ थ्रीज को आगे बढ़ाना है, देन राहुल को इस मैचअप को जीतना पड़ेगा. अगर समय इस मैचअप को जीत जाते हैं, देन ही विल बी his team will be the 4 finalist team. But close in battle. श्राउडी के पास यहाँ पर टॉमी गन काफी अच्छा प्रयोग करा है. फायर के अंदर अच्छा किल निकाल कर टीम को किया सपोर्ट. अब डाकू आगे बढ़ेंगे, उन्होंने प्लेयर को स्पॉट कर रखा है. बट लेट्स सी इस टीपीपी की वॉर में कौन जीतेगा. और गॉड रेक्सी हैविंग देयर अपर हैंड. उन्होंने पहले डाकू को पिक ऑफ करा, उसके बाद राहुल को पिक ऑफ करा, एंड पर्सी वहीं पर एटर्निटी को भी गेम से एलिमिनेट करेंगे. All right, so now Team Same's team has pretty much taken the lead. It's a 5-pointer lead, which is quite commanding considering if you talk about the players. They're not going to throw that lead from this point at least. But with Percy still in game, anything can possibly happen. But at the same time, Team Rahul needs to ensure that they get those positive trades. By positive trades, you have to keep your players alive. You need to get a few more limbs so that you can get the score back leveled up. But if Same's team takes such inspiration from him and start just ruthlessing, massacring people with just grenades, what do you do, Brad? मैंने अभी थोड़ा ध्यान लगाया, बट जो समय कर रहे हैं, ही इज डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग, नो. बट चीज क्या है कि हर बार यू डाई एंड एवरी टाइम योर स्पॉन चेंजेस. तो हर बार आप डिफेंडर स्पॉन पे पैदा नहीं होने वाले, अब आप हर बार सेफ नहीं होंगे. तो इट्स बेटर आप वही देखिए, समय ने आप एटर्निटी को भी उड़ाया है. He's done it. He has done it. एटर्निटी इनकी अपनी टीम में है. Yes, he has done it again. और वापस से This is hilarious. मेरे से नहीं हो पाएगा, और हो गया मेरा. यहाँ पे हो गया, मतलब बट द गुड पार्ट इज कि अभी भी वो फ्रेंडली फायर का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. बट वहीं पे राहुल भाई का क्या हो रहा है कि राहुल डजंट नो कि समय ने यहाँ पर समय तो अलग ही कुछ कर रहे हैं. बट अच्छा, इन्होंने सीख लिया है कि इस बार मैं नेट जाके अपने टीममेट के साथ अगर बैठ के नेट फोड़ूं तो दोनों मर जाएंगे. तो समय इज लिटरली डोरा द एक्सप्लोरर. ही इज गोइंग आउट ऑन एक्सपीडिशंस, लर्निंग फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर एंड देन इंप्लीमेंटिंग, एंड वी आर एंजॉयिंग दैट. इट्स नॉट गुड. बट पर्सी ने वहां पे समय को पिक ऑफ करा. अब आएगा मजा. अब देखता हूं मैं कि यहाँ पर क्या टीममेट को आहुति बनाई जाएगी. एटर्निटी वहीं पे डाको को पिक ऑफ कर लेंगे. फिर से स्कोर लाइन बराबर हो चुकी है. अब देखना है हर बार इतना क्लोज क्यों होता है बैटल. लास्ट टाइम सेम सिचुएशन के अंदर थे समय के. बट यस, व्हाट, अब ये बेस्ट ऑफ 3 सीरीज अपने ग्रैंड फाइनल्स की तरफ जा रहा है. द लास्ट डिसाइडर मैच. ओह माय गॉड. एटर्निटी शायद अपना गुस्सा जताते हुए कि भाई साहब अपने नेट अपनी जेब में डाले, अपने से दूर रखे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. वन मोर टाइम एंड वी विल बी आउट. वो एग्जिट का दरवाजा देख लो पिक्सेस, वो दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाएगा टीम जो हारेगी. Oh my goodness, this is ludicrous. At this point, Same's teammates were like, भैया please, नेट मत करो यार. आप खुद को नेट से मारो. ये जो आप नई सीख कर रहे हो, थोड़ा बाद के लिए करो, ऑफ स्ट्रीम करो, बेहतर रहेगा. क्योंकि हमने भी इतना मेहनत किया है इस समय. और this was so interesting to see because while we were just joking about it, Rahul just managed to steal the win, and the third one is definitely gonna be a banger. टीम राहुल इतनी आसानी से हार मान जाएगी, ये तो मुझे पहले भी पता था. बट फिक्सेस ने क्या बोला, गेम थर्ड will be a banger, and I'm also rooting for that. But yes, Fixes final prediction क्या होगा? Because game 1, game 2 it was so close. 29-28, 30-28. ये दोनों बार हुआ. इस बार क्या होने वाला है? I'm actually smitten at what's really happening right now because Samay has mastered the art of throwing, right? Quite literally, right? If you get it, like grenades and game thrown, and Rahul has managed to get that victory. That being said, ladies and gentlemen, we are in for a treat. This is the final matchup of our quarterfinals, quite literally again, because after this, we'll be heading on to the semis. But, as things stand, I really want to see, what have these players discovered over here. Because, Krat, they're evolving. कुछ नया सीख रहे हैं. राहुल भाई पहले बेस के अंदर जायरो हिला रहे थे, फिर सडनली आगे वो नए जगह ढूंढ रहे हैं छुपने के लिए. समय ही इज लर्न कि ग्रेनेड से अपने आप को भी मारा जा सकता है, साथ ही साथ एक टीममेट को भी मारा जा सकता है. इट्स द इवोल्यूशन ऑफ मैन, ह्यूमंस. पहले एक थे, कहां से आए, अब धीरे-धीरे चीजें सीख रहे हैं हम लोग. बट यस, मतलब अच्छी बात यह है कि दोनों टीम अपना बेस्ट ट्राई दे रही है यहाँ पर. और अभी 1 ही मिनट हुआ है और दोनों टीम ने एक फिनिश निकाला है. सोच समझ के खेल रहे हैं. इसका मतलब जहन के अंदर डर आ चुका है.
अब कहते हैं ना वो ओवर कमिटमेंट वाला गेम बंद हो चुका है. It's all about calculations. If you are sure that आप इतना push करने के बाद you can get something for your team, then only you will go for that. But if you're not sure, you will not go for that. You know, one thing for sure, after the match got over, some teammates were like, "भैया please हमने तो छोड़ दो यार, हमने क्या बुरा बिगाड़ा आपका?" We need to get this round fixed. Yeah. कुछ भी करके, cause this was just given away the second game. मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे creators हैं, gaming creators हैं और normal creators हैं, they should try to give some kind of input. वो अलग मजा आएगा, cause whatever final finish उन players का हो, creators का हो, एक अलग ही हंगामा देखने को जरूर मिल सकता है हमें. You know that is exactly what we are in here for, right? A treat for our eyes. And to be honest, at this point, I would just like both these creators to go head to head against each other. जाओ आगे घुसो डायरेक्ट, हमारे सामने तू सामने, कोई आगे और लेफ्ट राइट से कोई भी शॉट्स नहीं लगा, उसमें तो मजा है रियली. बट एट दिस पॉइंट अब टीम समय धीरे धीरे वापस से वो जो छोटी सी लीड बनाते हुए, बट आई एम प्रीटी श्योर टीम राहुल कैन कम बैक. ये ऐसी सिचुएशन के अंदर व्हेन आप भी कुछ अच्छी स्टेट में नहीं हो, सामने वाला कुछ अलग सा नहीं कर रहा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. हर एक छोटी छोटी एडवांटेज को कैपिटलाइज करना है. जैसे अभी 2 फ्रैग्स का वो है आपके पास लीड, इन 2 का 3 करो, इसमें 1 मत होने देना. अगर आप सोच रहे हो कि आप थोड़ा एग्रेशन दिखा रहे हो, तो मेक श्योर आप 1 किल दे रहे हो ना, तो 2 उठा के आओ. आप हमेशा प्रोडक्टिव रहेंगे तो बेटर रहेगा. बट ये जो मैंने सोचा था वही हुआ, थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया. बट अच्छी बात यह है कि उन्होंने 2 फिनिशेस निकालकर, 1 फिनिश निकाल के एटलीस्ट उसको बिल्कुल मीडियोकर स्टेट में लाकर रख दिया. बट दिस इज द लेवल ऑफ पैसिव्स. मतलब दोनों टीम कितना ज्यादा पैसिव खेल रही है एक दूसरे के सामने. बोथ नो कि पोजीशन क्या है, बट स्टिल डूइंग नथिंग. बट यहाँ पर इस बार आई एम नॉट नो नेक्स्ट, ही इज डूइंग समथिंग नेक्स्ट लेवल. मे बी ही इज इन कुछ बड़ा सोच रहे हैं, मतलब कुछ लास्ट मोमेंट पे. राहुल तो मर गए, बट समय वही है. वो लिटरली जैसे कृष्णा कलमकार में वो लेकर आया था ना फावड़ा सा, वो लेकर साइड में बैठे हुए हैं. ही इज डिगिंग दैट होल. इफ ही विंस he'll come out. Oh yes, I was hiding here. क्या नाम था उस गाने का? Makasam. And they're good friends too in real life, Samay and Krishna. Oh yes, they are good friends. Oh, all right. So यहाँ पे वो घूमेंगे. But at this point, Krat 7-8 का स्कोर लाइन हो गया है. अब एक चीज़ है, दोनों ही टीम्स काफ़ी पढ़ी लिखी टीम्स हैं और उन्हें पता है कि ये जो है TPP मोड है और यहाँ पे फालतू में आगे आना मतलब जान गंवाने से कम नहीं है. Rexy on a crossbow. Percy, for a second I thought that Percy is going for that. Percy के सामने अब समय है, अगर वो एग्रेशन दिखाएंगे then he can get समय easily down. But Rexy वहीं पर Percy को गेम से कर देंगे बाहर और अभी भी एडवांटेज समय के पास है. This is looking like a quarterfinals. This has been one of the slowest games, to be honest, right? Because this scoreline with 4 minutes remaining, no, I haven't seen that happen before. इससे पहले जितने भी मैचेस हमने कास्ट करे, हर बार we have touched the threshold 30 frags. इस बार मुझे लग नहीं रहा कि we are going to touch those frag numbers. But time limit से जो भी आएगा decision उसी से आने वाला है. But this is high time. Team Samay, they need to realize that they have a very nice advantage and they should hold it at any case. और वहीं पर Team Rahul will be trying their best to enter into their defense and penetrate anything possible. But yeah, Shroud can be in danger. काफी कम HP के अंदर last moment के अंदर heal करेंगे. Tommy ने एक गुस्से and he secured that finish. Eternity का push काफी अच्छा था, but of course the timings were a little odd. All right, so now both these players are just going all out, right? They've got nothing to lose. It could be anybody's game as Eternity, a beautiful grenade just ricocheting off the wall, and Samay with his shovel still, hiding in daylight. And this is where, okay, this is another proposition. If Samay could just go with his shovel and maybe Rahul gets a pan and they just duel it out like. It's a nice duel. Yeah, I would pay to watch for that. Yeah. It is going to be a good matchup. Let's wish. But right now situation is so tight. अगर किसी को भी इतनी ऑफ गार्ड सिचुएशन में देखा, बंदूक से सारी गोलियां काट जाएंगी. But Percy was holding a nice angle. वहीं पर एक grenade आता है and securing one more finish for the team Samay. This is the final face-off that we have been waiting for. राहुल को कोई भरोसा नहीं है. राहुल like, I don't trust this guy. I'm still. समय कहा था बाहर. समय कहता ये तो आने से रहा, मैं तो वहीं वेट करूँगा. Oh God.
He did try to just go out, but बाकी टीम लड़ रही है, बाकी टीम जो 6 लोग हैं ना लॉबी में कह रहे तुम अपना कर लो जो करना है, हम अपना कर रहे हैं जो करने के लिए हम आए हैं। बट मैं चाहता हूँ वो आखिरी जो अगर 29-29 होगा ना वहाँ पे गेम पॉज कर दिया जाए और एक 1v1 मतलब मिली कमजोर है मेरा दिल काफी ज्यादा, तो मैं ना इतना ज्यादा सस्पेंस नहीं झेल सकता, cause जिस तरीके से स्कोर लाइन बढ़ रही है मुझे आई एम डेड श्योर कि ये आखिरी में 28-28 29-28 होने वाला है और उसके बाद फिर इंटेंस होगा। बट नाइस यूज, यहाँ पे शॉटगन लगाया श्राउडी डाकू, 2 बड़े फ्रैग्स अपने फेवर में कन्वर्ट किया। टीम समय के अंदर थोड़ी सी जान फूकी गई है एंड दे शुड कैपिटलाइज इट एट एनी कॉस्ट। They definitely should, and यही positive traits की मैं बात कर रहा था, right? When you tend to get 1 or more players, तो आपके टीम को ज़्यादा benefit होता है, and they have taken inspiration, grenades हो, shotgun हो, कुछ भी हो, यहाँ पे players मार रहे हैं अभी। अब जो धीरे-धीरे ये जो lead है बढ़ता जा रहा है, but suddenly Team Rahul, they've come back with 2 of their own, and this is where you have to maintain that steely demeanor. You have to put all in, because अभी नहीं तो कभी नहीं 1 मिनट रह गया इस मैच में और अभी 30 के आंकड़े तक थोड़ा सा सफर बाकी है, 4 मात्र और एलिमिनेट। 1 मिनट बचा है यहाँ पर, 3 फ्रैग्स का एडवांटेज है यहाँ पे टीम समय के पास, एंड एवरीवन फ्रॉम टीम राहुल दे हैव टू गो इन, दे हैव टू गो फॉर सम डेस्परेट मेजर्स एट एनी कॉस्ट। और वहीं पर जो हमारी टीम समय की टीम है, दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग, दे जस्ट नीड टू होल्ड डाउन, और वो वही कर रहे हैं। रेक्सिन एवरीवन, दे जस्ट वेटिंग फॉर टीम राहुल टू मेक अ मिस्टेक सो दैट दे कैन कैपिटलाइज ऑन इट और उसके बाद अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर्सी ने यहाँ पे समझ करके आगे गए थे, बट दैट शॉटगन शॉट, इट वाज नॉट इजी टू हैंडल और इंस्टेंटली टेकन डाउन। 2 फ्रैग्स, 20 सेकंड, फिक्सेस, टेक योर मोमेंट। आई मीन इस पॉइंट पे आई थिंक टीम समय माइट जस्ट वॉक ऑफ, राइट? एक ही मात्र फिनिश लेना है, 3 प्लेयर्स भी अगर एक प्लेयर के ऊपर चढ़ जाते, इट्स प्रीटी मच डन एंड डस्टेड, एंड maybe just could go on Rahul. Now this is a protect your precedent moment, and Team Rahul has managed to steal 2, but इसी के साथ टाइम भी खत्म हुआ एंड समय खुश है या नाखुश ये उन्हें ही पता होगा, बिकॉज वो गेम जीत चुके हैं। आखिरी में बाहर निकले थे थोड़ी देर के लिए, वैसे ही बाहर गए हैं। वो 23 का 25 कराने में बहुत बड़ा हाथ था, बट इट वाज अ ग्रेट बैटल फॉट, और आखिरी में इट वाज टीम समय हु वाज स्टैंडिंग टॉल एंड टुक डाउन टीम राहुल, एंड अमेजिंग मैच। मतलब व्हाट अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट गेम है, उन दोनों हाथ मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, कितना प्यारा मोमेंट है ये स्पोर्ट्स के लिए। आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं, बट यहाँ पे 3 प्लेयर्स। बट मैं चाहूंगा अभीश भाई, देखते हैं अभीश भाई का क्या कहना है, दोनों से बातचीत करेंगे, मुझे देखना है। This though, one thing I have to tell you, this is the most unique match I have ever seen. Not because of anything else, it's the first time जहाँ पर casters और players बोल रहे हैं, जाऊँ क्या मैं आगे, मैं जाऊँ क्या, समय से मैं चले जाऊँगा, देख तू अगर बोल रहा है, and I was like ये क्या, and Rahul at this point I'm like पीछे देख रहा है, we had our team members come and say please don't look back. नहीं, because I saw him पीछे देखना, तो मुझे लगा कि to compete with him मैं भी देखूं। कुछ दिख ही नहीं रहा था यार, वो दीवार के पीछे, तो मैंने कहा पीछे देख के देख लेते हैं। Perfect. This is the It's first not time. like हम लोग वहाँ देख के बोलते अच्छा वहाँ है, वहाँ आ रहा हूँ मैं भाई। वो तो नहीं हो रहा था। Also I have a problem with the commentators. They kept like trying to edge us कि बीच में मिलो दोनों। एक बार मैं बाहर आया, मैं 2 मार दिया उधर ही, तो कुछ इंटीग्रिटी नहीं है टीम में। I feel like casters अपना अलग सा गेम देखना चाहते थे। They were like, यार, you guys are here. I want to see how it actually works when you are there together. Most of the games you guys are at the back. You became very good at nading, man. Bro, I realized that अगर मैं वहीं रहूं तो वो लोग मेरे को मार देंगे। तो अगर मैं खुद को ही मार दूंगा तो वो लोग मेरे को कैसे मारेंगे? That's true. और किल भी नहीं जाता अपना, उल्टा मेरी गन वन भी वहीं चले जाती है। तो मैं अगले जब आता था ना, मैं मेरे पिछले जन्म की गन वहीं होती थी, फिर मेरे को और गोली पिछले जन्म की गन, करेक्ट। तो मैंने पहले गेम में तो मैंने एकदम वो किया, एकदम चिल बैठा इधर, आई लर्न पेशेंस, ठीक है। पर फिर मेरे साथ पेशेंस हो गया भाई। फिर मैंने कहा सेकंड गेम में ये स्ट्रेटजी थोड़ा एक्टिव है, ये करते हैं। लेकिन फिर लास्ट में इन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी चीज बोली कि भाई देख, हमें मत मार, ठीक है। अच्छी चीज बोली, अच्छी चीज बोली, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि मैं क्या करता था, जब मैं नेट पकड़ रहा था ना, तो ये लोग में से मेरे कोई देखता था तो उनको लगता था कि भाई ये हम भी फट जाएंगे, वो उल्टा भागते थे। तो उस चक्कर में ये लोग मार देते थे। तो इनने कहा कि एक ही जगह बैठ, तो मेरे को डर था कोई आएगा, तो मैं वो फावड़ा लेके बैठा था, और कोई मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, कोई भी आता तो उसको मार देता मैं। And did it work? And it worked. We won because of that. Just because the fauda. You lost because you weren't doing the fauda, man. I didn't even know these options are available. What is he talking about? See, I like obviously after the first game, second, which was a close finish. Yes. These guys were
they really wanted to win. I can see that, and they're playing so seriously. So I didn't want to mess it up. So my whole aim was to, because there were a lot of times I felt like going out and just smelling the air and seeing what's around. Correct, Visit a few places, take a selfie and all. Which is very good because both the team. But players every time I jumped, because they taught me how to lock my movement. Okay. Every time I jumped out just to see when these guys triggered, I used to hear them like, "क्या कर रहे हैं यार? कैसे खेल रहे हैं?" वापस चुपचाप पीछे जाके बैठ गया मैं. So yeah, you were in your own quarantine, both of you. While the other players were using the Hyperboost gaming engine from OnePlus11R, or both of you were standing at the back. No, but I really feel bad because these guys were playing really. I hope if I had given them some support, कुछ भी होता, तो कुछ बेहतर होता. Well, you know what? I could probably feel congratulations. You are now moving on to the semi-finals. Very excited to see your Favda technique coming into the semi-finals. Yeah, man. I also have one complaint. Oh, what is the complaint? With the game itself. What is it? When you die, you can't get reborn in other places. You can. Why not? That's how I was traveling everywhere watching. No, it shouldn't happen. Why? Then I have to find my way back to the tunnel, and it's not the same route. All right. While Rahul and Samay battle out exactly what was wrong with the game and not their gameplay, we're going to go for a small little break, and we'll see you back for the semi-finals. Hello and welcome back to OnePlus Dominate 3.0 with OnePlus 11R 5G. Now we are entering the semi-finals. So far, we were at the quarterfinals. We saw some interesting matches. And now, let's take a look at the brackets to understand what you have in store for you. All right. As you can see, we have Team Payal and Team Kashvi who will be going up against each other. And then we have Team Ehsas and Team Samay. Then we'll figure out who makes it to the finals. I'm already very excited to see both the teams in front of me. Both the team captains are smiling bright. So let's start with Team Payal. Can I have you guys on stage? Come on, Team Payal. Yes. As I can see you're the one smiling the most. Gamers don't smile. Correct. Do you smile usually? Is it a professional hazard for gamers to smile? It is. Understood. What about you? How did you feel
the game was last time? पिछले बार जब आप टीम के साथ खेल रहे थे, what are the advantages now that second time you're playing? देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें. पहले वाला तो अच्छा था. तुक्का था क्या? नहीं तुक्का तो नहीं था. ये तो सब बोलेंगे. टीम कैप्टन आपके पास मैं आ ही रहा हूँ, एक बार रुकिए. Okay, team captain's last strategy तो आपको मालूम था ना? She was leading from front also. इस बार would you advise her to do the same? हाँ same. Okay, team captain. Final question. आपसे आपकी strategy नहीं पूछूंगा because that's very evident now. You are going up against another gamer. Yeah. Any last time you went against a gamer here, आपने तो काफी trash talk कर दिया था. This time, what would your communication be to your opponent? She is my friend, so ऐसे opponent वाला feeling नहीं आ रहा है. वो जीते चाहे मैं जीतूँ, no problem. I'll say good luck to team Kashvi, and अगर team पायल जीते तो अच्छी बात है. Wow, so you're dominating hearts. Yeah. If you think people who are watching this are be online, and if you're like, oh, what a fake answer, please write that down. No, it's not fake. Actually, It's genuine. It's genuine because हम लोग भी साथ में जितने बार भी खेला है ना, mostly same team में ही खेला है, ऐसे compete तो नहीं किया है. पहली बार कर रहे हैं. Yeah, we can say कि ऐसे live पहली बार. पहली बार कर रहे हैं. Okay, you know what? I'm very excited to find the second team captain and what she has to say. Congratulations on winning the quarterfinals. Welcome to the semifinals. Please take your seat. Thank you. And I'm gonna bring on our next team member, who she said is her best friend, or so I would say. Please take your seat. Okay, getting our next team members. Bringing on our next team. Please give it up for Team Kashvi. Please come up on stage. Congratulations on winning your quarterfinals and making it to the semifinals here. Again, gaming rules apply. No smiles by boys. Boys usually don't smile. Is there? It's a consistency. What is your best smile, sir? Best smile? What do you mean? Best smile. NODWIN. Arey, now you're smiling. Sir, आपकी भी smile आ रही है एक बार. आगे चलो आपकी भी. Okay, this is a smirk more than a smile. Captain, congratulations. Thank you, Abhish. You apparently are really good friends with your opponent, and she said your win is my win. What do you think about that? I mean, at the end of the day, we do belong to the same SATUL family. So I would be happy if either of us win, honestly. Yeah, this is very sweet. I feel like the entire semi-finals will be like our last quarter-finals where everyone is behind at the spawn area waiting for someone to play. But all the best. I'm kind of excited to see how this goes. You guys can go and take your seat. I would want the team captain of of Team Payal, none other than Payal, to come up on stage. Payal, आप लोगों की तो दोस्ती है. मैं तो कुछ पूछ ही नहीं रहा. आप बातचीत कर लीजिए 1-2 सेकंड, उसके बाद नहीं, यहाँ से मैं कंटिन्यू भी कर सकती हूँ if you want. Yes, of course. Like final से बचा है तो I think आप थक गए होगे ना, तो I can continue if you want. That is so sweet. आप मुझे इतना बताओगे कि you've played New State over the year. I have a question. In this game, which is your special part? Like, what's the thing that you like? Which weapon do you like? Is there a car that you like? Which game mode do you like? The best thing I like is you can recruit from the opponent. अगर आपने किसी को knock किया है तो आप उसको अपनी टीम में ले सकते हो. अगर एक प्लेयर आपके इसमें नहीं है या 2 प्लेयर नहीं है तो आप रिक्रूट कर सकते हो. दैट इज द बेस्ट पार्ट. तो मैं अपने एनिमी को अपनी टीम में लेके उसे अपने साइड कर लूँगी. Oh, very good. So you are infecting them to convert them into you. Question to you is, for the lot of people who are watching right now and who want to get into New State, how would you get new amateur players to become professional players? I mean, at this point, there's a lot of opportunities in New State, lot of new tournaments, etc. So just grind, give it a go, and you can be the next pioneer of the New State space. That's awesome. So if you guys are watching, take notes. And I'd request the team captains to take your seats. All the best to you guys. All the best, all the best, all the best. I'm going to pass it off to the casters, but before I tell you this, casters brothers, इस बार भी you try to instigate, no? Make the game fun. ऐसा कुछ करने की कि यहाँ पर कुछ भी करना पड़े, अगर हम एंटरटेनमेंट लाना है देन दोनों को भड़का देंगे. थोड़ा थोड़ा तो चलता है, बट नाउ थिंग्स आर लिटिल सीरियस बिकॉज अब हम सेमीफाइनल्स की पाक जमीन पर है. अब बस 3 मैचेस बचे हैं, 2 सेमीफाइनल्स, 1 ग्रैंड फाइनल्स. क्या होगा फिक्सेस? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. You know, it's funny actually. They're 2 sisters from the same family, and I've never seen 2 sisters getting along. I don't know, out on stage, they come out and say that, you know, we'll be friendly, whatever happens. But we've seen 2 distinctive types of play over here, where Payal was quite reactive to how ruthless Regultos could be with his aggression, and she dealt with it with finesse. But, you know, Kashvi
some might say, haters might say she had a much easier run. And that was an easy walk in the park. But things are going to definitely change over here, Krat, because now Payal is definitely going to be one of those formidable opponents that she might regret facing. मेरे पास एक और स्टेटमेंट है फिक्सेस यहाँ पे देने के लिए कि इन दोनों में से जो जीतेगा ना वो टूर्नामेंट में सेकंड आएगा बिकॉज जो दूसरा सेमीफाइनल्स है उसमें से ही कोई यहाँ पर जीतने वाला है फॉर श्योर लिख के ले लो 101% बिकॉज वहाँ पर तो भाई एक जगह एहसास है एक जगह समय है और दोनों के लाइनअप हम दोनों को पता है क्या है तो अगर इन दोनों में से किसी को फाइनल जीतना है देन दे हैव टू बी ऑन ए गेम हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए कोई फालतू का ओवर कमिटमेंट नहीं होना चाहिए आपका एम हो गया आपका कॉम्स हो गया हर डिपार्टमेंट पे इन दोनों टीम्स को अच्छा खेलना पड़ेगा Undoubtedly. And that being said, ladies and gentlemen, I think it's time that we head into the game. And this is Team Pyle going up against Team Kashmi. What's on the line is a seat for the finals. And we'll find out if there is going to be a best of 3. The one who reaches, or rather wins 2 games out of those 3 will become the winner. So if you win the first 2 games, there's no requirement to play the third. And, well, Team Kashmi, they draw first blood. और यहाँ पर what I can see that from Team Pyle एक जो Gen XT प्लेयर नाम के प्लेयर हैं ये बिल्कुल स्पॉन पे हैं ऐसा लग रहा है कि ये क्रिएटर है अपनी गैंग के बट मे बी ये वो एंगल से एक अच्छा खासा बैकस्टैप ब्लॉक करने की कोशिश कर सकते हैं बट सी दैट स्टेबल गेम 1 मिनट गेम खत्म होने में आला है 1 मिनट में मतलब 1 मिनट खत्म होने को आया है बट एक ही फ्रैग यहाँ पे ड्रॉप हुआ है बस वहीं पे हंटर ने पुश इन किया इजी पीसी को पिक ऑफ करा एक और पिक निकालते उससे पहले इंस्टेंटली ट्रेड बैक करा जाने से पहले सर्विस ने भी यहाँ पे पायल को एलिमिनेट कर दिया है काश्मीर के पास एडवांटेज है बट अभी कहानी अभी दिल्ली बहुत दूर है अभी कुछ भी बोलना बहुत ज्यादा गलत रहेगा बट ऋषि ही नीड्स टू चैनल हिज इनर पावर्स सो दैट अब जब टाइम है जवाब देने का वो जवाब दे सके Krat, at this point, I really like what the approach from Team Kashmir is because of the way they're taking those positive trades. Now, again, for the ones who are wondering what positive trades are, this is something that Hunter did, right? He just pushed in, managed to get 2 finishes, and eventually he did succumb. But still, getting that 1 point extra lead is helping his team to maintain that small lead that they have. And this is where the eyes are definitely going to be on Rishi because he was a star against Regaltoss's team. But now he's got to prove his mettle against the big boys. ये बात तो मैं बिल्कुल मानूंगा cause ऋषि ने when Pyle faced Regaltoss का game 1 के बाद he had to take that complete sweep off. Pyle ने दोनों राउंड निकाले and change the entire flow towards her side. बट यहाँ पर ऋषि को स्टेप अप करना पड़ेगा cause काशवी लीडिंग अ टीम वेरी नाइस इन अ सटल बिहेवियर सबने एक अच्छा खासा पॉइंट होल्ड कर रखा है इजी पीसी ने एक और फ्रैग निकाला हंटर को टेक डाउन करा एंड स्कोर लाइन के अंदर अभी भी काशवी के पास एडवांटेज है एंड जेन XC9 ही इज एंकर ही इज एन अ ग्रेट एंकर प्लेयर एक पोजीशन में बैठे हुए हैं और ही इज मेकिंग श्योर कि एक पोजीशन से बैठकर कम से कम 3 से 4 एंगल्स को कांस्टेंट पोक कर सकते हैं this is where it gets more intense, right? Those strategies really coming into play. Players are just not running around like headless chickens, rather being very, very cautious with their approach. And I like what both these teams are doing, right? It's still a close matchup. Now, they've got that one of those anchors, like you said. And what he's basically doing is trying to cut the flanks because we've seen there have been those tendencies out of Team Kashmi's teams where players like Hunter, just try to remain hidden and suddenly sneak up on you and launch that sneak attack. And for which you're not clearly prepared. For now, again, it's just that 1 point lead, but rather has increased as Kashmir takes down Payal. Now the battle is on. अभी ऋषि के अगर स्टार्ट देखेंगे ऋषि के पास अभी भी एक भी फिनिश नहीं है वहीं पे 2 बार ये ऑलरेडी सर्वर से बाहर जा चुके हैं एंड वहीं पे अगर पायल और काशवी की बात करेंगे आई थिंक पायल के पास 4 डेथ्स है KD 0.25 चल रहा है बट वहीं पे देखें नाइस शॉट ऋषि ने सपोर्ट करा एंड यस तनुज को भी यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है अब लग रहा है ना सेमीफाइनल्स है बिकॉज जो हमने क्वार्टर फाइनल्स में से कास्ट करे हैं वो काफी ज्यादा वन साइडेड हो गए थे एक बार के टाइम के बाद बट अब लग रहा है कि सेमीफाइनल्स है दोनों टीम को इस गेम का इंपॉर्टेंस पता है एंड दे हैव बीन प्लेइंग लाइक दैट ओनली बट तनुज ने यहाँ पर एक अच्छा ग्रेनेड पॉप करा ऋषि को उस पोजीशन से बाहर निकाला और जैसे ही वो ऑफ गार्ड सिचुएशन में आए बैंग ऑन पनिशमेंट Yeah, indeed. And at this point, Payal is getting back at her soul sister. And
well, it was revenge. Dish, well served fold. As Samit, look at him against the world. What is he doing, Krat? Because I really could not process what was happening out there. यहाँ पे कोशिश अच्छी कर रहे थे वो उनकी बंदूक यहाँ पे टैप पे हो रखी है और वो लाइक ही वाज ट्राइंग टू होल्ड दो शॉट बट यस अब आपको पता है एक तो टीपीपी ऊपर से आपके पास शॉटगन है आप क्लोज रेंज के अंदर आएंगे आपको एक बुलेट कनेक्ट कराने की जरूरत है और उसके बाद जवाब खुद ही हो जाएगा और वही चीज यहाँ पे होती हुई दिखी वहाँ पे सर्विस को भी पिक ऑफ करा ग्रेनेड से 5 मिनट गेम में ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और हमारा जो स्कोर बोर्ड है वो ये कहता है कि अभी टीम काश के पास 3 फ्रैग्स की एडवांटेज. Oh, now we've got just 5 minutes left on the clock, and you know, when we were thinking that the previous games could be slow, but this has crossed it all, and players are being very vigilant. You know, just not letting their bodies out online, and rather play the patient game, rather just rely on grenades a lot, and make do once your opponent is right out in the open. But for now, you know, just when Team Payal had equalized the numbers, suddenly Team Kashvi strike back. You know, I'm just having this thought in mind कि अगर दोनों में से कोई भी जीतता है, when they are going to face Team एहसास का गेम प्ले पायल और काश्मी से तो कम ही रहने वाला है. So ये जो एडिशन होगा इस टीम का वो एक फायदा जरूर क्रिएट कर सकता है. But when that matchup is gonna happen, you know, Razor, Ballu and Criminal, they need to make sure कि वो उस चीज को compensate कर सके. Because Payal and Kashmir दोनों काफी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं. Now, clearly, SR's team is one of those teams to really watch out for, especially, you know, with those 3 players. And even she, even creator, I love her enthusiasm, right? Every single time she comes into play, she's got that, you know, game face on, and, you know, all the gamers can relate. And for now, you know, the score lines are leveled up, and every single player being really watchful of where they are going, what they want to do, and searching for all these tiny, slim angles, you know, those slight pixels visible, and you are gonna get punished. दो प्लेयर्स काफी देर से अपनी पोजीशन पे बिल्कुल भी हलचल नहीं करते हुए दिख रहे. दैट इज हंटर एंड सर्वित. उन्होंने एक एंगल होल्ड कर रखा है. काशवी ने और काशवी एंड तनुज ऑल दो प्लेइंग लिटिल एग्रेसिव. तनुज को कवर की सख्त जरूरत है. अगर क्लोज रेंज को जाता है देन तनुज को बचाना आसान नहीं रहने वाला. बट इजी पीजी विल बी द वन हु विल बी टेकिंग डाउन तनुज को. तनुज ने यहाँ पे पोजीशन तो स्पॉट कर लिया बट व्हाई सो डेस्परेट. उनको जरूरत है नहीं करने की बिकॉज उनके पास ऑलरेडी एडवांटेज है यहाँ पर और उनके पास एक ही फ्रैग का एडवांटेज है. उनके ये ओवर कमिटमेंट वाले जो मूव्स हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है. काफी ज्यादा ओपन के अंदर रोटेट करने की कोशिश करें बट यहाँ पर इजी पीजी टीपीपी का फुल सपोर्ट देते हुए क्लोज घुसे एंड उन्होंने यहाँ पर दुश्मन को जमीन के अंदर 10 फुट नीचे गाड़ के दिखाया. बट पायल काफी कम एचपी के अंदर रोटेट करने की कोशिश करे. एडीएस खोला है शॉट्स यहाँ पर मिस करते हुए बट पायल वाज डैम प्रिसाइज. ही गॉट तनुज डाउन एंड हंटर वहीं पर ऋषि को मारकर इंस्टेंटली ट्रेड बैक कर देंगे. Yeah, I mean, this is exactly what you would need from your IGL, you know, leading the team from the front, setting an example. Now, suddenly the morals of the players have risen, but not quite clear or you know, evident in terms of how the points are right now. It's still you know, Kashvi's game. She's doing impeccably well, and well, who said, you know, they're gonna take a walk in the park, right? Just when Abish was having a talk with them, like, we're friends, we're sisters, we'll not fight, and suddenly so much of that seriousness being evident, visible, and Kashvi, she's just staying hidden at this moment, and waiting for an opportunity to strike. I believe that's gonna come anytime soon. You know, they are dedicated players जो अपने ही जोन के अंदर बैठे हुए हैं बट तनुज की तरफ से ओवर कमिटमेंट आई और वहां पर काशवी ने भी फायदा उठाया. पायल को पिक ऑफ करा बट काशवी भी ट्रेड बैक हो गई. स्कोर बिल्कुल लेवल हो चुका है यहाँ पे 19-19 2 मिनट्स ऑन द क्लॉक. इसका मतलब 120 सेकंड 10 सेकंड और कम हो चुके हैं. 110 सेकंड के बाद हमें पता चलने वाला है कि पहला सेमीफाइनलिस्ट पहला ग्रैंड फाइनलिस्ट यहाँ पर कौन होने वाला है. बिकॉज अब हमारे पास OnePlus डोमिनेट 3.0 के 3 मैचेस बचे. पहला मैच ऑलरेडी लाइव है एंड तनुज, dude, you need to wake up because हर बार you are moving ahead your team area. आप हर बार कुछ भी करे बिना मर के आ रहे हो. Look at him, look at him. He's made that aggressive maneuver yet again, just inside that central boxy area. Now, one good grenade and he's pretty much done. He really needs to understand that. Or maybe, you know, they're trying to sell a fake over here. Or maybe they're just using him as a peg to the slaughter, because at this point, you know, Krat, from what I can perceive is, he just wants to open up,
he wants to become the punching bag where his teammates might just go in, and Tanuj, oh, he just revealed himself. I'm pretty much sure he's doomed. You know, easy peasy. अगर वहाँ पे spot नहीं कर देना, then Tanuj can cause, could have caused lot of no problem. But Gen Z काफी कम HP के अंदर है यहाँ पर TP पे लेने की कोशिश. But the choice of target was bad. अगर वो Genex को pick off कर देना peek करके भी, तो चीजें बदल जाती. But he was focused on easy peasy. उनको पता अगर easy peasy को भी मार देते, Genex free में आते हैं यहाँ पर. And वो एक कहते हैं ना, लालच बुरी बला है. उसका prime example हमें यहाँ पे देखने को मिला. Kobe must be proud of this one. You know, एक तीर से दो शिकार करना कोई इनसे सीखे रहा है. क्योंकि हर बार वहीं पे जाके होल्ड कर रहे हैं. ये जो छोटा सा फोर्ट है ना हाई ग्राउंड वाला, यहीं पर सब टीम्स अपना गेम प्ले एग्जीक्यूट कर रहे हैं. फाइनल 60 सेकंड्स 23 पे यहाँ पर स्कोर लेवल हो चुका है. एक पिक ऑफ लेने के बाद भी दे कैन स्टिल गो फॉर द पैसिव अप्रोच, बट उन्होंने सर्विस से निकाली है शॉटगन. सामने वाले को घुसने की जरूरत नहीं है. बट ओके देन यहाँ पर एक नया अपडेट देखने को मिला. बट नो लास्ट मोमेंट इट वाज काशवी गॉट दैट एडवांटेज, बट it was hell of a close match. It went down to the wire, and this is exactly the kind of intensity that we wanted for our first semi-final game, and indeed we got to see that and witness that happening live in action. And bear in mind that it's still not over. Payal, she's got revenge in her eyes. She's gonna make a comeback, but Kashvi, she's pretty chill right now. She knows that she's got the job half done, but the other half still remains. Yes, it is the fact that if Payal gets a sweet revenge on Kashvi, and that is exactly what the fans want, because, well, to be honest, of course they belong from the same family, of course they're sisters, but when it comes down to the battlegrounds, nobody is gonna back off, and well, Kashvi seems relentless, right? She just wants to get done with it. Really good start for her, 2-0 up ahead. No doubt, यहाँ पे 3-0 का स्कोर already इनके पास है, and it looks quite familiar कि भाई इस बार जो approach है काफी ज़्यादा आसान रहने वाली है. No left, no right, बस instant push and secure some free flags. मतलब स्टार्टिंग के अंदर विदाउट ड्रॉपिंग अ सिंगल प्लेयर उन्होंने 3-0 की एडवांटेज बनाई है. उसके बाद इवन तो ड्रॉप वन प्लेयर, फिर दो प्लेयर की एडवांटेज बनाई. अगर आप कैपिटलाइज भी करेंगे ना, इक्वल ट्रेडिंग करेंगे, एडवांटेज आ चुकी है. Now this is where you know, Kashvi is in mood for some stomping over here. The way she's been playing, this grenade can actually ricochet and do a lot of damage, at least flushing her out of play. Well, I mean, quite unintentional, but great value. You know, उन्होंने ये बिल्कुल इंटेंशनल लगा सकते हो आप, और उसके बाद क्या ग्रेनेड का आपको जोन ऑफ करने के लिए काम आते हैं. उन्होंने वही करा. उन्होंने पायल को भी सेफ पोजीशन से बाहर निकाला, एंड ही लिटरली यू नो वेलकम्ड हर विद ओपन गन्स. और उसके बाद क्या था, पायल ड्रॉप मोर फ्रैग्स, एडवांटेज स्टिल ऑन द काशवी साइड. Definitely, and at this point, you know, Krat, this is a different version of Kashvi that we're getting to see in play. Now, she's not one of those players or the leaders who kind of sits back and, you know, just chills and watches her team participate, right? She's doing everything needed over here to go on and win this thing. So, now look at Payal. She's playing with fire. The way she's gotten inside that central compound, I'm pretty sure Sarbit would want to punish, but no. Payal comes out on top. That's a proof. Like, she's a regular streamer, और वो रोज इतनी प्रैक्टिस करते हैं, अपना गेम खेलते हैं. कंसिस्टेंसी तो यहाँ पे बनी जाती है. ऋषि एंड जेनेक्स होल्डिंग अ नाइस पोजीशन, एंड उन्होंने यहाँ पे जो एडवांटेज क्रिएट करी गई थी काशवी की तरफ से, उसको अब थोड़ा सा अपने फेवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं. बट ऑल्दो अभी भी टीम काशवी इज लीडिंग विद 4 फ्रैग्स. और अब ऋषि ने, अगर ऋषि स्पॉट नहीं हुए, ही कैन ब्रिंग हेल ऑन टीम काशवी. बट अगर स्पॉट हो गए then प्रॉब्लम हो सकती है. बट काशवी ट्राइड हर बेस्ट टू रिटेलिएट, और उन्होंने स्पॉट भी करा, ऋषि को डैमेज भी दिया, पर ऋषि वाज नो मोर प्रिसाइज, और उसके बलबूते पे उन्होंने निकाला. बट यहाँ पर हंटर वेरी वेरी बैड पोजिशनिंग यहाँ पर, और ये देखिए जितने भी प्लेयर फोर्ट पे बैठे थे सबको ढेर सारा डैमेज. बट ही गॉट लिटिल ग्रीडी एंड ही वेंट डाउन. ऋषि का फ्रैग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था. अगर ऋषि टिकते ना थोड़ी देर और, वो चीजें बदल सकते थे. You know, had he used some grenades or anything to really flush out the players, that could have paid off. But, you know, like you said, you know, greed consumed him. And, well, that could be really fatal for Team Payal at this point. Because for Team Payal to win, Rishi, he needs to step up. He needs to show his A game, exactly what he did against Wriggletos.
But now, as things stand, you know, this has been a little bit more on the face of it, right? We've seen players going in. Look at Rishi, but instantly slapped on the face by Sarvit, who's got good control of that central area. You know, this is a problem with TPP. अगर आपके पास information नहीं है और आप literally इसको एक पार्क की तरह घूमने जा रहे हो, then you can land anywhere in a landmine. और वही हुआ, सर्विस ने पोजीशन होल्ड कर रखी थी, हाथ में शॉट करती और वही हुआ, स्वागत करा सीधा और इन्होंने मिड एरिया को पूरा अपने नाम पे कर लिया है. ऑलरेडी इनका KD डबल चल रहा है. रिलोड करेंगे, फिर रिपोजिशन करेंगे एंड दिस टाइम ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा एरिया का कंट्रोल इस वक्त टीम काशवी के पास है. स्कोरबोर्ड की बात करेंगे तो 14-26 फ्रैग का फर्क है यहाँ पर ऋषि ने थोड़ा सा डिस्टेंस क्लोज आउट करा, बट तनुज भी वहां पर जेनेक्स को पिक ऑफ करके उस एडवांटेज को अपने फेवर में फिर से ले आए. You know, mad props to Sarvit for what he's really doing, right? Especially it takes a lot of cojones just to try and execute something like that at this stage. Especially when you know one bad mistake and Team Pile might get control. Now look at how limited the how limited the players of Team Pile are at this point. You know, they cannot move around a lot. They're just waiting for those opportunistic moments to capitalize on the situation. And every single time they step away or rather step out to take a shot, somebody from the backlines who's providing cover. Oh, that's a good one from Kashvi. And now it looks like she wants to end it. I think we got the winner. We got the first finalist for the OnePlus Dominate 3.0 powered by OnePlus11R 5G. Do you know Fixes is phone के अंदर 360 Hz का sampling touch rate है? Of course I do. Normal phones में कुछ भी नहीं होता उसके मुकाबले. I mean, being a gamer, I think I did have to test my hands on it, and I'm intending to get one for myself. And if you do also want to do that, you know, everything is down there in the description. We've got all our links, but it has boiled down to this. Ladies and gentlemen, final 3 limbs for Team Kashvi, and she is our first grand finalist. No doubt, I don't think anything in this world can stop her to be the first finalist of this game. And अब होगा असली matchup. Because अब Kashvi is a very good player. जो अगला matchup है, अब वो बताएगा कि क्या होगी चीज़ें. But yes, you know, good semi-finals. Pile fought like a warrior queen, but in the end it was the Princess Kashvi who got the match turn. 2-0 से उन्होंने यहाँ पे shut down करा Pile को. I was not expecting that. I was hoping for a third matchup. But हमारे जो लीग ऑफ से उन्होंने भी बड़े रूल अलग से बना रखे थे फिक्सेस. अगर पहला मैच टाई हो जाता, then दोनों टीम को 1-1 पॉइंट मिल जाते. Yeah, and that could have, you know, been a little bit more spicy, but we intended to keep it a little mild. But, you know, things had definitely gotten heated back up there. Let's ask Abish, what's up with the two pretty ladies? I can tell you what's up. What's up right now is a lot of friendship, and lots of the other team played really well. We tried our level best, but, you know, I think the team was really good. I'm expecting that's what's going to happen. But I'm going to check in with none other than Team Kashvi first. Team Kashvi, to the entire team, the first round, the second round, all of them were really, really tight. And this was like, it was slow, but it was very intense, like the very good semi-finals match. Is that something you intended, or you just copied exactly what the other team was playing? No, as in it took us a bit to read what exactly they were doing. They were sort of holding and playing, which is what pushed us to do the same. Once we started holding, and my strategy personally was to stay at the back and then try to not get killed. I had a lot to learn from Samay and Rahul's game. So, so that's the strategy I took. I didn't want to have a negative KD because that would throw the pros back. Yeah. So I try to keep a positive KD, which is what happened in the last game at least. Yeah. And yeah, it went pretty smooth. It was a tough fight. Anything for the winning team? Good luck for the next match, and I hope you will win it, Kashvi. Thank you. Of course. This is what I call like absolute love. Also, I hope you guys had a good time playing on the OnePlus11R 5G. This is the shape of power. This is 6.7-inch or super fluid display with ADFR 2.0. I found out that it has like an adjustable, it goes from 50 to 120 Hertz. Yeah. And that comes in, maybe they utilize the screen a little better than the losing team. No. I know about the Hyperboost gaming engine, and I totally used it, but it was team pressure. That's it. It wasn't. We did our best. It was. It was the team pressure. All right, I'm gonna be throwing it off to a break. After we come back, we will see our second semi-finals.
Welcome back from the break and welcome back to OnePlus 11R 5G presents Dominate 3.0. This is our last semi-final. And the two teams that are going to be coming up, you already saw them play. Very interesting narrative and strategies that they use. I'm going to start off with our first team and their captain. Please give it up for the game face, Team Ehsaas. Hello. Hello. For a second, I stopped before saying Team Ehsaas because I was like, itna hype maine kar diya hai. But I was like, I don't know how to bring it up. Team Ehsaas, your wonderful team is again here. You guys did such a great round in the quarters. And now that you're in the semi-finals, एक बार आप इनके साथ खेल चुके हैं. Do you know what you're going to do differently this time? This time I'm just gonna stay back and let them do their thing. Yeah, because I feel like they should like take the lead first and then I should step in and pani pheru. अच्छा, okay. Like you thought you'll go at the end and तब जाके साफ कर देंगे. हाँ, नहीं, पानी फेरूंगी. पानी फेर के जाएगी. हाँ, खराब करूंगी game. अरे सही है. It's a holy themed party for you. Okay, I have a quick question for our team members here. Of course, you guys play together or as a team. You're part of Godlike. My question to you is, having a new team member into the team, does that actually throw you off? कि आपको पता है, like a president, you just need to protect. ना ऐसा तो कुछ भी नहीं है. पिछले मैच में हमने इन्हें बोल रखा था आराम से खेल लो, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा. तो अब की बार भी ऐसा बर्डन वाली तो कोई चीज़ नहीं है कि न्यू टीममेट है या ऐसा कुछ. टीम काफ़ी है और ये भी अच्छा ही खेल रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं. Very nice. Very supporting daddy answer. It's like you give a very daddy vibe. Okay, coming to you now. It's a compliment. Okay, real question. You guys had all together decided to take Tommy in the last game that you were playing. Is that going to continue? Is this the Tommy clan? कि और कोई weapons भी उठाने का plan है? That's an advantage weapon, you know. It's a great weapon for a close range. It's a good weapon for a close range. It's a good weapon for a close range. It's really overpowered in this case. Okay, good. Ehsaas, so you know what weapon you need to take, right? Yeah. On the count of 3, 2, 1. Tommy. All right. Give it up for Team Tommy. Please take your seat. Okay. Now, who is our fourth semi-finalist? We have none other than Team Samay. Can I have you guys on stage, please? Oh, yes. Hello, sir. तो घर जाना था पहले. अरे, this time the gamers are coming on stage with a smile. I think we made a deep impact in our previous conversation. Congratulations. Also very sad for you that you can't go home and now you're playing semi-finals. What is your strategy to lose badly so that you can go home? Bro, like I want to lose, so I go home, but I don't want to keep dying. क्योंकि यार ये लोग फुल सपने देख के आए हैं यहाँ तक. तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार भी नहीं मरूँ, लेकिन हम फिर भी हार जाएं. हाँ. तो फिर मेरे को ये वाला ना हो कि भाई मेरी वजह से हार गए. तो मेरे को ना गिल्ट के बिना कर जाऊँ. करेक्ट. मुझे लग रहा है कभी-कभी अगर समय को अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए ना, he literally be like, तू E3, A2, B2, वहाँ से जाके मार. If chess was like this, I think you would be killing it. Yeah, bro, but yeah. Great answer. Okay, Samay, last time when he had played with you guys, वो पीछे खड़े हुए थे because Rahul Subramaniam was also playing in the same strategy. Of course, and last time casters ने भी थोड़ा pick किया तो फिर Samay was like बाहर निकल के आऊँ क्या है? इस बार Ehsaas team plays very differently. Are you going to adapt it differently or tell Samay to still stay at the back and start fragging, which is pretty good at? पहले तो पूरी कोशिश रहेगी कि लीड ले लें. लीड लेने के बाद हम इनको खुला छोड़ देंगे, जो करना है करो. और अगर लीड नहीं हुई तो? करेंगे फिर. अरे. All right. Players, one final question to you. Can you just say one word that would just like a word against the team? Don't camp. Don't camp. ठीक है भाई. ठीक है, समझ आएगा सब लोगों को. All right, you guys can take your seat. All the best. Start prepping up. Set yourself on the OnePlus11R 5G. Samay, as the team captain, I'm gonna bring on the team captain of Team Ehsaas. Surprisingly, her name being Ehsaas as well. Ehsaas, Samay, Ehsaas. Hi, Ehsaas. मरना मत. मैं हाँ ठीक है. छुपे रहना भाई. Okay. मेरे को घर जाना है. Yeah, I think if that happens, it truly means your team is playing for Samay. Please take your seat. ये हो गया तो फिर it'll be amazing. I'm gonna pass it back to our casters who right now are going like, oh my God, if this happens, it's the best thing to have happened. Back to you guys. You know, thank goodness they've chosen content creation as their field of work, because as an esports athlete, well, that seemed really
KD खुले आम यहाँ पे फिक्सिंग चल रहा है क्राइट क्या चल रहा है यू नो समय ने बोला कि उन्हें घर जाना है बट गिल्ट फ्री जाना है मुझे समझ ही नहीं आया हुआ क्या मतलब इवन एहसास गॉट कंफ्यूज ऑफ अस कि तू चाहता है क्या बताना यार तुझे घर जाना है नहीं जाना तुझे घर जाना है तो आके मर और थ्रो करके खत्म कर बट कह रहे उनको फिर गिल्ट हो जाएगा मतलब ये एक धर्म संकट में फंसा के गए हम सबको बट अब इसका जो समाधान है वो तभी पता चलेगा जब दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी एंड हमें एक टीम ऊपर बढ़ते हुए दिखेगी I think in this particular matchup, Same's endeavors would be into searching crafty ways to survive and yet ensure that his team loses. Now, how do you do that? Because, I mean, for my 4 years and plus of commentating, you know, this game and games related to similar, you know, backgrounds, I do not have any answers. But if you do have, let us know in the chat section because this is really bizarre. You know, I do not know at this point what is he gonna do because he's been saying that you know I'm gonna camp, but he's gonna look towards more craftier ways of camping. And what could be the definition of crafty now? You know, कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे इन्होंने पहले कैंपिंग ढूंढा फिर ग्रेनेड ढूंढा फिर फावड़ा ढूंढा सो इस बार कुछ अलग लेकर आएंगे रैप लिखेंगे हाँ कुछ कर सकते हैं ही कैन डू इट He's मतलब getting there. दीवारों पे गोलियों से स्प्रे मार के नाम लिख देंगे सोनम कुछ तो करेंगे ऐसा जिससे मतलब ये जाने जाएंगे सदियों तक बट हाँ इन्होंने जैसा इवन अभीश ने भी बोला है कि जो कास्टर का भड़काऊ कास्टिंग होती है जिसकी वजह से लोग इंस्टिगेट होते हैं हाँ पूरी कोशिश रहेगी जी कि और लोग ज़्यादा भिड़े करें, हाँ और मजा आए देखने में But you know, now let's address the elephants in the room. Correct? Yeah. That is Team SS, and with Team SS comes that team because you've got Team Godlike. You know, 3 members of them playing. And well, the previous matchup was pretty one-sided. SS did not have to really take it down to the wire, but this might be interesting. You know, what are your predictions? Is it still going to be 2-0, or do you think it can go till the end? तो टोटली सेमीफाइनल्स है तो दोनों टीम के अंदर वो एक दमखम जरूर होगा मैचअप काफी ज्यादा मजेदार होगा बट अब ऐसा भी नहीं बोल सकते ना भाई मान लिया कि एक तरफ पे क्रिमिनल रेजर एंड बल्लू है तो दूसरी तरफ पे रेक्सी है भाई एटर्निटी है और ये सारे प्लेयर्स मतलब दे बिलोंग टू द टियर 1 इन द कम्युनिटी इन आवर नेशन दे आर द बेस्ट वी हैव इन आवर नेशन सो और समय और एहसास की बात करें दोनों बराबर है गेम में बिल्कुल नील बटा सन्नाटा So the battle is between those 6 3v3 का बैटल होगा but let's see कि क्या ये कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं but yes गेम स्टार्ट हो चुका है रेजर का एक पुश but बल्लू का नाइस कवर रेक्सी ऑलरेडी एंटिसिपेटेड कि वो आ रहा है रेजर आ रहा है but रेजर को वो पनिश करते उससे पहले यहाँ पर खुद ही पनिश हो गए और शुरुआत हो चुकी है एहसास से ले लिया एडवांटेज मैंने बोला था ना कि अब रेक्सी ने रेजर को फाइनली पकड़ा बट बल्लू फिर से अपनी टीम के लिए स्टेप अप करते हुए सेंटर सेक्शन का कंट्रोल रेक्सी ने ले रखा है जिसके पास सेंटर है वो गेम जीतेगा कितनी देर होल्ड करेंगे अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा टीम यू नो एहसास Well, you know, as things stand, right, it's quite interesting the formation, right? They haven't set anybody out on the left flank for teams Samay. They really need to watch out for Razor because, like anticipated, he's gonna punish them. And this is where, you know, Team SS still just keep on piling up on their lead. It's just a 2-pointer right now. And if Team Samay do not watch out, could possibly increase. And this is where, you know, I'm kind of, you know, baffled by, oh, Samay does it. Oh, he close. Samay, look, come beside you. And he's getting shot at. Samay, take those freaking shots. He's right beside you. Could just hit him with a shovel. Oh. रेजर Oh, he does it. He does it. It's 1-on-1. भाई बुला लो आ जाओ बैंड बाजा वाले सारे आ जाएंगे बिकॉज रेजर को यहाँ पे पिक ऑफ करा समय ने एंड रेजर टुक लिटरली 10 seconds there he was reloading he was having all the time but he didn't spot that master play behind him रेजर को जब ये डेमो दिखाया जाएगा ना वापस रेजर लिटरली अपने आप को ही बहुत सोच बोलेगी कि मैं क्या कर रहा था मैं ऐसे कौन से जोश में था कि इतना होश खो गया मैं यू नो समय के बिल्कुल ओए दिस टाइम अगेन रेजर दिस इज समय 2 रेजर 0 ये चीज ये संसार नहीं सह सकता Samay is starting to feel himself right now. He's like, bring it on. And Team SS suddenly, you know, they're starting to contemplate. ये क्या हो रहा है भाई हमारे साथ? Razor was the first one to take down
the first enemy in the game. उसके बाद 2 बार मर चुके हैं वो समय से. And yet again he is back on his mission to take down all the players from the opponents. But समय क्या इनको इस बार कोई black security commando मिलने वाले हैं? But Razer ने अपनी जगह बना ली है. सब सॉल्व करते करते Eternity and Arism के आसपास पहुंच चुके हैं. Hip fire लेके फायदा हो सकता है. But बल्लू, he is playing the key role. He is playing the backbone of the game. He is holding that angle जिससे कि वो अच्छा खासा cover यहाँ पर सबको दे सकते हैं. But यहाँ पे play देखिए, काफी खूबसूरती से कितने यहाँ पे player को knock किया. But he was not aware about the eternity position. That shotgun play on the Razer and Razer got eliminated. ये मैच ऑलरेडी पैसा वसूल हो चुका है. I mean, समय अगर इतने बड़े कॉम्पिटिटिव प्लेयर के छक्के छुड़ा ले 2 बारी और बल्लू देखिए तिनके के सहारे is still alive. And What? still manages to come through a little bit of Let's support. cover fire, let's cover fire, let's cover fire. And that really... That's team game. Yeah, of course. Fixes. I mean, these players have been playing together since quite a long time, almost over a year now. So that's quite expected. And obviously just seeing bombardment happening left, right and center. But as things stand, you know, there was a point where Team Samay did have the lead. But now SRs, they're catching up. Oh my God, you know, shotgun and close range. ये दो चीजें जब मिल जाती है सामने वाले के पास ऑप्शन क्या, मतलब सोचने का टाइम भी नहीं मिलता है यहाँ पे. Because Criminal was the first one who spotted that person. But ये देखिए, एहसास को spot करा. Finally, he dropped down. और बल्लू वहीं पर एक्सी को भी पिक ऑफ करेंगे. But Artisim is a moving death. चलते चलते अपनी शॉटगन का प्रदर्शन करते हुए दिखा रहे हैं. एंड अभी भी स्कोर किसी के फेवर में कंप्लीटली एज नहीं करा हुआ. एहसास के पास एडवांटेज है बट मात्र एक फ्रैग की. बट ये ग्रेनेड, क्या ग्रेनेड कुछ ला कर देगा? बट रेजर ने यहाँ पर एक्सी को पिक ऑफ किया. बट जाने से पहले रेक्सी का दैट गोल्डन ग्रेनेड, नहीं बल्लूज ग्रेनेड जो एक तरीके से बराबरी करी है. बट अभी भी एहसास की टीम लीडर बोर्ड में टॉप पर चल रही है. Oh, but this is really close, huh? And it's getting exciting because, you know, both the creators are doing quite opposite of what they said during the interview. And, you know, SR, she was supposed to camp. She's coming out. She's trying to take the fight to the heart of the opponents. And Samay is doing some pretty interesting things, I must say. I want to see Samay's stats. क्योंकि क्या है? But Razer, ये क्या बल्ला मार कुछ ना कुछ तो करना ही था. यहाँ पे गुस्सा है रेजर के अंदर अभी. जो हाथ में आ रहा है वो सामने वाले के भरना चाहते हैं. बट अगर आरिसम ने पिक ऑफ करा, इटर्निटी भी वहीं पर है. इट्स बेटर कि अगर इस वक्त पे समय की टीम को अटैक करना है देन रेक्सी वाली साइड से जा सकते हैं. बिकॉज इफ दे मैनेज टू गेट रेक्सी देन वो समय को भी मार सकते हैं. बट एहसास फिर से ओपन जोन के अंदर आई एंड शी गॉट पनिश्ड. बट रेजर यूटिलाइज दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड ही कन्वर्टेड दैट एडवांटेज इनटू हिज फेवर. रेक्सी भी वहां पर रिटेलिएट करेंगे. इटर्निटी को पिक ऑफ करा क्रिमिनल ने. भाई बेरिल से इतनी लॉन्ग रेंज के अंदर दैट प्रिसीजन continuously headshot connect करे and secured that advantage. You know, SR, she's figured out she can also prone inside the game, and she's doing exactly the same. But you know, this match is really grippy at this point because a lot of pundits have already claimed the one who's going to win this one is going to head on and win the grand final as well. Now that is the sort of caliber of both the teams. Slowly but surely, they're starting to build up that lead, or maybe they were, because now Team Summit is right back at it. ये देखिए, Razer made a nice move on Eternity, but timely cooked grenade from Rexy. इंस्टेंटली ट्रेड करेंगे. और अब देखिए टाइमर यहाँ पर बचा है बहुत कम. बट आरएसएम को यहाँ पे पिक ऑफ करा. क्रिमिनल का काफी वेल कुक नेट था ये. और इट्स वेरी यू नो कन्वीनियंट विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट. अगर आप सामने वाले को टेक डाउन कर लेंगे देन इट्स अ विन विन सिचुएशन. रेजर यहाँ पर गुलाटियां मारते हुए डिस्टेंस क्लोज आउट कर रहे हैं. और ग्रेनेड क्या रेजर को गेम से बाहर निकाल सकता है. डैमेज काफी ज्यादा दिया बट रेजर हील करके फिर से वापस आएंगे. क्रिमिनल की बेरल यहाँ पर अंगारे बरसा रही है. और उस फोर्ट को अभी तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है. एटर्निटी एंड रेक्सी होल्डिंग डाउन दोज एंगल्स एंड नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि अभी एग्रेशन या अभी कुछ भी ऐसा नहीं करना जो कि फेमिलियर नहीं है. अभी होल्ड करना है. लेट देम मेक मिस्टेक. बट एहसास को गलती करने की जरूरत ही नहीं है. वो आराम से अगर होल्ड भी करेंगे वो आराम से जीत जाएंगे. यहाँ पर डेस्परेट मूव्स करने की जरूरत है समय की टीम को. और वो होल्ड कर रहे हैं. दे आर डूइंग टोटली ऑपोजिट. और उनको खेलना है एग्रेसिव. You know, I really like what Like is doing over here. They're just protecting SS and they're like, you know what, you just need to chill because beautiful. We got this boss lady, and they are doing it for her. And it is already 26-20, and now it seems like Team Samay want to make a comeback, but looks really far-fetched because Team SS just need 3 more finishes to complete this game. You know,
बट 2 मिनट के अंदर आई डोंट थिंक एनीथिंग गोना चेंज बिकॉज एडवांटेज के अंदर एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज यहाँ पे टीम एहसास के पास है अनटिललेस एहसास टीम गोन बिजार एंड वो दुनिया भर की मिस्टेक्स करेंगे तभी जाके कुछ होगा बट यहाँ पे सभी को स्पॉट कर लिया गया है उठने की कोशिश बट एटर्निटी रेजर को पिक ऑफ करा है और यहाँ पे हक्के बक्के हो गए समय उन्होंने खतरा को अपनी तरफ आते हुए देखा बट क्रिमिनल स्पॉटेड हिम एंड सिक्योर्ड दैट फ्री फिनिश 29-26 अभी भी गेम से बाहर है बट यस फाइनल फ्रैग कमिंग फॉर टीम एहसास और सेमीफाइनल्स का पहला बेस्ट ऑफ 3 का पहला मैच टीम एहसास अपने फेवर में करते हुए You know, finally the players are also rejoicing because they're one step closer to make it to the grand finals head on because she's watching this match really closely. But you know, I really love this game especially because of the very reason that all our creators, you know, just turned on or back their words, right? Samay was like, "मैं तो camp कर रहा हूँ." Eventually managed to get those 2 frags, but it was rather surprising. It was, I mean, Samay hiding, but at the same time, Razor, you know, not checking those angles. Maybe next time, Brad, he's pretty much going to be careful. No, next time he will ask OnePlus to host chess. You know, seems like OnePlus do have a new idea for the next event, and I'm really excited for that. But now coming back to things at hand. Now, of course, well, Team SS, they've got a 1-up lead, and Samay intends to go back home really quick. But is it going to be quick enough? Because, you know, their players, in fact, Samay's teammates, they've been trying really hard. Krat. Samay wanted to go home, and एहसास is trying her best कि वो समय की जो ख्वाहिश है इसको पूरी कर सके और इसके बाद देखना ये कि अगर समय हारते हैं then खुश होंगे क्या होंगे because टीम तो उदास होने वाली है although he will be enjoying some, you know, early home moments but मैच यहाँ पर किसी भी टाइम चालू होते हुए but यहाँ पे गेम स्टार्ट हो चुका है रेक्सी आरसिम एटर्निटी एंड समय लाइनअप इज ऑल सेट एंड दे आर ऑल सेट टू प्ले पैसिव रेजर फिर से मैप का आधा सर्कल ऑलरेडी क्रॉस करके आगे बढ़ चुके हैं एंड उनको पता है कि अभी कुछ भी ऐसा करने की जरूरत है जो रिक्वायर्ड है बट समय दे स्टार्टेड द फ्रैग फेस्ट उनको पहला फ्रैग मिल चुका है दे गॉट द फर्स्ट ब्लड You know, at this point, they've come with vengeance, right? And at this point, somewhere down the line, godlike, in fact, Team SS, we just call them godlike, 3 of their players, Eternity, look at that. And he's been punishing Razor. Razor hasn't been showing his razor sharp reflexes, but Eternity and Arishem certainly are. Now, this is how exactly Team Samay need to play if they intend on winning this game. You know, अब चाहिए criminal गेम प्ले बिकॉज क्रिमिनल अभी तक चुप बैठे हैं एंड ही इज प्लेइंग अ पैसिव की रोल थोड़ा तो यहाँ पर फ्रैगिंग के अंदर उनको स्टेप अप करना ही पड़ेगा बिकॉज रेजर ने ट्राई कर लिया बल्लू ने ट्राई कर लिया एंड बोथ गॉट नथिंग और वहीं पे एटर्निटी इसी एंगल पे होल्ड कर सबको पनिश करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा ओवर कमिटमेंट होगी रेजर की तरफ से बट एटर्निटी टॉमी गन वॉज प्रिसाइज हेडशॉट कनेक्ट करेंगे एंड रेजर को मार के रहेंगे अब नोटिस करिए अभी किसी के पास भी एडवांटेज नहीं थे बट एडवांटेज ऑटोमेटिकली टीम एहसास समय को जाकर दी है हाथों में सर्व करके सिल्वर प्लेटर में दी है and they should be careful but वहीं पर गॉड चारिसम रेजर को पिक ऑफ करा क्रिमिनल को गेम से बाहर निकाला and this time team समय they are on a mission. Oh, they certainly are. And just when we were wondering that this could just end 2-0 and we head on to the grand finals, Team Samay just steps up out of nowhere. And finally you can see Samay having his game face on and channeling or rather manifesting it from SS over here. And at this point, you know, Team SS, I really cannot understand what they're doing. Because Ballu over here, he's just getting too over eager. As if he just wants to go for a frag or something. But, you know, that puts his body at risk. Exactly like what just happened. And Arishem is going to make sure he pays. I don't say कि मिड का एरिया ज़रूरी नहीं है ज़रूरी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बट पहले इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट कर ली जाए उसके बाद अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़े तो बात होगी बट यहाँ पे एटर्निटी को स्पॉट कर अगर रेजर थोड़ा सब्र दिखाते तो शायद फर्क पड़ जाता बट उनको दूसरी डायरेक्शन से बुलेट पड़ते हुए सभी ने यहाँ पर उनको कवर फायर दिया यू नो ये कुछ छोटे छोटे इनपुट्स हैं जिसके वजह से ये जो रैंडम मूवमेंट्स हो रहे हैं टीम एहसास की तरफ से बदल रही है गॉड रेजर again going down अब जो स्कोर लाइन है that is 4-10 if team एहसास goes out of the tournament then it is going to be the biggest upset till now and well can't blame it the players are sort of infamous for that as well you know just when it matters kind of tend to crumble so you know that could just backfire
But for Team SAS now, this is not looking good. And for a moment, you know, Same, he's in real control of this game. Now, once he's you're seeing Same putting in efforts, you're seeing Same trying to do something, makes you question, you know, is he getting a new favorite game soon? Is there a third wheel in his love story with chess? But no doubt, he's enjoying his every moment. Yep. But Samay यहाँ पे shot लेने की कोशिश. But the moment he felt that somebody shooting me, he just went back into the passive zone. But धीरे-धीरे करके मुझे बस एक ही चीज दिख रही है स्कोरबोर्ड पे यहाँ पर टीम समय is climbing those Everest. And अगर ऐसे ही चलता रहा fixes, then बहुत जल्दी वो एक ऐसी लीड ले लेंगे जिसको बराबरी करना यहाँ पर टीम एहसास लिए impossible होने वाला है. Indeed, and you know, at this point, Ehsas, I guess Same's got his plans chalked out, right? At least his teammates. They've got a sizable amount of lead. All they need to do is not die for the next 5 minutes. And if you're getting kills like this, because now Team Ehsas, they're getting impatient. And due to which, Same is getting kills. And he's again on the board. And Apish has a lot of questions in mind at this point because Same, we never thought that he'd fire bullets, but indeed he is doing so. You know, Same ने एक अच्छा angle hold कर रखा है. That's a very beautiful of team Same, how to utilize Same in a very productive manner. उन्होंने Same को एक TP पे angle दे रखा है कि भाई यहाँ से कोई भी आएगा, that's your responsibility. और Ballu wanted to take that angle so that he can flank at least 2 to 3 people from there. But unfortunately, Same caught him off guard and instantly punished him and secured one clean finish for his own stat level. But okay, then M20. Now he's sniping. And he's connecting He's multi-talented for sure. Quick learner, I must say. I'm pretty sure Same's got his next creep chalked out. But for now, you know, the players of Team Same, look at this. Completely collapsing, crumbling Team SAS. Every single thing they're doing. Oh my becoming God! So hasty. And Same, the icing on the top of that cake. What's going on? You know, M24 se he landed a clean headshot and see the scoreline. We still have 240 seconds on the clock and the scoreline says कि भाई टीम समय के पास 16 frags का advantage है. यहाँ पर कुछ टीम 16 frags तक नहीं पहुँच पा रहे, but टीम समय they got the advantage. And अब 4 frags और चाहिए और 4 मिनट के हिसाब से 1 मिनट का एवरेज भी निकाल के चलोगे, then this game is going into the decider match. Oh, certainly is. Criminal taking quite a hefty chunk of damage. Eternity did have that opening. Eventually we'll see it through as the final 2 kills remain. And this is something that nobody anticipated. And they have dug in deep, just clawed and toothed their way in. And Team Same just one finish away. And the players want to let Same do the honors. And it is SAS, and they're going to ban her. Oh, no way! And SAS gets one at least. You don't touch her like that. Whoa! SAS already anticipated कोई तो आ रहा है, and Mischief planned है, and she was ready. She was damn ready with a gun, and उन्होंने instantly, you know, जो भी घर में घुसा था उसको सीधा गोली मार के गेम से बाहर निकाला. मंसूबे जमीन पर, and ऊपर वाला जानता है कि क्या ही खेला है टीम सभी ने इस मैच में. चेहरे पे मुस्कान देखिए एक बार इनके. ये मुस्कान की चमकान के पीछे मैं तो वजह जानना चाहता हूँ because honestly this guy was just telling a few moments ago मुझे घर जाना है and suddenly he's lying. And now he's interested. He's starting to take a lot of frags. What is going on? शेयर और मात देने के तरीके हैं इन भाई साहब के. Chess in New State Mobile. But I was not expecting that कि भाई मुझे ऐसा था टीम दोनों के पास पोटेंशियल है क्लोज मैचअप की. I was hoping that, but what Team Same pulled off was spectacular for sure. No, of course, Same did pull off something spectacular, but at the same time, what happened to Team SAS never felt like the boys were from Godlike, because that was not a Godlike show. You know, I will be getting a lot of hate, but yes, they were feeling a little cocky, little overconfident. बहुत सारे मूव ऐसे थे जिनके कोई लॉजिक्स नहीं थे. सारे मूव्स का एक ही आंसर था कि वी बिलीव इन आवर इंडिविजुअल स्किल्स, और हर बार इंडिविजुअल स्किल्स आंसर्स नहीं होते हैं. यू नीड योर टीम टू गिव यू बैकअप, और वही चीज़ यहाँ पे कर रही थी टीम समय. और समय के मतलब MVP मैं बोलूँगा यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आराम से अरिसम, रेक्सी, एटर्निटी,
जो उन्होंने सेंटर होल्ड करके रखा था, ब्यूटीफुल. You know, look at them. Look at the confidence oozing out of them. The way they've been playing. Oh, just finding those thin angles, threading the needle, and trying to get those picks. But this time, Balu is going to retaliate. You know, यहाँ पे Fixes problem क्या होती है कि Rexy का पोजीशन बहुत अच्छा था, but there is a time limit. आप उसी time limit के अंदर, उस एरिया के अंदर वो पोजीशन का एडवांटेज ले सकते हो. अगर आप सामने वाले को बिल्कुल सराउंड करने का मौका दोगे, then obvious सी बात है थोड़े टाइम पे वो आपकी परेशानी हो सकती है. बट अब ये देखिए, काफी कम एचपी रेक्सी एंड एरिसम की, और दोनों अब अलग एंगल से लड़ेंगे. बट एटर्निटी वर्सेस बल्लू की फाइट भी देखने को मिल सकती है. बट समय ऑलरेडी हैविंग हिज आई ऑन क्रिमिनल. क्रिमिनल अगर फिर भी ऑफ गार्ड आए, then he will be taken down till then. But समय, no, he is playing really good and I'm very impressed because जो गेम नंबर 1 पे इन्होंने खेला था, he was literally moving ahead, हाइड करके खेल रहे थे, then नेड वाला ड्रामा उठाया. But this time बंदूक उठाई है और जवाब दे रहे हैं अपनी टीम की तरफ से. And you know what's baffling? It's not SRs that he's taking down. It is the players of Godlike. He's taking down, and this is when Team Samay have a substantial advantage. They've got all 4 players putting in the effort, whereas you've got just 3. So SRs might need to pull up her socks if she needs to see the end of this day, if she needs to go up against Kashvi. Because Samay, he's in mood right now. I think this is the point where he's like, यार पहले तो सोच रहा था घर जाओ, अब मजा आने लग गया है. मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कि cause for me कुछ घंटे पहले तक इन दोनों में से टीम ही कोई यहाँ पर OnePlus dominant 3.0 की विनर्स बनने वाली थी. But after watching this matchup, I think टीम काशवी के चांसेस हो सकते हैं, just because काशवी इंडिविजुअल लेवल पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है. And she knows how to take, you know, she knows how to utilize such situations to convert into her own favor. But still, scoreboard telling this story that Team Samay is still having that advantage. But Ehsas, I think, why? Why would you do that? You could have played a little passive. But yes, still, 1 point के advantage है उनके पास. She needs to play a little, no, little. फिर से उनका spawn हिल चुका है. And every time she wants to go back, वो players उनको जाने नहीं दे रहे. But Rexy को मारकर थोड़ा तो fall back करने में मजबूर हुए हैं यहाँ पे Team Samay. You know, one thing for sure, I really like this positioning from the players of Gods. You know, they've got the highest point inside the map, and they're ensuring that, you know, SRs does not get away. Living, breathing. But on the central side, we've got an interesting duel RSM. Now look at that confidence coming out of the slang. And when everybody had written Team Samay off, these guys are actually doing it. मैंने जितनी बार भी अभी तक फिनिश फीड पढ़ी है, कम से कम 4 से 5 बार बल्लू एटर्निटी से मर चुके हैं. हर बार ही इज गोइंग फॉर अ डिफरेंट एंगल एंड ही इज गेटिंग ऑफ गार्ड इन एवरी टाइम. सो थोड़ा तो सोच समझ के करना पड़ेगा, बिकॉज जो अंतर है, जो डिफरेंस है, अब बढ़ने वाला है. बिकॉज 8-11 ऑलरेडी लीड टीम समय के पास है. अगर इस लीड को कैपिटलाइज कर लिया, देन चीजें बदल जाएगी. बट समय की पोजीशन देखिए, नाउ ही वांट्स टू फाइट, नाउ ही इज एंजॉयिंग दिस फ्लेवर. कहते हैं ना, शेर के मुंह पे खून लग जाता है, उसके बाद शेर रुकता नहीं है. ये वही हालत होने वाली है अब. You know, look at Razor's position, so precarious, and now trying to push it on Arisham, and Razor just trying to play with fire. Arisham not trying to give up, and this is where, like you said, the cockiness of Godlike, and punishing a team SRs, they're in a whole world of trouble, just getting punished every single time they're making a move. And guess what? I'm not surprised at all. What, Fixes? I'm not surprised. I mean, this is typical Godlike standards. And where, Samay. you know, and Samay. This is something surprising, but, you know, Godlike, they're quite infamous for all these things. You know, sometimes when you anticipate that they're going to win it all, that little cockiness comes into play, and suddenly it all just goes away. And with this, look at that lead mounting up, and the players have lost their calm. And, you know, making mistakes one after the other. Look at what they're trying to do. Look at how deep they're trying to dive. Razor did manage to get that pick on Samay, and he was literally inside his opponent's base. You know, Rexy हो गए, और उसके बाद आपके, you know, Eternity and Arisham, ये तीनों मिलके इतनी स्पेस क्रिएट कर रहे हैं समय के लिए, लेकिन समय Razor, look at that. रेजर ने डैमेज दिया, आरएसएम को पिक ऑफ करा, बट आसपास ये देखिए बल्लू का नेट यहाँ पे चोक ऑफ होते हुए, बट काफी ऑफ टाइम था. अगर ये नेट टाइमिंग होता फायदा हो सकता था. बट रेक्सी एंड वन मोर प्लेयर गॉट दैट एडवांटेज. अभी भी 5 फ्लैग्स का फर्क है. टीम समय इज होल्डिंग डाउन
दैट टॉर्च। अब ये टॉर्च क्या फाइनल तक पहुंच पाएगी? तो अब टाइम बचा है 4 मिनट और 40 सेकेंड। आरिस अपने नेट मार के एहसास को गेम से बाहर निकला, समय भी गेम से बाहर होते हुए देख रहे हो। 2 प्लेयर एक साथ टीम समय ने खोए हैं, 4 फ्रैग का डिफरेंट आ चुका है। अभी भी होल्ड कर सकते हैं बट रेजर एज निकालते हुए एंड ही ऑल्सो नो रोल। अभी तक 8 फिनिशेस निकाल चुके हैं रेजर। रेजर थोड़े तो एग्रेसिव खेलते हैं बट फाइनली हिज गन डूइंग द जस्टिस। I think finally the players of Team SS have woken up and they know the value of them, you know, kind of getting so deep right now. Razor is taking all the risks required. It is everything or nothing for them, and that clearly shows with their intent. And now the gap has been diminished almost because now it's just mere 3 points and the momentum, the tides have turned on them. And look at this. You know, finally some good team play being shown by Team SS and seems like the comeback is real. एक प्लेयर की एचपी कम हुई, दोनों पे पीछे आए, तीनों ने ट्रिपल एंगल चोक करके दिखाया यहाँ पर और रेक्सी के नेट से गॉड आसिम खुद ही नॉकआउट होते दिख रहे हैं। बट सडनली जो भी एडवांटेज यहाँ पे कमाई थी टीम एहसास ने, उस एडवांटेज को फिर से अपने फेवर में कन्वर्ट करते हुए देखे। रेजर काफी ज्यादा डैमेज लेंगे, काफी कम एचपी के अंदर बचे बट समय he's playing decent, he's trying to support his team, but जितनी भी क्लोज रेंज है यहाँ पे आरएसएम का इस वक्त जवाब देना नामुमकिन होता जा रहा है टीम एहसास के लिए। और शॉटगन गेम के अंदर इस प्लेयर ने एक सर्टेन एडवांटेज बना रखी है। अब रेक्सी ने टीपी पे लेकर रेजर को सपोर्ट कर लिया। यहाँ पर ये स्पॉटिंग कितनी देर चलेगी? आरएसएम ने यहाँ पे नेट को किया और ही जस्ट पोक्ड हिम बट रेजर की एचपी काफी ज्यादा कम है। बट रेजर का नेट काफी ज्यादा लाजवाब था बट रेजर, ओ माय गॉड यू ब्यूटी, गेटिंग डबल किल फॉर हिज टीम। अब देखिए फर्क कितना कम हो चुका है। इट्स इज 7 वर्सेस 5। 7 फ्रैग चाहिए यहाँ पर टीम एहसास को, वहीं पे 5 फ्रैग चाहिए टीम समय को। बट आरएसएम क्या ही नेट करा, उनको पता था अगर रेजर वहां पे रहे देन टीम की सारी पोजीशनिंग यहाँ पर खराब कर देंगे। और 2 बड़े फ्रैग अभी तक जो एडवांटेज कमाई थी रेजर ने, फिर से यहाँ पर टीम समय के पास जाते हुए। You know, Razor is doing whatever is needed and Ballu really needs to work out and in fact watch out over here because at this point Rexy is trying to cut his flanks off but Ballu wants to go aggressive. Criminal from the backlines could prove really crucial for his team's endeavors as Rexy just pushes in, charging, would get the better out of SS, and with that, Team Samay, they've done the unthinkable. They are your second grand finalists, beating Team SS. When everybody sort of wrote them off, they are back with a bang. You know, एक जगह पर crazy comms team work जीता, but now I don't have any words. I want कि सारे जो जवाब है अबीश ढूंढ के लाएं और हमें बताएं। Well, किसी को घर जाना था शायद, plans have changed। क्या हो गया भाई, मजे आने लग गए? जाने नहीं देंगे रात तक। अच्छा बताओ भाई, घर तो अभी भी जाना है लेकिन इस बार ट्रॉफी लेके जाएंगे भाई आपको। Alright, good. Great gameplay. Really enjoyed the fact that पीछे से कभी-कभी स्नाइपिंग करते हुए you took out so many shots. कभी 4 बार, इस बार 3 बार। भाई एक टाइम था मेरे 3 किल थे और 0 डेथ थे। अगर मेरा किल डेथ निकालोगे 3/0 इन्फिनिटी होता है भाई। ठीक है, मैं नंबर 1 था भाई, लेकिन फिर मेरे को लगा इन लोगों को बुरा लगेगा बोल के एक बार मर गया मैं। Thanks man, तेरा KD ratio काफी ही सही था। You guys move on to the finals. You will be facing against Team Kashvi and I could see you guys were yelling quite a bit एक दूसरे में, so I think that's working. काशवी के साथ प्रॉब्लम ये है कि काशवी हरसेल्फ इज अ गेमर, राइट? सो उनके पास 4 गेमर है, तो इसलिए अब मेरे को भी स्टेप अप करना पड़ा थोड़ा। तो आई थिंक नाउ इट्स गोना बी 4v4। Finally, it's going to be 4v4. All right, congratulations. We'll see you in the finals. I'm moving on to Team SS. It was an incredible game. Your team also did really well. Congratulations. That was fantastic gameplay. You guys don't go on to the finals, but then I think as you could hear, the casters were like, go Team SS! And they were like, come on Team SS! And they're like, समय क्यों खेल रहा है यार? तू घर जाना है यार। क्यों खेला समय? क्यों खेला तू? This is unfortunate, but they move on to the finals. Thank you so much. This is where our journey ends. I hope you enjoy the finals. We are gonna go into the finals where you're gonna see Team Kashvi, and you're gonna see Team Samay go head to head. We're going to a break, and then we see you in the finals.
I can't believe neither can you what's happening here right now at the OnePlus Dominate 3.0. We've reached our finals. We expected one of the teams to, of course, reach the finals. Well, the other team unexpectedly has reached the finals as well. Today, we're all playing with a OnePlus11R 5G. The experience is, of course, excellent for all of them. I'm going to get our first team of our finalists who've been sitting very patiently, observing all the opponents' gameplay, very poised, very sharp, and very shrewd. Please give it up for Team Kashvi. See, I have presented you as the smarter, the calmer, the assassin team. And once again, our gamers who don't smile are back on stage. Hey, is it always, if I say when you're not smiling, that's the only time you smile? Is that how you intimidate Samay's team? Is this the intimidation tactics? Why don't you tell me? About intimidation, I would say I'm the one intimidated right now after Samay's team has unleashed their hidden weapon, which is Samay. Yes, it is a weapon called ये कब से खेलने लग गया? Yeah, I was watching from the sidelines and I was like, really? Yeah, Samay, you have surprised everybody. Okay, quick question. You've also seen the Samay's teammates play. You kind of understood by looking at their gameplay. Do you think that gives you an advantage to understand what you could do better in the finals? Yeah, absolutely. We are trying to get over Samay for sure. Did you have a breakup getting over Samay? I mean, we will target Samay first. That's the great idea. I agree. Are you also going to target Samay? अपना गेम प्ले खेलेंगे बेस्ट देंगे अपना बस हैशटैग विन के लिए. It's very nice. This is the boys played really well answer of the same. He's going after Samay because he'll give. Samay is a very charitable player in team deathmatch because he'll give you the score. What about you? What are you planning on doing in the finals? The stakes are a little high. सिंपल खेलेंगे अपना जैसे खेलते हैं. Man of few words. In total, आपने पूरे show में 6 words बोले. So thank you very much. Final question this is the final. It's really high stakes. You are a professional gamer and you are a gaming creator. You're here with athletes. Your team has done spectacularly well. Regardless of how the game goes, regardless of who wins or the others, I think you've already made it up till here. I'm super proud of the guys. No matter what happens in the finals, they've met each other for the first time. They've never played with each other before. So it's their first ever event of this level. So I mean, huge applause from my end for them. Yeah. Good job, guys. Good job, guys. You guys can, after this, if you win it, you will get the OnePlus11R 5G. You can all sit and play together. You don't even have to put it to charge, because you charge it with the Superbook S. It's really fast. It has 13 temperature sensors that kind of guesses. It has 13 temperature sensors that checks the temperature of the phone and accordingly changes it from efficiency to safety. And that's the same device you've been playing with. All the best. You guys can take your seat. Very excited to get to see how you guys win this one. All right, moving on to our second finalist. It's none other than Team Samay. Please give them a round of applause. They are making it on stage with all the bravado. Kafi cool tarike se. There we have. I feel like this is the smiling gamer conglomerate. If you take a look at it, what a beautiful smile. Kya baat hai. Alright, too much. Alright, Samay. Question to you. The previous game, I don't know what to say. Was it the biggest upset or was it the biggest surprise? How would you explain your team's play? I would say that, I remember that I used to play this game long ago on my phone, but that didn't have a hyper-boost gaming engine. So now when I have hyper-boost gaming engine, I can play even better. That's true. तो इसलिए मैं smoothly खेल रहा हूँ, I think. तो ये लोग भी काफी सीख रहे हैं मेरे से. ये लोग अच्छा, क्या सिखा रहे हो आप? सिखा क्या रहे हो उनको? I'm teaching them that life is unfair. अच्छा, ठीक है. Anytime I can play great, anytime I can nade you. Yeah. You never know what you're into. So you play your own game and don't worry. देखो भाई, मेरे लिए तो win-win है. अगर वो लोग ने मेरे को हरा दिया, तो मैं बोलूँगा 4 गेमर्स से of course हरा दिया. पर अगर हमने उनको हरा दिया, तो वो लोग I think काशवी 2 महीना तो stream नहीं करेगी फिर. और अगर करेगी भी तो chat में समय OP होना चाहिए. तो हमारे लिए win-win है भाई. All the best. No pressure, huh? Yeah. Wow. Too much pressure now. Psychological warfare before even the match starts. Okay. Like I asked them the question again this time around. You've seen what Samay did last time, which is surprise everyone by just playing. So what are you expecting from Samay this time? Now I expect 10 kills.
Bro, at least 10 kills बोला है भाई ने. अपना उनका मिला के हाँ. डिफीट्स मत दे देना वो ट्राई. बस defeats मत दे देना. What word of advice do you have for our Samay? वंडरफुल गेम प्ले. Wonderful gameplay. Okay, everybody. Samay, I would want you to stay back here. The teammates can go take your seats. Get yourself accustomed to the OnePlus11R, which you'll be playing with. Samay, okay, you've already started psychological warfare. I think it's time for Team Kashvi, Captain Kashvi, to come up right here. And अगर कुछ बोलना है, कुछ, if you want to clear the air, final से पहले, your time starts now. Best of luck, yeah, Samay. Yeah, same to you. I mean, it's kind of unfair that एक तरफ गेमर है और एक तरफ काशवी भी है. तो you know, all the best. I'll give my best. I've become a gamer now, Kashvi, haven't I? You've always been though. I mean, I started gaming not so long ago, and my first few games were with you. I think both of these two final captains are the people who look at each other and say, नहीं नहीं sir आप अच्छा नहीं आप अच्छा खेलेंगे. देख यार, काशवी चाहे जो भी जीता, हाँ. इनवॉइस तो दोनों की रेस होगी ना यार. On that note, the team captains, please take your seats. We will start the finals. Stay tuned right here because the casters are getting too damn excited to find out who they are true fans of. Back to you. Well, to be honest, we are fans of some good matchup, you know. Well, Samay has already played his victim card over here. He's got nothing to lose and everything to win. But on the other hand, Kashvi, all right, streaming for 2 months is on the line, and it's a kind of a wager we did not expect, but we love it. You know, समय ने काफ़ी सारी चीज़ें बोल दी काफ़ी कम समय में कि भाई हार गया तो मैं बोल दूंगा. सामने चारों गेमर थे, हारना तो बनता था. अगर जीत गया तो फिर काशवी 2 महीने तक स्ट्रीम नहीं करेगी. अगर स्ट्रीम करेगी तो समय ओपी चलेगा. उनके हाथों में मैजिकल फोन्स हैं, मतलब जो आज के टाइम पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं उन सबको क्रॉस करते हैं. सबसे ज़्यादा क्या है, 120 हर्ट्ज है. सैम्पल रेट टच कितना है, 360 हर्ट्ज है. बैटरी अल्टीमेट, चार्जिंग अल्टीमेट, प्रोसेसर अल्टीमेट, जीपीयू यूनिट एड्रीनो 730 अभी तक किसी और फोन में नहीं है. और क्या चाहिए. सो मतलब पता है यूजली क्या होता है, न्यू स्टेट इज अ ग्राफिक डिपेंडेंट गेम. अच्छा हार्डवेयर चाहिए और लोग रोते हैं, बच्चे रोते हैं टूर्नामेंट्स में कि सर टूर्नामेंट मजा नहीं आ रहा. बट इस बार आई हैव नेवर हर्ड अ सिंगल गाय कि बोले कि भाई ना फोन उनके लिए इतना ब्लेस चल रहा है यार, परफेक्ट फोन है. अगर यही हमेशा मिल जाएगा मजा आ जाएगा. Yeah, and in fact, you know, just to add up on that, this is a cause of concern for all the esports athletes. So हमने you know notice किया है कि matches के बीच में breaks काफी कम रहते हैं, and you keep on playing, so the battery gets drained. But इतनी बेहतरीन charging है और चाहिए क्या आपको? At this point, you know, it is game time, ladies and gentlemen. Directly match के अंदर चलते हैं और शुरुआती first blood यहाँ पे team समय ने already draw कर लिया है. Team Kashvi, they're under heavy pressure because well, they've got a lot to lose. You know, यहाँ पर समी ने बैक टू बैक बहुत सारे मैचेस खेले हैं. So like they are on a momentum side. और वहीं पर Eternity, Arism and Rexy ये तीनों ने मतलब सब कुछ खत्म कर रखा है. एक फेवरेट टीम को एलिमिनेट किया क्वाइट कन्विंसिंग बिहेवियर में. एंड नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज टीम काशवी. अब सेटअप की बात करेंगे. देन समय अभी फिर से काफी पीछे, बट रेक्सी, एरिसम इन लोगों ने असलियत में एग्रेशन डुओ बना लिया यहाँ पर. एटर्निटी पीछे से डीपी चला रहे हैं, उनके पास स्कोप लगा होगा, वो एक लॉन्ग रेंज सपोर्ट जरूर दे रहे हैं, बट दे नीड टू मेक इट काउंट. एएसएपी तनुज फिर से आगे जाएंगे, एंड वी ऑल नो दैट तनुज एग्रेसिव खेलना पसंद करते हैं. बट दिस टाइम द मोमेंट ही गॉट वन फ्रैग, इंस्टेंटली गॉट डेसिमेटेड, एंड स्टिल जो पावर है अभी भी समय के फेवर में है. You know, a team Samay just building up on that momentum and not looking behind even for an instance, and seems like Team Kashvi, they are phased at this point, and I do not know what's going to happen because look at their stances. All the 4 players is constricted to that one position. Few good grenades and they might be sent packing, and that's exactly what's happening. Before they can even realize what's going on, it's already 6 points up for Samay. You know, यहाँ पर मैंने सिंपल सा सेटअप देख लिया because this is the second time that's happening कि जो एटर्निटी है वो गैरिसन को देखिए. Oh my God, that was insane. अब 7 पॉइंट का फ्रैग डिफरेंस है यहाँ पर. एटर्निटी नहीं, यहाँ पर पोर्ट जो मेन फोर्ट है उसका कंट्रोल ले रखा है. अब जो अपर हिल पे आता है उसके बाद जो बाकी के 2 प्लेयर्स हैं, दे प्लेइंग ऑन द ग्राउंड लेवल, जो क्लोज रेंज के अंदर खेल रहा है, दैट इज रेक्सी एंड एरिसम. रेक्सी की पोजीशनिंग देखिए, वो कितना ऑलरेडी एग्रेशन दिखा चुके हैं. काशवी, हंटर एंड तनुज कैन बी डेंजर. अगर रेक्सी घूम कर आ गए देन प्रॉब्लम होगी. बट यहाँ पर एटर्निटी के आसपास भी काफी सारे प्लेयर यहाँ पे स्पॉट होते हुए दिख रहे हैं. बट आई वांट टू सी व्हाट रेक्सी इज प्लानिंग टू डू.
He wants to flank, but Rexy के grenades यहाँ पे pick off हो चुके हैं. सर्विस भी गेम से बाहर होते हुए दिख रहे हैं. और अब होगा तांडव. कौन पीछे से समय ने भी होल्ड करा, काशवी को ऑफ गार्ड स्पॉट करा, and he took her down. All right, Same is starting to feel it, and look at Arishem. Rexy and Arishem have been so amazing, throughout this entire tournament, and it's a 10-point lead, which for a moment was just 4, and they are just rampaging through Kashmi's team. Rexy, look at him go! Already, getting that ace title over there, and even with a sliver of HP, he is hungry for blood, and that he shall get, and this looks to be a really quick matchup. ये कैसे stats हैं यहाँ पर? मतलब 9 finishes, 1 defeat, and एक और player wanted to kill this off-guard enemy, but अफसोस यहाँ पर ये Rexy रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. अरे गुरुजी थम जाइए, रुक जाइए. Although finally he's going down. It was but just a respawn vulnerability. But ज़्यादा देर नहीं. But यहाँ पे Rexy ने जो करना था उन्होंने करा. समय लॉन्ग रेंज स्प्रे कंट्रोल करते हुए हंटर को पिक ऑफ करा. काशवी गेम से बाहर होती हुई दिख रही है. एंड जो अब स्कोर अलग ही चल रहा है. अभी भी 6 मिनट बचे गेम के अंदर और ऑलरेडी दे टच द 25 points marker. They just need 5 more to complete this game. और बेस्ट ऑफ 3 का जो मैचअप है इतनी जोरों शोरों से चालू होने वाला था. I had no idea. Samay is really happy, right? सोने पे सुहागा. Because एक तो मैच जल्दी खत्म हो रहा है, साथ ही के साथ he's going to win and take home the trophy like he promised. The final kill. I really want to see, Samay go for it, because the players of Team Samay, they are all fired up, and well, there you have it. Oh. Ladies and gentlemen, the first game of the grand finals, and Team Samay just stomping through, already taking a 1-0 lead against Team Kashvi, which comprises of 4 gamers. यहाँ पर Team Kashvi stunned. They don't know what to say, what to react, how to react, because everything happened so fast. Rexy with that extreme fast gameplay, proving everyone's wrong. बस इससे पहले जिस तरीके से उन्होंने टीम एहसास को हैंडल किया था, वो तो बस एक टीजर था छोटे. ये है असली गेम, और इस गेम के अंदर मुझे बस एक ही किंग दिख रहा है. That is Team Samay. Yeah, well, no speculations on what just happened right now, and we're all stunned and baffled by what Team Samay just pulled off, and Team Kashvi just left stranded and terrified with what they were doing, and especially those two players, Rexy and Arishem. They have been wrecking havoc in Team Kashvi's defenses, and completely just piercing through and taking every single one down. And again, just to top it all, Mr. Samay, he is also having quite a day at team. Even he was finding that correct foot. Or kudos to Rexy, Artemis for holding that mid area, and Rexy का तो एक certain part था जहाँ पर वो फिर रुकने का नाम ही ले रहा था. मतलब टॉमी गन का इतना डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आज तक नहीं देखा था, बट यहाँ पे देखिए उम्मीदें तो ज़रूर जा गई हैं. यहाँ पर एडवांटेज ली थी काशवी की टीम ने, बट काशवी ने खुद ही अपना किल देकर उस एडवांटेज को नाल एंड वॉइड करते हुए दिखी हुई यहाँ पर. बट अब ये देखिए ना, फिर से मिड का कंट्रोल ले लिया है टीम समय ने, एंड फ्लैंक करते हुए दिख रहे हैं. अब समय भी एग्रेशन दिखा रहे हैं. भाई क्या ही बोले अब यहाँ पर. He's to get in the mood, and this is going to be really interesting. Hunter right behind him, but has he heard him? And Samay instead, it is Whoopi. And Samay is the one who wins, and Hunter has no clue. And again, Team Samay is starting to take control. Kashvi needs to watch out, because look at Rexy. How deeper has he gotten himself into the enemy lines? यहाँ पर अभी तक जो समय सबसे पीछे थे वो थे, बट अब काशवी होल्डिंग दैट एंगल जो एटर्निटी होल्ड करके बैठते, बट पीछे से रेक्सी आते हैं, एंड ही गॉट काशवी डाउन. समय को पिक ऑफ करा तनुज, बट रेक्सी ने इंस्टेंटली हंटर को पिक ऑफ कर ट्रेड बैक कर लिया, बट तनुज अभी भी जिंदा है. बट रेक्सी एक ऐसी फाइटर है जिनका कोई मुकाबला ही नहीं है. ही इज जस्ट हैविंग अ वॉक इन अ पार्क. हाथ में केक है, केक खाते हुए गोलियां चला रहे हैं, एंड टेकिंग डाउन all the enemies around. But Barclays, they have to be alert, they have to give that proper cover, because अगर 1v1 duel की बात करें, Rexy के पास जो experience है being a professional player, it's very hard. बाकी players उनको handle नहीं कर सकते, because जो skill set है उसका एक अलग ही difference यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें. Oh, this is again looking like to be another decimating run, and Rexy clearly the Grim Reaper for the night, shows no fear, shows no mercy to his opponents. And look at that, Arishim also being a part of the party, as Hunter has no clue what's gonna hit him, but somehow
does manage to see it through and manages to get yet another one. So Team Kashvi showing some relentlessness, but is that gonna matter? Because Rexy, again, he's managed to turn the tides in his favor. You know, Rexy का इस गेम के अंदर, इस टीम के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है यहाँ पर, बिकॉज उनका कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस टीम को काफ़ी ऊपर तक लेकर जा रहा है. बट सर, विद दिस टाइम, you know, Arisem instantly tasted the same medicine जो इतनी देर से वो दुनिया को खिलाते हुए दिख रहे हैं. और क्लोज रेंज के अंदर जो शॉटगन चला रहे थे यहाँ पर, सर्वित ने यहाँ पर उनको पिक ऑफ करा सेम फैशन के अंदर. बट सर्वित मूविंग फॉरवर्ड, बट दिस टाइम Arisem was all set, he was ready. The moment he crossed that angle, सीधा सर पे हेड शॉट, वो भी शॉटगन से, कोई सीन नहीं रहा पे बचने का. बट स्कोर लाइन यहाँ पर बता रही है कि अभी टीम समय के पास एडवांटेज है टोटल 5 फ्रैग्स की. बट दिस टाइम टीम काशवी, they are all set to retaliate. बट कोशिश कब तक साथ देंगी? Oh, this is getting a little bit closer this time. I mean, Team Kashvi, they are showing signs of a comeback, but the way Team Same has been playing, especially Rexy, they have had no answers for his flanks and still nothing on their side. You know, it's just, you know, two players just pushing in from different directions, and Team Kashvi just left stunned. How do we get back into the game? Hunter's position has been compromised. It is going to be enough for Arisem to get that frag out there. As Kashvi did try to show some bravery, but she was shunned down as well. बट काफ़ी ज़्यादा ओपन के अंदर थी काशवी, तो काशवी कहाँ पे बचना किसी भी हालात में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने वाला था, क्योंकि सामने वाला प्लेयर के पास टीपीपी कंट्रोल था. उन्होंने थोड़ी सी बुलेट फायर करी और काशवी को डैमेज वहीं पे दे दिया था. ही वेंट बैक, ही रीलोडेड, ही केम बैक, एंड ही टुक दैट. बट Same, bro, whenever you use a weapon like M24, you have to keep moving. एक शॉट कनेक्ट करने के बाद if you stay still, these players will not leave you. इंस्टेंटली डेसिमेट किया, गेम से किया बाहर. बट अभी भी 2-3 प्लेयर्स अभी होल्ड बैक कर रहे हैं. देखो, उनको पता है फिक्सेस कि जीत हमारी है, हमें बस कुछ भी करके अब ये 350 सेकंड होल्ड करना है. बट Arisem के अलग प्लान्स है. दिस टाइम ही वांट्स टू यूज कारल, और Rexy भी अब टॉमी गन लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. बट समय ही वाज कॉट ऑफ गार्ड इन ओपन एंड ही गॉट पनिश्ड इंस्टेंटली. बट तनुज काफ़ी दूर है, लॉन्ग रेंज. आई डोंट थिंक ये टॉमी गन से लड़ने के मूड में बैठे होंगे. बट Rexy स्पॉटेड हिज अपोनेंट एंड ही विल बी टेकिंग डाउन हिज स्पॉट. बट उससे पहले कुछ करते हैं यहाँ पर इंस्टेंटली Rexy को कर दिया गेम से बाहर. Look at Same, he's dished out some heavy damage, and now Team Gods, in fact Team Same being a little bit careless, and Team Kashvi, they are responding back. But all Team Same read at this point is just mere 3 finishes, and now just one finish away from putting their hands on the trophy for being the winners, and here they are. What a victory for Team Same. But I think अभी ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे फिक्सेस मेरे हिसाब से. I am equally surprised. I am very surprised at the same time. Congratulations to your team. Thank you. It's all them guys. Fantastically played. इस बार तो आप बाहर निकल गए थे. So यार देख, मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट राउंड में एकदम कैंप किया. हाँ. दूसरे राउंड में मैंने खुद को नेड मारे. तीसरे राउंड में मैंने थोड़ा खेलने की कोशिश की. चौथे में मैंने छुप के बहुत खेला, और लास्ट राउंड में मैं जाके खेला, क्योंकि जैसे नेवर सेटल. ठीक है. Evolution of man. All right, I would want the winning team to please come over here and look at your amazing trophy. Can we have it once for all the people here? पंकज भाई के लिए शोर मचाओ. Come on. अनन्या भाई के लिए शोर मचाओ, और आदित्य भाई के लिए शोर मचाओ एक बार. It's all them. बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने. पता नहीं कैसे मेरे को. How you guys are so strong, man. All right, Samay and your team, please lift it up. Take your trophy. Congratulations. Here's a photo op. Hey! Oh, congratulations. Anything you want to say just before you guys go back? Well done, man. That's fantastic game. All throughout, समय को आपने पूरा support करके बिल्कुल आगे निकला, जैसे समय की comedy career हम लोगों ने. I want Godal to not to camp. They camped and they lose. All right, attitude. मैं भी एक चीज बोलना चाहूंगा गॉडल के लिए. #1 or nothing. भाई मेरे दोस्त है उसमें यार, ऐसे मत बोलो यार. अच्छा है भाई, गॉड लाइक बेस्ट है भाई. ठीक है, हम लोग तुक्के से जीत गए भाई. आपने अच्छा, 10 किल नहीं हुए ना. 10 किल नहीं हुए. जस्ट जो बोला. सबसे अच्छा किसने खेला भाई अपनी टीम में?
आपने खेला obviously. Of course. Obviously. Under pressure, Supreme leader team for the captain win. के कुछ भी बोल सकते हैं. Congratulations. Please take your seats. Samay, please stay right over here. The winner of the tournament, your team did such a great job. Congratulations. Would you like Thank to? you. कुछ और एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा क्या हाँ जीतने का? बिल्कुल. 5 पे आ जाओ. बिल्कुल आएगा. I would like to also bring out our finalist captain. Please come up on stage if you would join us right over there. Please give it up for Kashvi. There you go. आ जाओ काशवी. आ जाइए आप उधर थोड़ा और लेफ्ट. चलो इसी तरह कम से कम ट्रॉफी के पास तो है तो अभी. कर लो यार ट्रैश टॉक. ओके समय ओपी चलेगा चलने दो. एटलीस्ट थोड़े लोग तो आ जाएंगे मेरे स्ट्रीम पे. अरे चलते humble. But yeah, guys, make some noise for Kashvi's team also. They did so well. They came very far. I know they are sad and they're extra sad कि मेरे से हार गए. But भाई ऐसा ही है भाई. Life is unfair. Well, congratulations. This was an incredible tournament. You guys went all the way. Every time that you kept winning, everybody was watching on the stream and everybody here was like, this is a very strong team. But yes, it was amazing to see 3 professional players and just the 3 professional players from their team playing against 4 professional players. And there was also Samay, who was like a cameraman of the game. Anything you would like to say about your team? You played with them for this entire... Extremely proud of them. Yeah. Okay. To be honest, like these guys are at least like professional team players. They play for a particular team. The boys from my team have never experienced something of this level. Can So we have a huge yeah. round of applause for all 3 of them? They made it all the way to the finals, and having you as a team captain as well also was incredible. They did not agree. They were just looking at me. I forgot. Samay's team is the smiling gamers. These guys are the ones who don't smile. Congratulations to you. Anything you'd like to tell people? Thank you guys. This was fun. This was fun. Kashvi, the only way you can get आप आ जाइए. ये बंद नहीं करेगा. the only way you can get over this is if you beat me in chess now. Okay, समय का mic off करो. Thank you very much. Alright guys, never settle. Once again, please give it up for Samay and his team. Congratulations, you guys won the game. For this beautiful, thank you so much everybody. You guys joined in. We had our professional players. We had for 8 creators, and we had just hours and hours of excellent gaming content. Huge shout out to our casters. They did such a fantastic job. Please give them a round of applause. Give it up for Fixes and Krat. Thank you so much watching at home, and if you were participating, great. This has been the OnePlus Dominate 3.0. This is a OnePlus 11R 5G is out right now, so if you can get your hands, go and grab it right away. You know, the team Samay has not just won this amazing trophy, but each of the players get their hands on the new OnePlus 11R 5G. Congratulations. You guys completely deserve it. You guys kept your cool, just like the 3D cooling system on the phone. It's going to be amazing. What up? Bro, you know, like when I just met them, right? तो मैंने पूछा था कि भाई सबसे strongest team कौन सी है? तो इन लोगों ने कहा था भाई हमारी है भाई. तो तब मुझे लगा था ठीक है ऐसे ही बोल रहे हैं सब लोग यही बोल रहे हैं. But like they actually are the strongest team. So come on, make some noise for them, guys. Man of their words. Man of their words. Thank you very much, everybody, for watching. And thank you so much for all the teams who have participated. And also, if you want to follow for more events about gaming, if you want to know more about what's happening, make sure you follow the OnePlus India social media pages. My name is Abish Matthew. Have a good night.